sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Until I broke the rules, my life destroyed. A life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. Superhero. Fly away. It's the first time of today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Can I be your superhero? Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating.
Sometimes I'm selfish, get jealous. I feel a little helpless. My whole world has shifted again. You made a promise, I kept it. Now I'm second guessing. My whole world has shifted again. Now I drive back to an empty room, and it's setting in. Now that your things are gone, what have I done? Was everything worth this? I guess I deserve this. Why do I run whenever I'm hurting? I guess I'm still learning how to run. What have I learning how to run. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Devils hide behind redemption. Honesty is a one-way gate to hell. I wanna taste consumption. Be faster to waste oxygen. Hear the children sing aloud. It's music till the wick burns out. Be carefree lately, yeah. Just picking up daisies, got
Got my eyes on the target. No, no. Till the battle's won, till kingdom come. I'll never run. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. They say I'm dangerous 'cause I broke all the cages. No, I will sit and take it. No, no. They left me for dead. Welcome back, ladies and gentlemen, gamers of all age to Asus Rog Showdown series Valorant, and we are back on the grand finale day powered by Intel. And I'm your Castellic FTW, and with me joining on the desk today is the ever beautiful star Tanya. How are you feeling, Tanya? It's the big day, it's the grand finals. I'm feeling great as well because it's the big day and the fight of the Titans. Well, yesterday, two dominating teams in two different matches are going to be there on one screen and one match. So we can expect what sort of a powerful play is coming right in front of our screens. But before we initiate, Elika, what do you think about FSE Sports against them VAG Sports? If I had to, I mean, I wouldn't root anyone, but if I had to pick one, I would definitely go for FSE Sports above BOD Sports. Yes, FSA Sports, they completely set out a different game yesterday. It was a close one, I'd say. Weird Esports, they had a very tough fight against Axe, but I'm expecting them to show a little stronger performance. Well, I go with Weird Esports. Let's see how long in the long run, how can they consistently keep playing the game. Yesterday, it was a one-sided performance, so it's quite actually difficult for us to say which of the teams might be winning out. But yeah, what are these teams fighting for? Of course, for the prize pool of 75,000 rupees. Well, 25,000 rupees is confirmed for both of these teams. Yeah. Who wins the first place will walk away with 50,000 rupees, and who gets second will walk away with 25,000 rupees. But at the end of the day, we have winners. Both are winners, but it's just the difference of price pool, I guess, Tanya. Prize pool and the title for this tournament is definitely going to matter way much more. Though playing very good is and we'll also compare yesterday with today. Yesterday we saw it was all about controllers and sentinels. Today I want the duelist to show their existence, to prove their initiation, to prove their kills. And if I had to talk about your esports, only man that I would want to talk about is Storm. What is he playing today? And that is how we are here with the grand finals for the day. Nasha of esports versus Weird Esports, where Weird Esports gave the clean sweep of 2-0 to Nasha Esports and qualified, got the first slot for the grand
Finals. For the next semi-finals, we had TGSAXE versus FSE Sports, and FSE Sports repeated the same history what happened in semi-finals 1, where they clean swept TGSAX team with the score of 2-0. Now it is a fight of the equals, and if we had to compare the player, I would definitely go for Storm from Weird Esports. And if I had to talk so if Smokia is the man, so it is going to be the fights of the S Storms versus Smokia. Yeah. Storm yesterday, who hit an ace, and Smokia, who always made sure that he was going in for the very annoying backstabs Yeah. and the rotations. He was very quick, by the way. I'm expecting that it's going to be a worthy opponent because it's Storm versus Smokia, as you said. And yeah, the alphabet is really strong, stands very strong right now. Talking about backstabs and avoiding flanks, well, Bad Love did prove his existence that no back flanks, no rotations will be allowed on my existence if I'm holding in the mid. So Bad Love is again a man. If I would want to see him blocking the mid, avoiding not allowing any opponents to take the rotations, to take the flanks, and if is he going to do that again, it is going to be very interesting affair with the marshals, with the snipers. With that, we'll head towards the roster for Weird Esports. Well, Bad Love, the man who stops all the rotations and backstabs. MF God, he is indeed one of the best omens for his team. Stormy play. How much should we appreciate this man? And Rio, well, he did play so well both the times yesterday, but today let's see what is he up to. Coming back to the Sesame, well, in the next match for the day, he played really very well as Phoenix. Is he going to change though? Yeah. Because we did see there was some change for Sesame coming in. No, he was Phoenix for both the He matches. played Phoenix in the first map and then he switched to Raze where he entirely went like a madman. So as duelist, he definitely showed his existence very widely, proved every single time. And yeah, he did waste away some showstoppers to just get some easier picks and easier rounds. That's okay. Until and unless your team is getting the round, it's all good to go. Yes. And next up, coming the lineup is one of the strongest teams, the other finalists. We have FSC Sports, and I am more than excited to look at their roster because Weird Esports, we have Rio, Sasmi, Bad Love, but we have someone really even more stronger in FSC Sports. I think compared to yesterday's scores, compared to yesterday's score difference between both of the semifinalists, I feel that FSC Sports have a stronger chance in winning this finale. But again, Weird Esports, they know their opponents. They might have watched the entire match yesterday against FS Esports, and they might have prepared their own set of strategies. And here we are, FS Esports. We got Cactus, I got K3, Kohli, and Smokia. Smokia and I got are two best players that FS Esports have got. And speaking about Kohli, he has played a very well support role, I believe. Up. Yeah, he was a very good controller. He played Viper for the first match, and second he went ahead with Brim. And we did see he allowed the plants, and went ahead with the ultimate, and he was able to stop the continuation of blocking the defensive parts from the attacking side after planting the spike, and he was successful with this orbital strike. So let's see what are his plans today, because you do definitely need a controller. Why wouldn't you want, so that one player would take the total responsibility of one side, and then the split comes to the few players holding the mid area, few players onto the other side. So we did see various times where Kohli was able to control an entire side even after picking some extra kills required for his team. So successful play, successful split of agents as well for yesterday. But today it is going to be very crucial, because yesterday what we are talking about for FS Esports, they had the fight of the equals. Exact same team was taking fight against them, and they were able to exactly counter what was required. So today they will have to level up somewhere by the agents or the strats or any other agenda that they have in their mind. Yes, that's true. And I'm more than excited for the map veto because the best map and the best side gets an easy winner. And yesterday we've seen how all the maps that we expected sort of went to a one-sided performance. As we move forward, Weird Esports once again picked Ascent, interesting, and we have Haven as well. Well, the first pick is going to be Bind, that is FS Esports will be starting with attackers with the second map. Ascent with the third is going to be split. FSC Sports have picked it, and they're going to be starting off as attackers. And the Desirous map,
is the very, it's a very big map that is Breeze. They're going to be starting off at Defenders. So Weird Esports, they've got two picks. Sorry, three picks actually, and they'll be starting off at Defenders in the map of Breeze. And speaking about the first map, it's going to be Bind. Every time I pick up the map of Bind, I have this quote I say, Tanya. It's hashtag blinded by the Bind. Because we have a lot of flash agents in Bind. We see Breach, we see Rena, we see Phoenix mostly coming to the play. We see Sky also a lot of time. So I just sort of gave a very cute line to describe Bind, that is hashtag blinded by the Bind. बिल्कुल, बहुत अच्छी हैशटैग आपने लगाई है। इवन आई लाइक दैट हैशटैग वेरी मच। देखेंगे आज ब्लाइंड कौन होता है, ब्लाइंड करेगा कौन इन द मैप ऑफ ब्लाइंड व्हिच इज गोइंग टू बी वेरी फर्स्ट chosen by FS Esports, and let's head towards the first match for the day. We are Esports versus FS Esports for ROG Showdown Series Valorant Grand Finals it is, and it is best of 5। तो कल के जैसा नहीं है जो टीम पहले 2 बार जीत जाएगी। इट इज एन एंड। आज 3 मैचेस की रेस होने वाली है। द टीम टू रीच द स्कोर ऑफ 3 is going to successfully win it out, and यहाँ पर एक टफ कॉम्पिटिशन्स की हम एक्सपेक्टेशंस भी रख सकते हैं। विद दैट यहाँ पर एजेंट सिलेक्शन भी शुरू हो चुका है। And let's see what we have. Well, attacking में हमको Weird Esports FS Esports को देखने मिलेगा, और Weird Esports यहाँ पे डिफेंडिंग पे शुरू करने वाले। एंड द मोस्ट स्पेशल एंड द मोस्ट पॉपुलर मेटा आजकल चल रहा है कि डबल कंट्रोलर सेटअप फ्रॉम द मैप ऑफ बाइंड। डिफेंडर्स काफी ज्यादा यूज करते हैं। अटैकिंग में या तो स्मोकिया ने यहाँ पे रेज लॉक किया, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज कल वो दोनों एजेंट खेल रहे थे। इनिशिएटर खेला उन्होंने और एक सेंटिनल खेला था। अभी उन्होंने ड्यूलिस्ट निकाल दिया। उनके साथ हमको आई गॉड देखने को मिलेगा, जिन्होंने भी ड्यूलिस्ट लिया है। रेमन यहाँ पे सेज लेने की करते हुए, एंड दैट इज no killjoy coming up. Kohli has picked up Brimstone and Headshot going with the Sky. काफी weird agent picks है, to be honest. काफी दिन के बाद हमको ये मेटा देखने को मिल रहा है। Sage, a healer, Tanya. And what do you think about Weird Esports lineup? वेल इफ यू हैव टू टॉक अबाउट वियर्ड ई-स्पोर्ट्स लाइनअप, यहाँ पर एक रिपीटेशन हमें देखने के लिए मिलेगा। एमएफ गॉड पहले भी कंट्रोलर थे, लेकिन एज अ वुमेन खेल रहे थे। आज हमें एज अ ब्रिम देखने के लिए मिलेंगे। बैड लव की ओर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शिफ्ट है। वी हैव लाइक एक हैबिट हो चुकी है उन्हें एज अ जेट देखने की, लेकिन आज वो एज अ जेट नहीं खेल रहे हैं, एज अ रेस खेल रहे हैं। बट रोल कंटिन्यू होने वाला है। ही इज गोइंग टू बी द ड्यूलिस्ट फॉर हिज टीम। और फिर से एक बार अगर डेडली 10 की बात करें तो ही इज गोइंग टू बी द जेट टुडे। सेसमी आज ड्यूलिस्ट नहीं रहेंगे। ही इज गोइंग टू बी द कंट्रोलर फॉर द टीम, एंड वियर्ड यहाँ पर इनिशिएटर रहेंगे। तो अगर हम टीम्स को इमीडिएट अगर कंपैरिजन में डालते हैं तो देव गॉट ब्रिम द सेम कंट्रोलर। इनिशिएटर में चेंज आएगा। वन हैज गॉट सोवा एंड द अदर वन हैज गॉट स्काई। तो एक हम ब्लाइंड की जो हम बात कर रहे थे इन द मैप ऑफ माइंड, वो एक अर्ली देखने के लिए मिल सकता है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच हम देख पा रहे हैं कि ऑल द टीम्स एंड ऑल द प्लेयर्स आर गोइंग स्टैकी, बट अभी बाई फेज चल रहा है। अल्टीमेटली स्टैकी नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर दी अटैकर्स। हम देख पा रहे हैं बी साइड पर पूरे का पूरा पुश रेडी अप हो रहा है, एंड एक सक्सेसफुल प्लेसमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा पसंद करती हूँ जब डिफेंडिंग साइड में कोई खेल रहा होता है और बी साइड पर 3 प्लेयर्स रखता है। थोड़ी देर के लिए वो जरूर 3 साइड पे थे, बट वंस अगेन इट इज कमिंग टू ए जहां पर 3 प्लेयर्स हैं। एंड आई थिंक ये राउंड अगर बी पर एंट्री मिल जाती है तो डेफिनेटली अटैकर्स एफएस ई-स्पोर्ट्स लेकर जाएंगे। यस, एंट्री तो जरूर मिलने वाली है डेडली को 2 seconds into the round, एंड उन्होंने काफी अच्छी ओपनिंग निकाली हुई है एफएस स्पोर्ट्स के अगेंस्ट। दैट इज हेडशॉट गोइंग डाउन करंटली। बहुत ही अच्छा सेटअप देखने को मिल रहा है। 2 प्लेयर्स इनसाइड हुक्का खेल रहे हैं डिफेंडर्स के, और 2 प्लेयर्स यहाँ आउटसाइड हुक्का पे अटैकर्स के। एंड आई गॉट एक और एंट्री निकालते हुए। दैट इज 1 player डाउन फ्रॉम बोथ ऑफ द टीम्स, एंड डेडली गोइंग इन फॉर अ डबल किल। क्या उनको ट्रिपल किल मिल सकता है? शॉट तो उन्होंने मारे बट मिस कर लिया। स्मोकिया विल टेक हिम डाउन। आई गॉट ऑन द अदर हैंड रियो को लेते हुए। इट्स अ 2v3 सिचुएशन राइट नाउ, तानिया। यहाँ पे अगर प्लांट मिल गई है तो काफी अच्छे से पोस्ट प्लांट पोजीशंस खेल सकते हैं, बट प्लांट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए।
प्लांट मिलने के लिए, और यहाँ पर बाकी का तो पेशेंस का भी यूज कर दिया गया है और काफी अच्छी तरीके से। बैड लव, वेल बैड लव। कल आपको जेट देखकर बहुत ही अच्छा लगा था, बट रेस देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट राउंड में बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करके डिफेंडर्स देकर चले गए व्हेन दे हैड लेस नंबर्स ऑन द साइड बी। इसके बावजूद दे मेड इट पॉसिबल, राइट टाइम पर रोटेशन लिया गया। एंड आई थिंक यहाँ एक हल्की सी साइफर की कमी देखने के लिए मिल रही है। डेडली ने भी काफी अच्छा टीम सपोर्ट दिया है। तो तन्वी, आज एक हम चेंज देख पा रहे हैं। ड्यूलिस्ट यहाँ पर अर्ली पिक्स ले रहे हैं दोनों ही साइड पर, दोनों ही टीम्स में। बैड लव और डेडली एज अ ड्यूलिस्ट 4 किल्स निकाल चुके हैं। ऑन द अदर हैंड दो ड्यूलिस्ट ने 3 किल्स निकाले हुए। फिर से एक बार बी की ओर पुश आ रहा है, ट्रेल ब्लेजर डाला गया है। डेडली को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंकस किया जरूर गया था, कंकस के साथ ही फ्लैश आ चुकी है। स्काई की काफी अच्छी प्ले देखने के लिए हमें मिल रही है। देखेंगे आगे क्या होगा। एंड थ्रू द टेलीपोर्टर एक पुश आ चुका है। थोड़ी देर के लिए मॉली डीले जरूर करेगा, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग। या बट यहाँ पे आपने नोटिस किया 2 प्लेयर यहाँ अंदर है टेलीपोर्टर के, एंड वियर्डली डेडली ने ऑलरेडी काफी किल्स ले चुके हैं। बट एफएस स्पोर्ट्स दे माइट हैव अ चांस अगेंस्ट वियर्ड स्पोर्ट्स बिकॉज दे ब्रॉट डाउन अ 4-5 राउंड टू अ 1v2 सिचुएशन। एंड अभी आई गॉड ही बचे हुए हैं साइड पे। स्पाइक ड्रॉप्ड है बी बॉम्ब साइड पे। आई गॉड स्पाइक लेके प्लांट तो कर ही सकते हैं। यहाँ पे रोटेशन आते हुए दोनों प्लेयर्स लॉन्ग रोटेशन से जा रहे हैं, एंड आई थिंक आई गॉड स्पॉट हो जाएंगे काफी आराम से अगर वो पीक लेंगे लॉन्ग की तरह। तो फिलहाल के लिए तो कुछ पोजीशन रिवील नहीं हुआ है। आई गॉड अभी भी हुक्का देखते हुए, एंड आई गेस एटली स्पॉट करते हैं, एंड आई गॉड विल गो डाउन इन द फ्लेम्स। दैट इज सेकंड राउंड ऑन बोर्ड फॉर वियर्ड स्पोर्ट्स। बट आई अप्रिशिएट एफएस स्पोर्ट्स एफर्ट्स बिकॉज उन्होंने एक फोर्स बाय राउंड अपने एनिमीज के साथ काफी क्लोज लेके आए थे। ऑलमोस्ट 2v2 सिचुएशन था तानिया। 2v2 सिचुएशन काफी क्लोज बैटल हो चुका था। प्लांट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, रिपीटेटिव एक ही चीज की जा रही है। दे आर स्टॉपिंग द प्लांट इन एवरी टाइम पॉसिबल। अब देखेंगे साइड चेंज की जा रही है। रियलाइज हो चुका है कि बी काफी स्ट्रांगली डिफेंड किया जा रहा है, तो लेट्स स्विच द साइड। अब एज ऑल 5 men पुशिंग ओनली वन थ्रू द पाथ, एंड यहाँ से हेडशॉट वंस अगेन ट्रेल ब्लेजर के चलते एंट्री ले चुके हैं। रियलाइजिंग देयर इज नोबडी, एवरीथिंग लुक्स क्लीन। जेट इमीडिएट डैश करके एंट्री ले चुके हैं, एंड हियर वी कैन सी एन अर्ली पिक कमिंग इन फ्रॉम आई गॉड। मौका नहीं दिया जाएगा, शायद लोग आ जाते हैं एंड इमीडिएटली बैड लव एक नॉक निकाल लेंगे, सैसमी ले लेंगे, एंड बैड लव फिर से हाइपर एक्टिव नजर आ रहे हैं। यस काफी हाइपर दिख रहा है, बट कोहली थ्रू द स्मोक स्प्रे कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाया। वियर्ड स्पोर्ट्स स्टिल विद अ 5-man लीड। एफएस स्पोर्ट्स ऑन द अदर हैंड डाउन टू only 2 players. What an unexpected theory over here, Tanya, because FS Sports was going for a full buy, and losing this round will put up a very huge crisis on their economy. But looks like Weird Esports is definitely having a good beginning, and through the smoke, Deadly gives a deadly shot and Kohli will go down. That's the third round on board for Weird Esports. चलो अच्छा है. I did predict that Weird Esports जीत सकती है ये फिनाले, but देखते हैं कितना दूर तक ले जा सकते हैं, because FS is kind of a team. If once they break the momentum, they have the rest of the game in their hands. एंड यहाँ पर क्या डिस्टर्बेंस किया जाएगा या फिर ये कंटिन्यूटी में ही रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। लेकिन वंस अगेन डेडली 10 एज जेट बैड लव से बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये जो स्विच हुआ है बहुत ही परफेक्ट स्विच हुआ है। डेडली 10 फिर से एक बार वेट कर रहे हैं, बी साइड पर पुश है, 3 थ्रू द लॉन्ग, 2 टू द उक्का, एंड स्काई स्मोक आ चुका है। रियलाइजिंग के बी का पुश आ रहा है, वहीं से भी 2 प्लेयर्स रोटेशन लेकर ए साइड से आने लग गए हैं। बैक स्टैप का एक अच्छा खासा मौका देखने के लिए मिल सकता है, एंड यहाँ पर एक साथ 2 प्लेयर्स को टेक डाउन किया जा सकता है। क्या वो मौका इजीली मिलेगा या नहीं, वो जरूर हम देखेंगे। एंड प्ले ऑफ पेशेंस दिखाया जा रहा है, लॉन्ग पर से एंट्री लेने की कोशिश, बट यहाँ पर एक शॉट एज अ स्काई कुछ करने का मौका नहीं दे रहे हैं। Well, अभी तो फिलहाल कंफर्मेशन आ चुका है कि ये बी बॉम्ब साइट होने वाला है, बिकॉज ए बॉम्ब साइट ए शावर से पूरा रोटेशन आ चुका है। उन्होंने शॉट क्लियर कर लिया है। दोनों प्लेयर्स अभी टीपी मार के बी के हुक का तरफ पहुंचने वाले डिफेंडर्स के, एंड एमएफ गॉड ऑन द अदर हैंड स्पाइक उनके आंखों के सामने ड्रॉप डे। एफएससी स्पोर्ट्स के 3 प्लेयर बचे हुए हैं, एंड बैड लव यहाँ पे बैक स्ट्रैप पे जाते हुए उनको शायद यहाँ बड़ा गेम खेल सकते हैं। मल्टीपल किल्स मिलने का चांस है। नाइफ पे जाएंगे कि नहीं? नहीं बैड लव
One down. There you go. Bad Luck is doing very well. He's gonna get himself a double kill, and you know 30 where seconds left. exactly There. last player will be coming in from Tanya. एक एक अच्छा ट्रोल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे नाइस करने की, लेकिन वो मौका नहीं मिला। बट बैड लक को 3 पिक जरूर मिल जाएंगे। व्हाट अ ड्यूलिस्ट एंड ही इज द परफेक्ट मैन रिक्वायर्ड फॉर वीआरडी स्पोर्ट्स फॉर कॉन्सिक्यूटिव बैक टू बैक राउंड विन। इकोनॉमी टोटली क्रैश हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हार्ड बाय पर फोकस किया जाएगा डेफिनेटली, एंड फुल बाय फुल शील्ड्स। वेल इकोनॉमी इतना भी क्रैश नहीं है कि एसएमजीज पर फोकस दिया जाए या फिर मार्शल पर, एंड डेडली के पास एक ऑप आ जाएगी। सो वी कैन एक्सपेक्ट एक ए लॉन्ग पर अगर आप वेट करके एक आध पिक निकाल सकते हो तो दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। बट वो मौका दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि बी पर बार बार कमिट किया जा रहा है इवन आफ्टर फेलियर। एक्सेप्ट अब एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी है, स्पाइक को ऑन द मिड छोड़ दिया गया है, एंड एक स्नाइपर शॉट जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मिस हो गया, लेकिन सैसमी जरूर गॉड को डाउन कर देंगे। Yes, that's true. And according to me, Deadly is a very good fragger. उन्होंने बहुत ही early of the game में ही उन्होंने ऑप उठा लिया. But if he is confident with it, then why not? And they also have the lead of 4 rounds in the hands. And FSC Sports, they went for another full buy, Tanya. अगर ये राउंड भी FSC Sports हार जाएंगे तो उनका इकोनॉमी भगवान भी नहीं बचा सकता है मेरे ख्याल से. And Deadly, he went for a very quick rotation. The last time I saw him was on the A-bomb side, and now he did spot Smokey out there, but unfortunately couldn't confirm the kill. In turn, he gets tagged down to very low HP. Yeah, A-bomb side पे तो कुछ अलग ही scene चल रहा है. There's one player over towards the Shaz who's trying to make all the what? Did he just hit through the wall and get that shot confirmed? That tiny peak which was very very risky, Kohli पता नहीं what was he up to exactly, but bad love was 30 very seconds committed कि A side पर entry हम अलाउ नहीं करेंगे, and Raymond has different plans here. Entry A side पर लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। Players are flash for now, and Smokey की entry यहाँ पर एक pick देखने को मिल सकता था, लेकिन Sesame वो भी मौका नहीं देंगे। 4 versus 1 यहाँ पर आ चुका है। Raymond कितनी देर तक survive करेंगे? Well 3 picks निकाल चुके हैं, and heal भी है, तो एक और pick हमें easily देखने के लिए मिल सकता है, बट ये मौका मिलेगा एंड नहीं मिलेगा। यहाँ पर एमएफ गॉड उन्हें रोक देंगे। स्ट्रीक जो थी किल की वो 3 किल्स पर ही स्टॉप हो जाएगी। विद दैट तन्वी, आई एम फीलिंग बैड फॉर एफएससी स्पोर्ट्स। 5 back to back wins, and this time nothing to purchase, and Kohli going with the shorty entry through the bats. Yeah, well, that was an crazy start for Weird Esports, and they definitely are going to maintain that crazy start. Speaking about FSC Sports, काफ़ी बार इन्होंने फर्स्ट पिक दे दिया, जैसे कि हमने शार्ट्स में देखा था पिछले राउंड। पहला पिक यूं ही मिल गया था Weird Esports को, एंड डेडली यहाँ पे पुका के थ्रू उसको ओपन करते हुए जा रहे हैं। एक किल मिलता है, immediately dash out, and now he's gonna fall back. He's trying to have a look over towards the B long. और स्मोकिया काफ़ी क्लोज रेंज पे यहाँ पे उन्होंने नेट डाला है। He has been spotted, and Deadly, I'm pretty sure he's gonna confirm that shot, but गलत टाइमिंग था। He's still trying to spam some shots through though. But आपको क्या लगता है तानिया, इतना aggressive opping करना, do you think it's gonna work out every time? एक्चुअली ही इज टेकिंग रिस्क, बट ये जो रिस्क ले रहे हैं उसका रिवॉर्ड काफी अच्छी तरीके से टीम को मिल रहा है। सो ही इज हैप्पी, ही इज कंटेंट विद द सेम रिस्क दैट ही इज टेकिंग, बट नॉट फॉर सो लॉन्ग। आई गॉट विद मार्शल विल टेक डाउन ऑफ प्लेयर यहाँ पर, और यहाँ पर सीकर्स भी रेडी हो चुके हैं, तो साइड क्लियरेंस थोड़ी देर के लिए जरूर मिलेगा। इट माइट बी द फर्स्ट चांस कमिंग इन, एंड इट इज अ गुड वन। रेमंड रिवाइव दे देंगे बॉडी को। शो स्टॉपर एक बार रेडी हो चुका है काफी अच्छी तरीके से। शो स्टॉपर, शो स्टॉपर, एंड ultimately the first round going into the hands of FS Esports, and I think ये बहुत ही required round था। अगर 6 consecutive round टूट जाता हाथ से तो confidence totally crash हो जाता, and I think this was the confidence booster round, but bad love, well वो अलग level के boost होकर आए हुए हैं, and he is stopping everything possible, but not for this particular round जहाँ पर एक अच्छा performance मोकिया भी stand कर लाए थे। यस, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग बिगिनिंग है ये तो, एंड थिंग्स काफ़ी बदलने को देख रहा है। एफएससी स्पोर्ट्स फाइनली गेटिंग द फर्स्ट राउंड इनटू द फेवर, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रेड वाज दैट बिटवीन अ रेज एंड अनदर वन। बोथ ऑफ देयर शो स्टॉपर्स क्रॉस्ड ईच अदर, एंड दैट्स अ किल फॉर बोथ ऑफ देम। आई थिंक दैट्स अ विन-विन
तानिया, दोनों का अल्ट सही टाइम पे इस्तेमाल हुआ था. Little does this Raymond know that there are two players already pushing out towards A shot, and if he takes a decision to push through the Viper's ultimate, I'm pretty sure he's going to make a big regret right now. There you go. वंस अगेन जेट वर्सेस जेट देखने के लिए मिला है एंड यहाँ पर नंबर्स डिसएडवांटेज हो चुका है. एमएफ गॉड साइड पर वेट कर रहे हैं, क्या प्लांट करने का मौका दिया भी जाएगा या फिर वंस अगेन विदाउट द प्लांट एक राउंड लॉस देखने के लिए मिलेगा. कॉली स्पाइक ले चुके हैं एंड आई थिंक ही विल डेफिनेटली बी कमिटिंग फॉर बी बिकॉज इट इज क्लोजर. लेकिन यहाँ पर इतना इजी कमिटमेंट देने का मौका नहीं दिया जाएगा. सासमी को रखा गया ऑन साइड बी टू अवॉइड एनी प्लांटिंग एंड यहाँ पर ए साइड पर आते हुए नजर आ रहे हैं. वेल ही हैज टू फेस टू प्लेयर्स, ही इज नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन ये ज्यादा रिस्की मूव हो चुका है. वेयर बैड लव क्रॉस हेयर लेकर ऑलरेडी रेडी है एंड 1 वर्सेस 1 ऑलरेडी होते हुए नजर आ रहा है. एंड आई थिंक ऑलमोस्ट राउंड इज गॉन एंड वेल इट इज डेफिनेटली गॉन. बैड लव यहाँ पर अपनी टीम के लिए फाइनल फ्रैग निकाल कर 6 पॉइंट्स ले चुके हैं एंड 5 पॉइंट्स की लीड. Yeah. Well, interestingly, things are looking very interesting right now. FSC Sports, they've got one round, but VALORANT Esports, they've immediately snatched it back. Tanya, they do not want to let FSC Sports take the momentum away, because everyone knows if FSC Sports get the hang of the game, if they get the momentum, there's nothing that anybody could do to break the momentum off. And Deadly is doing a good job with the operator. Once again, will he get a kill? Again is the question. He misses that shot, and this time he has to fall a little more harder, more, थोड़ा ज़्यादा ही पीछे जाना पड़ेगा तानिया इस बार तो उसे, बिकॉज पूरा 5 प्लेयर्स का रश देख लिया उन्होंने. एक अच्छा हंटर्स फ्यूरी देखने के लिए मिला. डैमेज जरूर आया था लेकिन जो रिजल्ट चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिला है. स्मोक या बी लॉन्ग से एंट्री लेने की कोशिश करेंगे. बैड लक वहाँ ऑलरेडी वेट कर रहे हैं एंड डेडली 10 ने अपना एक काम फिक्स रखा हुआ है कि कुछ करें ना करें, बस एक पिक अगर निकाल लेते हैं दैट इज इनफ फॉर हिज टीम एंड सक्सेसफुली राउंड निकल रहा है. रेमन हेजिटेंट है साइड में एंट्री लेने के लिए क्योंकि थ्रेट काफी ज्यादा है. स्काई स्मोक का यूज किया गया है बट बैड लव इज बीइंग वेरी बैड फॉर द ओपोनेंट्स एंड दैट्स व्हाट he has to do. एक रॉन्ग ऑर्बिटल स्ट्राइक का यूज देखने के लिए मिला है एंड क्लियर ट्रेड भी हुआ था. मॉली जरूर यूज की गई थी बट नॉट मच टू डिलीवर एनी डैमेज. 3 वर्सेस 3 एग्जैक्ट ट्रेड हो रहा है. कॉली इज रेजिंग राइट नाउ विद ऑल द अल्ट्स एंड द फ्रैग्स दैट ही इज टेकिंग. सासमी उका सेव पे पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे बट इट फेल्ड एंड नो एचपी टू सेव दिस राउंड. Absolutely. What did I just witness? Deadly getting a collateral double kill through the smoke. I mean, what is this man doing? Is he wearing some kind of glasses where he could see the enemies through the smoke? That was a that was a very good job by Deadly over there. And I guess Smoke is eagerly waiting for Deadly to push down right now, and Deadly ka position to reveal ho chuka hai. Smoke is going in for a wide peek and he will manage to take Deadly down. It's a 1v1 situation, Tanya, right now. FSC Sports, Sasmi is trying to push over towards the CT, and there comes Smokia from nowhere, takes Sasmi down, and that's finally the second round for FSC Sports. That's a good job. That's a good thing to begin with. And speaking about Deadly, wow. He did flush out half the enemy's team with just one bullet. Deadly is being deadly. He is living by his name. This time Rio doesn't have any eco to purchase any weapon. He's just going. No, he is not. His teammates are definitely going to buy him the weapon. अब सब कोई AR, सब कोई full shields के साथ जा रहे हैं except rounds अब धीरे धीरे कम होते जाएंगे. एक बूम बॉट को डाला गया है जो डिस्ट्रॉय भी हो चुका है बैड लव की ओर से. एक हल्का सा बैकफुट जाते हुए नजर आएंगे. क्या यहाँ पर स्मोकी पिक लेंगे? वेल स्मोकी लेंगे या नहीं लेंगे? कॉली जरूर सेस्मी को ले लेंगे. कंट्रोलर वर्सेस कंट्रोलर की बैटल हो चुकी है. रियो यहाँ पर वेट कर रहे हैं. बिलोंग की एंट्री से फ्लैश बिल्कुल सही वक्त पर आता है जिसके चलते रियो को बैकफुट जाना पड़ चुका है. डेडली वेट कर रहे हैं कि एक कोई पीक ले ले एंड वन टैप लग जाए. वैंडल का आउल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा एंड एनिमीज रिवील हो चुके हैं. सो डिस्ट्रॉयड और नो बट दे आर स्पॉटेड.
Yeah, their positions have been pretty much revealed away and deadly. It was not really necessary for him to go ahead and take that shot, which did take a lot of his HP, by the way. It's down to 51 HP. Smokey over there comes into the side, but Rio and Deadly have got a very good trade game over there. The perfect crossfire setup to get the enemies trapped in. And there you go, that's a triple kill with leaving FSC Sports final player in the map. He gets a one, he gets a double kill, and Smokey, little does he know that he's towards the hooker, and Battler will finish things for Weird Esports again. Nice try. I would say Smokey, he did put out his best in that round. He went for such a quick reaction, Tanya. He looked over to the CT. He runs back. He looks over to the elbow, gets a double kill. If only he knew the position of Bad Love, things could have been easier. Maybe he could have clutched that 1v3. A very close call it was, and unfortunately वो पूरा प्लेसमेंट जो था, प्लान जो था, काफी सही चल रहा था, बट अल्टीमेटली वाज टेकन डाउन। 7-2 का स्कोर हो चुका है। रिस्क काफी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहा है एफएससी स्पोर्ट्स के लिए। एंड यहाँ पर ब्लेड स्टॉर्म आई गॉट का रेडी हो चुका है और रिकॉन डार्ट को ब्रेक कर दिया गया है। डेडली यहाँ से बैकफुट जाएंगे, हुक्का में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। नोबडी गेट्स फ्लैश। आई गॉट इज अटेम्प्टिंग टू गेट द फर्स्ट पिक एंड ही गेट्स स्पॉटेड इंडीड। क्या आगे जाना चाहेंगे या फिर एक प्ले एंड पॉज दिखेगा? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। डेडली इज टेकिंग एवरी advantage from any utilities of his teammate, and this is the exact team support, exact team play that we are getting to see. Bad luck यहाँ से और एक पिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन what a quick rotation, TP का यूज कर लिया गया है। तासनी यहाँ पर वेट कर रहे हैं। तासनी will be able to take down 1 second and third, and it was a total of quadra kill coming in. एक बहुत ही अच्छा controlled play and he was the only man on site A. अच्छी positioning थी, अच्छे frags थे and एक काफी शानदार round आ चुका है BRD Sports के हाथों में। Yes, Weird Esports, well played, I would say. And this already gave them the enough rounds they needed. Tanya, they are on the 8th round currently, 8 points to themselves. And FSC Esports, they have just got 2 last chances to end in a bright note for the first half, I would say. And FSC Esports, if they lose this one, things are going to be pretty much in the favor for Weird Esports. If Weird Esports go down to 9 rounds in the first half, and things will seem like it's a one-sided. It's the grand finale. We need some competition. We need some firing blood coming out of those bullets. And here we are. Rio, yet he's trying to take a look over towards the long and deadly. Not every time you get to push Hooker, man. He gets taken down by iGod, but an immediate trade coming in from Bad Love. So the crossfire setup is still working for Weird Esports. One man down from both of the teams, Tanya. Launching smoke. एंड यहाँ पर ए को ब्लॉक किया जा रहा है साइट एंट्री नहीं मिलने के लिए। एक स्प्लिट प्ले लिया जा रहा है, दोनों साइड्स पर 2-2 प्लेयर्स हैं। रियलाइजिंग लेट्स नॉट गो बी, हम इस बार ए की कोशिश करते हैं, लेकिन ए इज हाईली पॉपुलेटेड ऑन द डिफेंडर साइड एज वेल। एंट्री डिफिकल्ट हो सकती है। सेस्मी का यहाँ पर स्मोक क्लाउड जरूर नजर आ रहा है एंड रेनिंग हैज गॉट सम प्लान्स। वॉल कर दिया जाता है पूरी तरीके से एंड एक अच्छी वॉल है टू डिले एट द बैक स्टैब अटेम्प्ट इफ एट ऑल एनी। साथ ही में सीकर्स को यूज किया गया बैड लक शो स्टॉपर के साथ रेडी होते हुए। बहुत शो स्टॉपर्स फिर से एक बार साथ में रेडी होंगे एंड यहाँ पर बैड लव रेमन को डाउन कर देंगे। एड शॉट अभी भी रेडी है। ऑर्बिटल स्ट्राइक क्या किसी को कंफर्म कर सकेगा? फिर से एक बार वेस्ट ऑफ ऑर्बिटल स्ट्राइक, बट कॉलिंग अबाउट एट वेस्टेज। डिले जरूर किया गया है टू गेट द इमीडिएट पिक दैट वाज कंप्लीटली रिक्वायर्ड। स्मोकिया टेक्स वन एंड आई लिटरली वांट टू सी द स्मोकिया ऑन स्मोकी प्ले जो कल नजर आया था, वो आज हल्का सा मिसिंग जरूर है। Yes, looks like Weird is definitely not having a good end to the first half. I believe FSC Sports, they did have a very tough fight in the last round. Well, thanks to Smokes and thanks to the healer, which got most of the job done. We have a double healer setup from FSC Sports. And they are having the best lineup so far. They have resurrections, they have seekers, they have wolf. But a lot of intel and a lot of health can be regained again and again for FSC Sports. And speaking about Weird, we don't have any healers left, and neither do we have flashers. Compared to FSC Sports, we have a double flash setup from Sky and of course an aggressive Sage. Raymond gets one, Cody gets one, and now they're gonna make their way over towards the hookah. Deadly gets one. Now he's looking forward to get to the race, and he definitely will.
He took the revenge of the first two first bloods which FSC Sports had in their favor. एड शॉट रियलाइज कर चुके हैं कि ब्लेड स्टॉर्म का सामना करना पड़ेगा, तो इमीडिएट हुक का पुश नहीं कर रहे हैं, रोटेशन लिया जा रहा है। हंटर्स फ्यूरी का यूजेज, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन कॉली यहाँ पर अच्छा खासा डेडली को डैमेज देकर अपने लिए साइट एंट्री क्लियर कर चुके हैं। लेकिन बैड लव ऑलवेज मैन, दिस इज द मैन who is saving the team from any backstab attempt, and he is the one flanking every single time, and इसी के साथ 1v1 पर सेव हो चुका है ये राउंड। क्या यहाँ पर प्लांट करने की कोई प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि कोहली डज हैव स्टिम, कोहली डज हैव मॉली, बट ही डजंट हैव एनी एचपी टू वर्क आउट विद, एंड रियो भी रोटेशन ले चुके हैं। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी an immediate confirmation coming real close, and is it a fake plant? Yes, it was a fake one. Kohli is faking, trying for the longer route, waiting for the कभी इनकमिंग, बट वहां से भी लैंप से भी कोई नहीं आने वाला है। हाउ विल द कंफर्मेशन कम, दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, एंड रियो इज रेडी विद द क्रॉस हेयर ऑल सेट अप 14 सेकंड्स, एंड इट्स अ क्लच। एक 9th राउंड आ चुका है VALORANT स्पोर्ट्स के हाथ में। That's a well played, mate. Rio and his patience. He knew what exactly the enemy was thinking. He was into the brain of Kohli. He was like, what would I do if I was in his position? And he exactly predicted it out, played the game very well. There was a good prediction coming in from Rio, not gonna lie, which comes to an end for the first half. That is 9 rounds for VALORANT Sports in 3 for FSC Sports. FSC Sports having a very tough beginning in the grand finale. Although we still have hope left in the defending side, Bind, considering that Bind is a defending siren map. Let's have a look at the scoreboard as well. Bad Love sitting with 19 kills, Deadly with 13. On the other hand, Smoke is the only one who has hit the double digit with 12 kills and 10 deaths. The KD looks absolutely outstanding for VALORANT Sports. Well, compared to FSC Sports, they still have to get on the track. Even with the double healer setup, Tanya, I don't think things are going in the bright side for them. Even I think the double healer setup should have worked wonders actually. By taking a single pick, you can again regrow yourself and again be ready to pick up the fight. लेकिन वो situation arise ही नहीं हो रहा है. That is what at least we expect the players to go ahead with. And defenders side में controller भी है, but I don't know what is exactly going wrong, except Headshot as the Sova was playing a better initiator, क्योंकि वहाँ पर एक early picks हमें देखने के लिए मिल रहे थे. इस बार Headshot की ओर से भी kills में कमी नजर आ रही है, एंड अब जब साइड्स चेंज हो जाती है तो एक रोल चेंज होगा, प्ले चेंज होगा. लेकिन ऑलरेडी VALORANT Esports इन द मैप ऑफ माइंड एक डोमिनेंस क्रिएट कर चुकी है, एक लीड क्रिएट कर चुकी है. अब फियरलेस पुशेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम VALORANT Esports, क्योंकि जब आपको पता है 3 more rounds to go to get the first point into your favor, they are definitely going to push, and pistol round is the exact place जहाँ पर पता है कि ज्यादा वेपनरीज नहीं देखने को मिलेगी. रेमन रियलाइजिंग ए पुश आ सकता है, वॉल इमीडिएटली किया गया, बाद से 2 प्लेयर्स पुश कर रहे हैं. आई गॉड ने स्पॉट किया एंड इमीडिएट बैक डैश हो चुका है. लेट्स सी इफ ही इज एबल टू पिक एंड डिले द एंट्री. Well, this is definitely a question that we are finding the answer for and looking forward. पहला pistol round है उनका second half में. If they really don't want to lose this, if they lose this, they know what are the stakes at. तब VALORANT Sports double digit पे चली जाएगी, and that will be again a one-side game coming into the play. Deadly spots out players. I got को काफी उन्होंने अटैक किया है, बट nevertheless उनको हील मिल जाएगा. 2 हीलर्स की सेटअप है उनके पास. वॉल भी यहाँ पे निकल चुका है ए शॉट पे. सो सेटअप तो एक का ही लग रहा है, बट द रोटेशन क्विकली चेंज डाउन टू द बी बॉम्ब साइट. वाइपर को वॉल ज्यादा कुछ नहीं करने वाले. इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ बेट ऑन टुवर्ड्स द ए बॉम्ब साइट व्हाइल द रेस्ट ऑफ द क्रू अराइव्स ओवर टुवर्ड्स द हुक्का. कोहली को ऑलरेडी पोजीशन मिल चुका है, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू वॉक आउट इन फ्रॉम द हुक्का जस्ट लाइक मैन. बोथ ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम T-Long will go down. The spike is getting planted down. The rotation has already begun for the defenders. 2 from the CT and 1 from the backstab. Do you think this 3v5 is gonna happen? I don't think FSC Sports stands a chance here, but iGod is able to reduce it to 3 versus 3, and यहाँ पर क्रॉस हेड लगाने की कोशिश जरूर की गई थी. फिर से एक बार इक्वलाइज्ड बैटल चल रही है, ट्रेड्स परफेक्टली ले जा रहे हैं, लेकिन अब तक सैसमी आ चुके हैं 1 versus 1 में. क्या यहाँ पर फर्स्ट पिस्टल राउंड दिया जाएगा या फिर नहीं? बिल्कुल दिया नहीं जाएगा. फाइनली FSC Sports एज अ डिफेंडर एक बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, एंड स्मोक किया
वंस अगेन ट्राई टू गो अहेड विद द स्मोकी प्ले। देखेंगे कितनी ज्यादा देर तक ये स्मोक्स हमें नजर आएंगी। Yes, that was a beautiful beginning for FSC Sports. A 3v5 going into the favor of FSC Sports. I mean, that's a mad performance, Tanya. मतलब एक 3v5 जबकि एक 2-man एडवांटेज था बियर्ड स्पोर्ट्स के साथ, फिर भी उन्होंने वो राउंड हार गया, पता नहीं कैसे. Now बियर्ड स्पोर्ट्स should be in a big trouble. They have to look after where they went wrong. एक 2-man एडवांटेज होने के बावजूद भी वो हार गए, कितना उनका इकोनॉमी का असर पड़ा होगा. नाउ इट्स गोइंग टू बी आई गेस अ फोर्स बाय राउंड फॉर बियर्ड स्पोर्ट्स. उनके पास साथ में स्पेक्टर्स है और ऑलरेडी रेमन यहाँ 13 HP का कम हो चुके हैं. रियो, वाओ, ही गोज डाउन एज द फर्स्ट पिक इनटू द हैंड्स ऑफ आईकॉर्ड. अच्छी बात है. मेरे को लगता है कि तानिया अभी भी कमबैक करने के चांसेस है, जैसे तरीके से एफसी स्पोर्ट्स खेल रही है यहाँ. Ouch, this was sad, very close call. अकेले बैड लव बच जाएंगे, लेकिन कॉली इज making bad love taste the exact same bitter taste of his own medicine. Backstab, long flanks या फिर any movement को block करने के लिए. आगे क्या करना चाहेंगे वो पता चलेगा, but I would appreciate as the defenders FS Esports एक अच्छा comeback देते हुए नजर आ रही है, but they need to make sure कि continuity में कहीं पर भी barrier ना आए, because we have seen FS Esports एक बार अगर continuity break होती है, so they are not able to come immediately go ahead and push. I got का blade storm ready है, जिसके चलते ही इज नॉट गोइंग अहेड फॉर द परचेज. एड शॉट एक इमीडिएट ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं. एक ब्लाइंड वेस्ट हो चुका है, गाइडिंग लाइट नहीं वेस्ट हुआ. यहाँ पर ऑलरेडी एक प्लेयर है एंड रिकॉन गार्ड को ब्रेक डाउन कर दिया गया है ऑन द कोर्ट. एमएफ कॉर्ड एक प्लेयर को ले लेंगे, कॉली ट्रेड आउट कर देंगे बैड लव को, टर्निंग इट टू अ 4v4. ट्रेल ब्लेजर डाला गया है, डेडली को थोड़ी देर के लिए कनकस जरूर किया गया है, बट डीलिंग इज नॉट सफिशिएंट. पिंच शेल का यूज फिर से एक बार ऑन बी लॉन्ग, लेकिन प्लेयर्स हैव गॉन फॉर द रोटेशन एंड लेट्स सी क्या यहाँ पर एंट्री मिलेगी. सेस्मी एक सिंसियर अप्रोच रखकर आए जरूर थे, लेकिन यहाँ पर वॉल का सामना करना पड़ा. अगर सेज वॉल चली गई है इट्स ओके, स्टिल प्लेयर्स हैव टॉक्सिक वॉल, जिसके चलते और डीले हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेल, डीले तो जरूर होने वाला है, बट आई गेस प्लांट के लिए डीले नहीं होगा. एमएफ कॉर्ड ने क्विकली अपना प्लांट दे चुके हैं ए बॉम्ब साइट पे. इट्स अ 4v4 सिचुएशन राइट नाउ, एंड एफएससी स्पोर्ट्स के पास ऑलरेडी आई गेस सीटी का कंट्रोल है, और यहाँ पे बैक स्टैप पे हमारे कोहली आ चुके हैं. कोहली सर, अभी ब्रिमस्टोन वर्सेस ब्रिमस्टोन की मैच होने वाली है, एमएफ कॉर्ड वर्सेस कोहली, एंड आई एम प्रीटी श्योर MF God will get the advantage. Hopefully, Raymond has pushed out from Shaz. There's one player behind the boxes. He did take a lot of damage. Spike already tap हो चुका है यहाँ पे, एंड डिफ्यूजर भी नीचे जा चुके हैं. एक और भी किल मिल चुका है मुफ्त में. एंड आई गेस नॉट एवरी सिंगल टाइम विल द रीटेक वर्क फॉर एफएससी स्पोर्ट्स. बियर्ड स्पोर्ट्स ने काफ़ी अच्छा एग्जीक्यूट किया है वहाँ, एंड इट वाज एफएससी स्पोर्ट्स फोर्स बाय, आई मीन उनका बोनस राउंड था, तो बियर्ड स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी मुश्किल नहीं लगा था ये राउंड पोस्ट प्लांट खेलने के लिए. और एंट्री मिल गई साइड में, इमीडिएट कंफर्मेशन हो गया. दे वेंट अहेड विद ऑल द फोर्स, ब्रेक किया गया, चाहे आप सेज का वॉल कर लो. स्मोक आ चुका था एंड यहाँ पर टॉक्सिक स्क्रीन को भी एक बैरियर को क्रॉस आउट करके प्लांट किया गया था. तो एक फोर्स एंट्री थी, सक्सेसफुल एंट्री थी. क्या इसी तरीके से हर बार एक ईजियर एंट्री मिलेगी? आई गॉट की पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी है, बट चेंज ऑफ प्लान, यहाँ पर अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, एक्सपोज नहीं करना चाहते. स्टिल द साइट इज नॉट येट कमिटेड. एक रियो की ओर से शॉक डाला जा रहा है, डैमेज भी डिलीवर हुआ है, बट हीलर है इनके पास, तो ज्यादा दिक्कतें नहीं आने वाली है. लेट्स सी आई गॉट और क्या करेंगे, क्या यहाँ पर ब्लॉक करना इजी होगा? स्लो ऑफ का यूज किया गया, सासमी रोटेशन ले लेंगे. स्पाइक कमिट होते हुए नजर आ रहा है ऑन साइट ए. लेट्स सी क्या यहाँ पर फिर से एक बार इसी तरीके से पुश देकर वॉल को ब्रेक करके एक ईजियर प्लांट हो जाएगा अगेन. यहाँ पर बार बार चेंज ऑफ माइंड है, विवरिंग माइंड है. दे आर नॉट डिसाइडिंग कि किस डायरेक्शन में जाना सेफ है. डायरेक्शन का तो पता नहीं. आई गॉड तो पिक्स तो काफी अच्छे से निकाल रहे, एक के बाद एक, एंड यहाँ पे बैड लव उनके साथ एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं. हुक्का पे इमीडिएटली कोनी को वार्निंग मिल चुका है, उन्होंने ड्रोन तोड़ दिया है. वन ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन टैग्ड. कोहली सिटिंग राइट अंडर द नोज ऑफ टीम बियर्ड Esports, and if somebody checks that angle, I'm pretty sure Kohli is going to be in a big trouble.
स्मोक यहाँ पे बैकअप के लिए खेल रहे हैं, उनके हाथ में स्पेक्टर्स हैं, तो फिलहाल के लिए तो गन एडवांटेज FSE स्पोर्ट्स के पास है, बिकॉज वी जस्ट गॉट अ किल थ्रू द बुलडॉग बट गेट्स इमीडिएटली ट्रेडेड। कोई बात नहीं, रियो यहाँ किल्स लेने की कोशिश में खुद ही मर चुके हैं। MF गॉड immediately responding to smoke. Yeah, 8 seconds left to get the spike planted down, and there comes Bad Love from nowhere, has a vandal, gets one, but unfortunately couldn't delay it more. So this is going to be the round for FSE Sports. Well played. टाइम का काफी एडवांटेज था, या 8 सेकंड बचे थे तानिया। नो मैटर जितना भी एडवांटेज होता लोगों का, अगर स्पाइक प्लांट नहीं होगा तो वो टाइम फैक्टर छूट जाता है हाथ से। टाइम फैक्टर की काफी ज्यादा ये पर्टिकुलर राउंड में थी। आई टोल्ड एक विवरिंग माइंड है, दे वर नॉट एबल टू डिसाइड ए जाना है बी जाना है। स्पाइक को पहले तो बैरन छोड़ दिया गया था, देन रोटेशन पर फोकस दिया गया था, एंड टाइम पूरे का पूरा वेस्ट आउट हो चुका था। एक राउंड वेस्ट हुआ है। आई थिंक वियर्ड ईस्पोर्ट हैज गॉट सम गुड प्लान। 3 अल्ट रेडी हैं आउट ऑफ ऑल 5 प्लेयर्स। एक अच्छा अल्ट प्लेयर में देखने के लिए मिल सकता है। कोहली की ओर से स्काई स्मोक्स आ चुके, जिसके चलते डिले करने की कोशिश जज हाथों में होगी। अच्छी तरीके से बैकफुट भेजा गया है, लेकिन कितनी ज्यादा देर तक बैकफुट भेजा जाएगा। और यहाँ पर रिकॉर्ड डॉट का यूजेज, आई गॉट की प्लेसमेंट एग्जैक्ट स्पॉट हो चुकी है, जिसके लिए शॉक डार्ट डाला गया। वन टैप फ्रॉम द शेरिफ इज इनफ टू टेक डाउन आई गॉट बाय रियो, टर्निंग इट टू अ 5v4 सिचुएशन। मैन टू मैन एडवांटेज है, लेकिन वंस द डैमेज डिलीवर्ड ऑलवेज डिलीवर्ड, जिसके चलते यहाँ पर हम कम एच को देख पा रहे हैं। प्लेयर में हंटर फ्यूरी की एंट्री आ चुकी है। डेडली विल बी सेव्ड और नो स्ट्राइक भी एक बार देखने के लिए मिल रहा है। एंड इसी के साथ नो फिनिशर्स विथ द अल्टीमेट, लेकिन एक केओस जरूर देखने के लिए मिला था। विद दैट इट इज 7th राउंड गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ FSE स्पोर्ट्स। कोहली जी ने लिटरली गोभी का पकौड़ा बना दिया सब ओपोनेंट्स का। एवरीबडी वाज स्टक इनसाइड द showers, this hunter's fury coming, this orbital strike coming, this Kohli teleporting and opening his way for 3 kills in his hand. Crazy play by Kohli, and second half पे आते हुए ही FSE Sports completely changes the board. We have Raymond with 11, I got with 13, Kohli with 15. जब आपको याद है तो पहला हाफ में ओनली स्मोकिया खेल रहे थे, उनके पास भी बस 12 खिलते। अभी कंप्लीटली परफॉर्मेंस ही बदल गया है। एंड आई गोर थोड़ा ज्यादा ही अर्ली पिक में चले जाते हुए डेडली दोनों को ले चुके हैं। दैट्स अ डबल किल, दैट्स अ वेरी गुड एंट्री फॉर FSE Sports बाय द वे। VALORANT Esports, उनके पास अभी भी एक मैन एडवांटेज है, वो अभी भी रीटेक कर सकते हैं, अभी भी पोस्ट प्लान पोजीशंस अच्छे से खेल सकते हैं। तानिया बिल्कुल मिल सकता है। स्मोकिया जज के साथ पुश करने की कोशिश करें, लेकिन सैसमी का बिल्कुल सही वक्त पर वाइपर्स पे रेडी हुआ है। कोहली यहाँ पर मॉली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली डैमेज बिल्कुल भी डिलीवर नहीं हुआ। MF गॉड की एक अच्छी स्नीकी पोजीशन, जिसके चलते एक पिक निकाला गया है। एंड स्मोकिया यहाँ पर अपने लिए एक पिक निकालेंगे। कुछ भी कर ले, टाइम हाथ से जा रहा है। इट इज सिचुएशन नाउ और नेवर। सैसमी यहाँ से अच्छी तरीके से नाउ और नेवर को बिल्कुल राइट नाउ में कन्वर्ट करके अपने लिए 11th राउंड निकाल लेंगे। एंड अ स्टेप क्लोजर टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट इनटू देयर पॉकेट्स, इनटू देयर बैगेज। यहाँ पर फिर से एक बार बी साइड को कमिट करने की कोशिश की जा रही है। लर्क करने के लिए रखा गया है एक प्लेयर। लेट्स सी क्या वो लर्किंग फेवर करेगी या नहीं। सैसमी इज द मैन। हमने देखा है कि बात में जाके एक साथ 3 से 4 पिक्स निकाल चुके हैं, बट दे वर ऑन द अदर साइड, दिस टाइम ऑन द अटैकिंग साइड, जस्ट फॉर कंफ्यूजन, जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ फेक एंट्री प्रेजेंटेशन। हम एक ए स्प्लिट देख पा रहे हैं, बट साइड भी टोटली कमिटेड है। और यहाँ पर हुक्का पर बूम बॉट भी छोड़ा इमीडिएटली जाएगा। शो स्टॉपर एक कंटिन्यूटी में रेडी है, एंड स्मोकिया की ओर से इमीडिएटली पिक डाउन कर दिया गया है। वी आर नोटिसिंग वन थिंग, बार-बार शो स्टॉपर से पिक निकालने की कोशिश की जा रही है। यूजुअली व्हाट वी टेंड टू डू इज लास्ट में यूज करने के फोकस किया जाता है, बट हियर अर्ली पिक निकालने में फोकस किया जा रहा है। आज पता नहीं बैड लव ने लंच पे क्या खाया, उनका हेडशॉट पे हेडशॉट एम चल रही है। ही इज लिटरली हंटिंग हेड्स राइट नाउ। थानिया ऑलमोस्ट उनका 4K, अभी एक और किल एंड मे बी ही विल गेट द एस, बट बैड लव हैज टू गो फॉर द रोटेशन। स्पाइक ऑलरेडी ए बॉम्ब सेट पे प्लांट हो चुका है। इट मींस अभी ये रोटेशन पे जरूर आएंगे, बट सैसमी इज ऑलरेडी वे टू अहेड एंड इज गोना गेट दैट किल ऑन टुवर्ड्स स्मोकिया। दैट्स द मैच पॉइंट फॉर VALORANT Esports. One more round till we decide the fate.
losing too many rounds on the attacker side. Now this is the price you have to pay. The map of mine. फिर से एक बार एक fake attempt की कोशिश जरूर की जा रही है. And if we compare the kills, Bad Love is the only man to reach the 20 marker. Indeed, almost on the verge of reaching the 30 marker. अगर यहाँ पर 4 kills निकल जाती हैं तो on the defender side हम देख पा रहे हैं कि Resurrection ready है, Seekers ready हैं. क्या वो properly defensive system में काम आएगी? आउल को भेजा गया है. Orbital strike थोड़ा सा early use हुआ था and Raymond will save himself. लैब से immediately पीछे जा चुके हैं. I got फिर से एक बार चार्ज में वेट कर रहे हैं. Deadly का एक अच्छा पोजीशन आ चुका है जहाँ से हेवन को स्पॉट किया जाएगा, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजियर अफेयर. स्काई स्मोक का यूज प्लांट इमीडिएटली हो जाएगा. दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट स्पाइक प्लांट दैट वी हैव सीन एंड इजीएस्ट एंट्री विदाउट लूजिंग मेनी प्लेयर्स, टर्निंग इट टू अ 2v3 सिचुएशन. अभी डिफेंडर्स एडवांटेज में है. डिफेंडर्स एडवांटेज पे है, बट यहाँ पे एक पर्सन है एमएफ कॉर्ड जो रोटेशन पे निकल रहे थे, बट ऑफ कॉर्ड कॉट हो चुके हैं. नाउ इट्स अ 1v4 सिचुएशन व्हिच मेयरली सीम्स पॉसिबल. यहाँ पे शॉक डट के इस्तेमाल आते हुए एंड वो शॉक डट जरूर इनको एक किल देने वाली है. And there is Jet who is standing really close, is trying to get another kill, but meanwhile यहाँ पे डिफ्यूज हो चुका है and FSC Sports will put the delay for the victory of Weird Esports and that is the 8th round for FSC Sports. बहुत ही अच्छा खेला हो गया था, बहुत ही जल्दी से प्लांट मिला था Weird Esports को. पहला पिक्स पे मिले थे बट एक रेजरेक्शन और एक ऑफ गार्ड एंगल पे पुश करने की वजह से they lost that round. We almost thought that Weird Esports won it. Weird Esports जानबूझ के एक राउंड मिस कर चुकी है या एक मामूली सी गलती के चलते दे हैव मिस्ड दिस राउंड कमिंग इन. अब फिर भी दे आर इन द लीड. वन गुड प्ले एंड 1 पॉइंट टू देयर हैंड्स. एक इमीडिएट बी पुश नजर आ रहा है एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से ट्रेल ब्लेजर को टीपी में यूज किया गया है. रियो की एक एंट्री ये इजी बिल्कुल नहीं होने वाली है. 1v3 सिचुएशन. रियो ने ये डेंजर रियलाइज कर दिया जिसके चलते एक बैकफुट जाने की कोशिश की गई है. शॉक डार्ट डाला गया है. डैमेज डिलीवर हुआ या नहीं पता नहीं, बट ड्राउन से पूरा इंटेल ड्रोन से पूरा इंटेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने एनिमीज यहाँ वेट कर रहे हैं. रियो की ओर से पूरा अपडेट आ चुका है एंड ही हैज स्पॉटेड स्मोक किया. आई एम वेरी श्योर ऑफ अब एक इमीडिएट पुश देखने के लिए नहीं मिलेगा. यस, बट ऑन द अदर हैंड किसी के पास भी मैन एडवांटेज नहीं है फिलहाल के लिए, तो थोड़ा मुश्किल होने वाला है. We are already down to 55 seconds and look at FSI. God came for the flank but unfortunately deadly बन के बैठे हुए कि कौन आएगा बंदा जो बैक स्टैब हमारे पे करेगा. And Raymond on the other hand एक फ्लैंकर को पकड़ चुके हैं. That is Sasmi and looks like Deadly is gonna be pushing over towards the U-Halls while Raymond is still in the U-Hall. Smokia gets one. Deadly goes down. Raymond with a double kill. He is the best bulldog player I've seen so far. तान्या, उनका हाथ में जो बुलडॉग चलता है एकदम it works like a charm for him. And Smokey gets another pick which leaves us only Bad Love in a 1v3 situation. आपको क्या लगता है Bad Love ये क्लच कर पाएंगे? वेल स्मोकिया यहाँ पर 3 किल देके करने का मौका नहीं देंगे. स्मोकिया टर्न्स द मैन टू टेक 3 फ्रैग्स इन 1 राउंड एंड टर्निंग इट टू अ 9-12. अभी भी 1 पॉइंट अवे. इज इट अ ड्रीम कम ट्रू फॉर एफएससी स्पोर्ट्स के डिफेंडर्स में राउंड निकाल लेंगे, बट दे कैन नॉट अफोर्ड टू डू अ सिंगल मिस्टेक हियर एंड इफ एट ऑल दे डू मुसीबतें बढ़ सकती है. आई गॉट इज गोइंग अहेड विद द ऑपरेटर. अब यहाँ पर आई गॉट के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है इमीडिएट पिक्स की एंड आई होप वो आई गॉट अपना कमाल दिखा पाए. बिकॉज अगर आप इतने क्रूशियल कट सिचुएशन में हो एंड डिस्टेंस फाइट ले रहे हो तो एक लॉस ऑफ राउंड क्या पूरा का पूरा लॉस ऑफ पॉइंट देखने को मिलेगा. आई गॉट इज एंटिसिपेटिंग थ्रू द शार्ट्स. फिर से एक बार शो स्टॉपर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर शो स्टॉपर से बैड लव रेमन को डाउन कर देंगे. स्मोकिया को डाउन कर देंगे. आई गॉट की स्नाइपर बिल्कुल सही वक्त पर काम आई है. बॉम्ब बॉडी प्लस यहाँ पर पेंट शेल का सही इस्तेमाल किया गया है. टर्निंग इट टू अ 4v3 लेन टू मैन एडवांटेज में आ चुके हैं Weird Esports. और यहाँ पर कॉली लैंप्स के थ्रू आगे जाते हुए नजर आएंगे. डेडली यहाँ पर कॉली को डाउन कर देंगे. टर्निंग इट टू अ 1v4 एंड आई थिंक Weird Esports have done it and they are going to reach what they want. But we still have hope left. We still have headshot left in a 1 versus 3. But I guess काफी ज्यादा देर के लिए नहीं होगा because Rio is gonna shut him down.
एंड एंड थिंग्स फॉर एफएससी स्पोर्ट्स। वेल, एफएससी स्पोर्ट्स काफी क्लोज मैच तक उन्होंने लेके आ गए थे। इट कुड हैव गॉन टू एन ओवर टाइम, तानिया। 9-13 पे जीत चुके हैं वीआरडी स्पोर्ट्स अभी। कांग्रेचुलेशंस वियर्ड स्पोर्ट्स। एक अच्छा परफॉर्मेंस था डिफेंडर्स साइड पे ऑन द मैप ऑफ फाइन, जिसके चलते इतनी लीड डिफेंडर्स साइड में बना ली कि बहुत कम राउंड खेलने पड़ेंगे, हमने ऐसा सोचा था। बट वियर्ड स्पोर्ट्स डिड गिव अ टफ कंपटीशन व्हाइल टर्निंग देमसेल्व्स इनटू द डिफेंडर्स साइड। ज्यादा देर तक चला नहीं, एक मैप जा चुका है, बेस्ट ऑफ 3 है। नाउ आई थिंक जो एक गलती हो चुकी थी इनसे बाय गिविंग स्मोकिया नॉट द कंट्रोलर बट द इनिशिएटर, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट द ड्यूलिस्ट, माय बैड, आई थिंक स्मोकिया नीड्स टू कम बैक टू हिज कंट्रोलर रोल, बिकॉज वहां से एक पिक भी निकाल पा रहे हैं, साइड को भी हैंडल कर रहे हैं, एंड एक विन विन सिचुएशन भी क्रिएट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। यस, काफी सही से बोला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बट ये तो पहला ही मैप है, इट्स अ बेस्ट ऑफ 5। वी डिड नॉट सी सच, आई वुडंट से इट्स अ वन साइडेड परफॉर्मेंस, बट काफी क्लोज मैच गया था। एफएससी स्पोर्ट्स कुड हैव लॉस्ट टू अ वन साइडेड परफॉर्मेंस। उन्होंने काफी अच्छे से कम बैक कर लिया था डिफेंडर्स पे। मे बी इफ दे हैड अ चांस टू बिगिन द मैप विद डिफेंडर्स, दे माइट have had a very stronger competition with weird esports. Anyway, pick तो weird esports का था। they started off as attackers and they choose the map of Bind. Well, next map definitely favor में जाने वाला है FSC Sports के लिए. So I hope that they put a very strong competition against Red Esports in the next map. If they lose the next map, then I think 60% of the job is done for Weird Esports right now. They are just one map away from winning the finale. विनिंग द टाइटल, विनिंग द टूर्नामेंट, विनिंग द नेम एंड द प्राइज पूल। देखेंगे वी आर डी स्पोर्ट्स इस बार क्या चेंजेस लाएंगे, बिकॉज वी आर डी स्पोर्ट्स नीड्स टू मेक श्योर कि कुछ चेंजेस यहाँ पर लाए भी, बिकॉज अगर आप एक ही स्ट्रैटेजी से खेलते जाएंगे, ओपोनेंट्स विल गिव द एग्जैक्ट काउंटर रिक्वायर्ड विथ एवरी मैप कमिंग इन। बट कमिंग बैक टू एफ एस ई स्पोर्ट्स, यहाँ पर ज्यादा चेंजेस की जरूरत है। कंट्रोलर doesn't need to be a duelist here, क्योंकि एज अ ड्यूलिस्ट शो स्टॉपर से अगर एक दो किल्स निकाल भी लिया, पिक्स निकाल भी लिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू प्लांट द स्पाइक, जिसके चलते अटैकिंग साइड में जब थे एफएससी स्पोर्ट्स, राउंड्स वन बाय वन लूज करते गए, एंड लूजिंग ऑन द काउंट ऑफ नो स्पाइक प्लांट्स। आई थिंक मैक्सिमम 2 या 3 स्पाइक प्लांट हुआ होगा थ्रू आउट, जो कि डिफ्यूज भी एक हो चुका था। तो समवेयर प्लानिंग अच्छी नहीं थी, प्लॉटिंग अच्छी नहीं थी, एंड आई थिंक अब नेक्स्ट राउंड में लेवल अप करना होगा to not give the exact 60% and coming back to a 50-50 ratio. That's true. अभी एक ही एक मौका बचा है एफएससी स्पोर्ट्स के पास, जाके वो इमीडिएट आंसर दे पाए वीआरडी स्पोर्ट्स के साथ। एंड आई गेस दे विल डेफिनेटली यूज दिस अपॉर्चुनिटी वेरी वेल। नेक्स्ट मैप में काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट द एजेंट पिक वाज क्वाइट यूनिक कमिंग इन फ्रॉम एफएससी स्पोर्ट्स। मे बी उनका एजेंट पिक उनका फेवर में नहीं था, उन्होंने डबल हीलर सेटअप लिया है, काफी बढ़िया था, बट उनको वो उनके एडवांटेज तक नहीं आ पाया। they could have gone for something better, like अच्छा इनिशिएटर ले सकते थे, नहीं तो सेंटिनल किल जॉय ले सकते थे, उनके साथ और भी थोड़ा टफ हो जाता था। बहुत बार बैक स्टैप में मर चुके थे, टर्रेट, अलार्म बॉट, ऐसे चीजें काफी मदद आ जाते थे उनको। उन्होंने सेज को लिया है, विच वॉज क्वाइट अ रिस्की पिक। इट डिड हेल्प देम अ लॉट इन द डिफेंडर साइड दो। walls, a shot पे wall करना, and the resurrection coming in. Remember the last round we saw a 1v4, बैड लव को क्लच करना पड़ा था। हमने सोचा कि वो राउंड ऑलमोस्ट वेडी स्पोर्ट्स जीत चुकी थी, but at the last second, at the last resort, when the resurrection came in, things definitely changed for FSC Sports. एफएससी स्पोर्ट्स डिफेंडर साइड पे जितना भी प्रेशराइज अपने आप को कर रही थी, बट काफी ज्यादा हाथ से निकल चुका था मैप। आई थिंक अगर वो 200% पे जाते हैं ना, तो देयर वाज नो स्कोप। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू स्पॉटेड, इवन आई फेल्ट कि या तो साइफर या तो केजे, कहीं ना कहीं ये दोनों एजेंट्स में से कमी फील हुई, क्योंकि रिपीटेडली बैड बैक स्टैब होते गए एंड एक ऑफ गार्ड पकड़े जा रहे थे। एंड फॉर द फाइनल 2 राउंड्स भी हमने देखा कि ये 2 हीलर्स की स्ट्रैटेजी प्लानिंग सब कुछ अच्छा था, but all that was missing was a good sentinel here. And let's head towards the map 5 scoreboard, ladies and gentlemen. Weird Esports versus FS Esports. यहाँ पर Weird Esports अपने लिए 9-13 से फर्स्ट राउंड लेकर जा चुकी है, एंड काफी अच्छा डिफेंड में एक लीड बना ली थी, जिसके चलते अटैकिंग में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्ले नहीं मिला। इफ वी टॉक अबाउट द किल्स, वेल वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर अच्छी कोशिश बैड लव की ओर से, एंड इट वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट। 28 फ्रैग्स एंड 4
more assists coming in. On the other hand, Smokia was the only man to cross the 22 marker here. टीम सपोर्ट की कमी, इट वाज फ्रॉम एड शॉट, क्योंकि एड शॉट कल बिल्कुल अलग खेल रहे थे. बीइंग द सो आई वाज एबल टू गिव अ रिक्वायर्ड इंटेल, जो आज एज अ स्काई नहीं हो पाया. यस, उन्होंने रोल तो ज़रूर सेम लिया है इनिशिएटर का, बट आई गेस थिंग्स डिफर व्हेन वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ यूटिलिटीज एंड एबिलिटीज टू यूज. बट अ गुड जॉब फॉर आईकॉड ऑन द फर्स्ट प्लेट्स. तो उन्होंने 4 फर्स्ट प्लेट्स निकाले हुए हैं, विच इज इक्वल टू डेडली का भी. उन्होंने भी 4 फर्स्ट प्लेट निकाला है, एंड चार डेडली को साइड पे रखते हैं. बैड लव ने 3 निकाले, सैसमी ने भी इक्वल एफर्ट्स डाले. कल सैसमी को हमने ड्यूलिस्ट खेलते हुए देखा था, आज उन्होंने स्विच कर लिया, आज उन्होंने कंट्रोलर खेलता, खूब बढ़िया वाला कंट्रोलर खेला था. एज आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द मैप तानिया, कि बाइंड पे डिफेंड साइड पे जब भी आप शुरुआत कर रहे हो तो डबल कंट्रोलर सेटअप की काफी पॉपुलर हम देख रहे थे. एंड आई थिंक नाउ एग्जैक्टली आई नो द रीजन हाउ दे मैनेज टू गेट ऑलमोस्ट 9-3 in the first half, because VALORANT Esports had a double controller setup, Viper as well as the Brimstone, where both of the players, they completely changed the game. Viper एक bomb site or Brimstone एक bomb site. It was enough. It was more than enough for them to give adequate intel for their team and manage to control the bomb site as well. एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट द एग्जैक्ट एडवांटेज इज कि अगर आप एक कंट्रोलर छोड़ दोगे एक साइड पर, ही इज इनफ टू मैनेज एंड एंजॉय हिज गाला टाइम, जस्ट इन केस एनिमीज यहाँ पर नहीं आ रहे हैं. एंड इफ एट ऑल दे आर कमिंग, ही कैन डेफिनेटली स्टॉप देम फॉर अ लिटिल व्हाइल until and unless the teammates take the rotation and have a good time and get the round. वाइपर के अल्ट से भी हमने देखा एक राउंड जीता गया था, बट लेट्स ऑल्सो सी कि मैप वाइज पीवीपी कौन रहा. इट हैज टू बी बैड लव वर्सेस स्मोकिया. 28 kills and 22 kills for Smokia, 28 for Bad Love. एंड अगर हम डेथ्स की बात करते हैं तो बैड लव एक डेथ कम थे, असिस्ट एक ज्यादा थी स्मोकिया की. एक बेस्ट पार्ट ये था कि बैड लव हर एक राउंड में 2 पिक्स निकाल पा रहे थे, एंड स्मोकिया 1.5 पिक ऑन एन एवरेज. 2 राउंड के अंदर 3 पिक्स निकलती थी, और यहाँ पर 2 राउंड में 4 पिक्स निकलती थी. तो बैड लव का एक डेफिनेटली एडवांटेज था, एंड इट वॉज ग्रेट टू सी हिम एज रेज. लेट्स होप ही कंटिन्यूज टू डू सो, क्योंकि एक बैक फ्लैंक को ब्लॉक करना विद द जेट was good enough for sure, but as a race he managed to pull exact trigger that was required to shoot out the first match into their favor. It was just not bad love versus Smokia. It was more like race versus race, because दोनों भी players race खेल रहे थे and काफी बढ़िया execute दिखाया. I still remember that one round where they clashed into each other and both of this ult went successfully. सही गए थे और मुझे काफी अच्छा लगा था. वैसे ब्यूटीफुल ट्रेड मोमेंट्स काफी कम देखने को मिलते हैं वैलोरेंट में, स्पेशली जब आप एक ग्रैंड फिनाले देख रहे होते हो. यूजुअली हम अनरेटेड में देख लेते हैं ऐसे चीजें. Here we are to the MVP of the first map of Pine in the grand finale of Asus ROG Showdown series Valorant. And that is going to be Bad Love, if I'm not wrong. Yes, it is definitely going to be Bad Love with 28 kills, 14 deaths, 4 assists, and a point 0 KDR. I mean, that is a crazy, crazy fire rate, by the way. A perfect play, a perfect man, and a perfect duelist for the team Weird Esports. If not Jet, I would personally appreciate him as a Raze more, rather Jet more, क्योंकि as a Raze वो हर एक चीज कर पा रहे थे. And I also saw him using double combo together. Paint shells और bombot का एक साथ यूज किया जा रहा था, तो to avoid and not to neglect any probability कि यहाँ से मुझे अटैक आएगा, तो एक अच्छा स्ट्रैटेजिक प्ले भी था. एज अ ड्यूलिस्ट इट वाज नॉट के ब्लाइंड रश कर गए, फर्स्ट पिक निकाल लिया गया. ही वाज ऑलवेज वेटिंग फॉर द राइट टाइम एंड फॉर द राइट रोटेशन, क्योंकि हमने देखा है बैड लव को भी एक लॉन्गर रोटेशन लेकर, बैक स्टैब लेने की कोशिश लेकर, एंड पीछे से 1-2 किल्स भी निकालने में एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट लिया है. तो बैड लक, वेल, बैड लक हैज गॉट सम वेरी गुड लक टुडे. So you are having MVP title for the very first match for the map of mine, and Weird Esports एक पॉइंट की लीड में आ चुकी है. It's okay, it is just the first match for best of 5. Many more matches coming in the future, and यहाँ पर अब strategic change मैं expect करूंगी FS Esports की ओर से, at least making Smokia coming back to his basic side, the controller and not the duelist. Yes. Well, looks like that was the end for the first map. Unfortunately,
Weird Esports did have the victory against FS Esports in the map of Bind. Well, we are excited for the next map because next map हमको बताने वाला है कि परसेंटेज चेंज होगा कि वियर्ड स्पोर्ट्स से ही लीड पे रहने वाली है। तो इस चीज को जानने के लिए हम छोटे से ब्रेक लेके वापस आ जाएंगे। मी एंड तानिया आर गोना बी राइट बैक विथ यू गाइस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Got him. Let's go. Got him. Let's go.
गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक एंड ब्रेक के ड्यूरिंग जो आपने ऐड देखा वो एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग ऐड था। अगर आप गेमर हैं या अगर नहीं भी हैं तो आप ये डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड पिक अ बाय फॉर योरसेल्फ व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट हियर, बिकॉज वी आर हियर टुगेदर फॉर आरओजी शोडाउन सीरीज वैलोरेंट ग्रैंड फाइनल्स। एक मैच जा चुका है, बाइंड का मैप वीआरडी स्पोर्ट्स जीत चुकी है। अब एक स्ट्रगल और एक फोर्स के साथ एफएस स्पोर्ट्स को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तन्वी, हमने शुरुआत में बात की थी जब मैंने कहा था कि आई सेकंड एफएस स्पोर्ट्स द वे दे प्लेड यस्टरडे, लेकिन आज एक नई स्टोरी लिखी जा रही है। वियर्ड स्पोर्ट्स वर डोमिनेटिंग यस्टरडे, वंस अगेन वी डिड सी देम गोइंग अहेड विथ बैक टू बैक राउंड विंस, जहां पर इकोनॉमी क्रिएट करने का भी मौका नहीं दिया जा रहा था। यू थिंक एक मैच में इतना डोमिनेंट खेले हैं, कल भी खेले थे, और वो कंसिस्टेंसी बनी भी रहेगी या फिर एफएस स्पोर्ट्स अपने ट्रू कलर्स दिखाएगी? वेल, सबसे बढ़िया थिंग तो हमें ये अपडेट देना ऑडियंस को कि डेडली 10 इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय स्टॉर्म। सो अगर डेडली अपने रोस्टर से नीचे उतर रहा है तो वो भी एक अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ स्टॉर्म जैसे कि एग्रेसिव प्लेयर जिन्होंने हमको देखा है कलेस लेते हुए, तो आई थिंक रोस्टर और स्ट्रांग बढ़ेगा। बट आई गेस द मोमेंटम जो है वो अप एंड डाउन हो सकता है जब एक नया प्लेयर एडिशन हो जाता है और एक प्लेयर निकल जाता है, तो एवरीबडीज प्ले स्टाइल इज अ लिटिल डिफरेंट कंपेयर टू ईच अदर। सो पता नहीं वो एक एडवांटेज बनेगा उनकी टीम के लिए कि डिसएडवांटेज, बट आई एम डेफिनेटली एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड मैच। एंड एफएससी स्पोर्ट्स, they have to play to get it right now. This is the last opportunity they have to maintain a very strong consistency and momentum against weird esports. And I think and weird esports replacing deadly with storm, it's only going to make them stronger, which means fs esports might be in more trouble right now, Tanya. एब्सोल्युटली, अगर आप एक बेहतर प्लेयर को बेहतरीन प्लेयर के साथ रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा शो पुट अप करने की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। सो वंस अगेन वियर्ड स्पोर्ट्स एक अपना अपर हैंड दिखाने वाली है। अब F1 स्पोर्ट्स इसका फेस ऑफ कैसे करेगी, एफएस स्पोर्ट्स इसका फेस ऑफ कैसे करेगी, वो एक क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि पिछले राउंड भले स्कोर 9-13 था, बहुत ड्रैग कर कर 9 तक आए हुए थे, क्योंकि अटैकिंग साइड के अंदर दे वर नॉट इवन एबल टू गो अहेड विद द प्लान। तो जितने भी राउंड्स हुए पोस्ट प्लांट तक अल्ट यूज करने का कोई क्राइटेरिया था ही नहीं, जिसके चलते हमने देखा कि स्मोकिया को एक एंट्री के लिए ही शो स्टॉपर्स की यूजेज करनी पड़ गई थी। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, स्टॉर्म बीइंग केजे ऑफ फॉर द टीम, स्टॉर्म बीइंग साइफर फॉर द टीम। अब बैक स्टेप का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा, एंड ही कैन ऑल्सो गिव अ गुड कंट्रोल एंड एन एंटायर साइट रिक्वायर्ड। Yes. And the most interesting part is that Weird Esports have chosen the map of Ascent and they'll be beginning in the attacking side. And yesterday we know how exactly Weird Esports executed their gameplay in Ascent. It was their first match of semifinale and they completely outplayed their opponents. That was Nasha of Esports. I still remember the crazy backstab coming in from Storm and he was waiting for the rotation. They just shut the entire enemy team down in just 2 seconds. I'm looking for something similar, and maybe this time FSC Sports have a bright side to begin with as they're starting on the defender side in the map of Ascent. तो चलो like pray करते हैं कि FSC Sports might have a really good beginning in the defender side. Well, Storm यहाँ पे replace हो रहे हैं, तो मुझे काफी काफी exciting का feeling आ रहा है, because yesterday it was Storm who played instead of Deadly and they definitely outplayed. Let's have a look at the agent pick selection. I think हमारे जो weird sports है, they're gonna pretty much stick to yesterday's lineup. Sasmi going with Phoenix, Bad Luck Jet ले रहे हैं यहाँ पे, Storm will be picking up that Killjoy MF God with Omen and Rio with the Sova. And what do you think about the lineup coming in from FSE Sports, Tanya? फॉर एफएससी स्पोर्ट्स आई गॉट फिर से एक बार हमें एज अ जेट नजर आने वाले हैं। स्मोकिया इज चेंजिंग बैक टू द कंट्रोलर्स साइड फ्रॉम द सेंटिनल्स। फिर से एक बार एक ट्रायल एंड एरर का अप्रोच किया जा रहा है स्मोकिया की ओर से, मुझे ऐसा लगता है ही इज वेरी गुड सेंटिनल। आई रियली डोंट नो व्हाट इज मेकिंग हिम चेंज द रोल्स एंटायरली, लेट अलोन एजेंट्स। यहाँ पर इफ यू लुक एट कोहली एज अ सोआ इनिशिएटर हमें नजर आएंगे, हेडशॉट एक ड्यूलिस्ट की तरह नजर आएंगे, बीइंग द इनिशिएटर फॉर द टीम Choose your यस्टरडे। agent. तो चेंजेस
एजेस काफी ज्यादा हैं एंड वी आर आल्सो गोइंग टू गेट टू सी कैक्टस एज अ सेंटिनल हियर ऑन द वियर्ड स्पोर्ट्स साइड। आपने जैसे बताया कि हम एमएफ गॉड को कल भी ओमन की ओर से देख रहे थे, आज फिर से ओमन बनेंगे। सेसमी एज अ फीनिक्स ही रॉक्ड इट फॉर हिज टीम एंड आई थिंक दिस इज द परफेक्ट अप्रोच वियर्ड स्पोर्ट रख रहा है। बट कमिंग बैक टू द एंटायर एजेंट्स, यहाँ पर दो ड्यूलिस्ट ऑन द डिफेंसिव साइड नजर आने वाले हैं। एक इनिशिएटर भी है, एक कंट्रोलर भी है, एक सेंटिनल भी है। ऑन द अदर साइड वही सेम है, दो ड्यूलिस्ट, एक इनिशिएटर एंड यहाँ पर स्मोक्स के लिए एस्ट्रा है, यहाँ पर स्मोक्स के लिए ओमन है। तो वंस अगेन स्प्लिट अच्छी है, एजेंट्स का सिर्फ स्विच हुआ है। और यहाँ पर आई थिंक डिसाइडिंग चल रही है, प्लेयर्स आर जस्ट ट्राइंग टू डिसाइड कि कौन सी डायरेक्शन में जाएं। अभी भी स्पॉन पर बैठे हैं, टी स्पॉन पर, एंड आई थिंक इट हैज टू बी बी फर्स्ट। हमने देखा था बी साइड पर एंट्री कैसे ली जा रही थी, जहाँ पर स्पाइक प्लांट करने की भी नौबत नहीं आ रही थी। ऑल दे वर डूइंग इज जस्ट फिनिशिंग द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफेंडर्स एंड गेटिंग द राउंड इनटू द पॉकेट्स एज द डिफेंडर्स। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 3 एजेंट्स को रखा जा रहा है साइड ए पर, 2 एजेंट्स वेट करेंगे ऑन द साइड बी, देखेंगे कि क्या ये लाभ होगा या नहीं। कॉली यहाँ पर बी एंट्री पर रिकॉर्ड डालने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई थिंक ये इंटेल अच्छा खासा दे देगा, एक्सेप्ट अनटिल एंड अनलेस प्लेयर्स डिसाइड टू होल्ड देमसेल्व्स एंड नॉट रिवील। एंड एक अच्छा अलार्म बॉट का प्लेसमेंट इमीडिएटली एड, पैरानोया का एक शानदार यूज। उसके बावजूद यहाँ पर कैक्टस एक पिक ले लेंगे लेकिन ही विल बी टेकन डाउन अल्टीमेटली। बॉट की भी एंट्री हो चुकी है थ्रू द मार्केट साइड, इट इज अ क्लीन स्वीप एफएस Esports की ओर से। फर्स्ट राउंड गोइंग टू द फेवर्स फ्रॉम द डिफेंडर्स साइड। What happens next we are going to get to see and let's hope everything is going to be great as well। यहाँ पर अगर हम स्प्लिट की बात करते हैं तो हम जरूर देखेंगे कि एग्जैक्टली एस्ट्रा क्या करना चाहती है। स्मोकिया यहाँ पर स्टार्स सेटल कर चुके हैं फॉर द एग्जैक्ट नेबुला रिक्वायर्ड साइट एंट्री के लिए। अगर हम यहाँ पर आई गॉड को देखते हैं तो फिर से एक बार एक अच्छा गोल्डन प्लेयर अप्रोच है, नहीं बिल्कुल एक रश किया जा रहा है। इंडीड यहाँ पर एक गलती हो सकती है, डिफेंसिव साइड पर इतना ज्यादा एक्सपोजिव, इतना ज्यादा रिवीलिंग खेलकर कोई एडवांटेज नहीं होगा। स्मोकिया की एक अच्छी प्लेसमेंट एंड यहाँ पर टोटल एक्सप्रे में 2 प्लेयर्स को ले लिया एंड गोस्ट के यूजेस और एक को ले लिया। वॉल व्हाट इन द वर्ल्ड, स्मोकिया गोइंग फॉर एन एस with holding himself into the nebula and यहाँ पर एक स्प्रे से 2 को डाउन किया, 3 को डाउन किया, फिर गोस्ट से दूसरे 2 प्लेयर्स को रैंप पर ही एक अच्छा पॉज एंड प्ले एंड गेटिंग द राउंड्स इनटू द फेवर। लेडीज एंड जेंटलमैन, एफएस Esports के हाथ में ये सेकंड कॉन्सिक्यूटिव राउंड जा चुका है एंड इफ वी टॉक अबाउट बाइज, वेल यहाँ पर एरिस नजर आएगी, वैंडल नजर आएगी, स्पेक्टर भी नजर आने वाली है, तो एक मिक्स ऑफ ऑल राउंड होने वाला है। आई गॉड फिट से एक बार ए पर नजर आएंगे एंड लेट्स सी वो क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली। स्मोकिया ने एक बार ये स्ट्रैटेजी यूज कर ली है, आई एम अफ्रेड बार बार ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाली है। बैड लव यहाँ पर वेट कर रहे हैं थ्रू द डार्क कवर एंड 1v1 हो रहा है। बैड लव कैक्टस को टेक डाउन कर देंगे, इसका मतलब जितना भी सेटअप केजे का था वो सारा का सारा वेस्ट आउट हो चुका है। कि कोहली यहाँ पर एक एरिस का एडीएस निकालते हुए रिकॉर्ड का यूजेज टू गेट टू नो एग्जैक्टली कौन से एंगल से प्लेयर्स को चेंज करेंगे। रोटेशन अभी भी नहीं लिया गया, प्लेयर्स स्कैटर हो चुके हैं टोटली वियर्ड Esports के। अब देखेंगे वियर्ड Esports आर इन द लीड बाय 1 पॉइंट फॉर बेस्ट ऑफ 5 एंड हेडशॉट यहाँ पर एक रियो का नॉक जरूर निकालेंगे। सेसमी इमीडिएटली उन्हें ट्रेड आउट कर लेंगे। फ्लैश का एक अच्छा यूजेज आई गॉड को बैकफुट जाने से फोर्स कर दिया एंड देन कम्स द मॉली जिसे और ज्यादा डिले कर दिया गया है। डिफेंडर्स फिर से एक बार शेकी नजर आ रहे हैं, स्पाइक प्लांट हो चुका है। नाउ इट इज ऑल अप टू लास्ट मैन स्टैंडिंग। Well, that sucks definitely. Bad love का एक एस जा चुका है, 4 पिक्स निकाल लिए गए हैं एंड वियर्ड Esports के हाथ में ये एक फर्स्ट राउंड आने वाला है। आई गॉड हमें ऑपरेटर के साथ दिखेंगे एंड ऑन द अदर साइड वियर्ड Esports के हर एक प्लेयर यार के साथ हमें नजर आने वाले हैं। दैट राउंड वाज वर्थ द विक्ट्री। हाईएस्ट ट्रैगर अभी भी बैड लव रहने वाले हैं एज अ जेट। हमने उन्हें एज अ रेज हाईएस्ट ट्रैगर करते हुए देखा है, जेट की ओर से भी देखा है। दैट मीन्स टू एनी ड्यूलिस्ट रोल
बैड लव इज सफिशिएंट इनफ फॉर हिज टीम बीइंग द हाईएस्ट फ्रैगर। आई गॉड के पास एक मिड की अच्छी पोजीशनिंग आ चुकी है, ही विल नॉट अलाउ द मिड रोटेशन, लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जाएगा एंड पिक भी लिया जाएगा। आई गॉड एक अच्छा पिक निकालेंगे बिकॉज टेकिंग डाउन बैड लव इज इक्वल टू गेटिंग अ स्टेप क्लोजर टू विनिंग द राउंड और एक अटेम्प्ट, लेकिन ज्यादा देर तक सेम स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। रियो ने टेक डाउन कर देंगे, टर्निंग इट टू अ 4v4 अफेयर। कैक्टस यहाँ पर ऑफ यूज करते हुए नजर आएंगे, एक पिक निकाला फिर खुद ट्रेड आउट हो जाएंगे। नेबुला का यूज किया गया है स्मोकिया की ओर से एंड यहाँ पर एक स्वॉर्म ग्रेनेड की यूजेज गोली आ चुके हैं अंदर, एक पिक और निकाल लेंगे। साइट एंट्री अलाउ बिल्कुल नहीं हो रही, फ्लैश का यूजेज साथ जा चुके हैं एंड फ्लैश बिल्कुल सही वे से चला है। 1 वर्सेस 2 सिचुएशन अभी भी होने वाला है, लेकिन स्मोकिया यहाँ आ चुके हैं। ब्लेज वॉल का यूज किया गया है एंड ही डजंट हैव स्पाइक एज ऑफ नाउ। नाउ एग्जैक्ट पोजीशन वाज रिवील्ड, वॉल बैंक के चलते स्मोकिया ने उन्हें टेक डाउन कर दिया है। विद दैट दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड राउंड गोइंग इनटू द हैंड्स ऑफ एफएस Esports। एग्जैक्टली एटलीस्ट वैसा नहीं चल रहा जैसा हमने बाइंड में देखा था। एफएस Esports एज द डिफेंडर्स दे डिड वेरी गुड इन बाइंड, एज अ अटैकर उन्होंने वो नहीं किया था, दैट वाज बेसिकली रिक्वायर्ड। लेट्स सी ऑन द साइड ऑफ ए एंड बी स्कैटर्ड प्ले नजर आएगा, 2:1:1 मिड पर फिर से एक बार हमें नजर आएंगे। आई गॉड देखेंगे क्या उनके पास स्नाइपर होने वाली है, क्या उनके पास ऑपरेटर होने वाली है, जिसके चलते एक अर्ली पिक लिया जा सके। दिस टाइम रिस्क नहीं लिया जा रहा स्कैटर्ड प्ले का, एक को कमिट कर दिया गया ऑलरेडी एंड यहाँ पर ऑफ का यूजेज करते हुए आई गॉड जरूर नजर आएंगे। यहाँ पर एक ब्लाइंड का यूजेज एंड रन इट बैक का यूज कर लिया गया है। एक अल्ट का एक अच्छा यूज हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद फ्लैश ने ज्यादा देर तक काम नहीं किया एक्सेप्ट फॉर वन स्लो ऑर्ब इज यूज्ड एंड वेस्टेड आउट एंड यहाँ पर सब कोई प्लेयर्स कंकस्ट नजर आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए। व्हाट कम्स नेक्स्ट दैट विल डेफिनेटली शो। एक अच्छा एस्ट्रा स्मोक, एक प्लेसमेंट जो था स्टार का काफी अच्छा था, जिसके चलते कंकस्ट कर दिया गया, प्लेयर्स को बैकफुट जाने पर मजबूर कर दिया है। काफी सही बोला है तानी जी आपने। यहाँ एफएस स्पोर्ट्स काफी अच्छा एडवांटेज पर बैठी हुई है। ऑन द अदर हैंड सेंटिनल बीइंग यूज्ड एट इट्स बेस्ट इन बैड लव, काफी सारे शॉट्स मिस कर रहे हैं यहाँ ऑपरेटर के साथ। ही इज डाउन टू 1 HP, नो हीलर फ्रॉम हिज टीम। यहाँ पे ऑप सेव करना एक बहुत ही बड़ा टास्क होने वाला है एंड कैक्टस इज ट्राइंग टू गो ओवर टुवर्ड्स द सेकंड लेन। ही गेट्स वन, ही गेट्स ट्रेडेड। Sasmi immediately going in for the pick. He's trying to go out in the open and headshot. जिन्होंने पिछले मैच इनिशिएटर खेला था यहाँ तो बहुत ही अच्छे से तोड़ रहे हैं। 1v1 सिचुएशन बैड लव के साथ बस एक HP बचा है एंड इट इज गोइंग टू बी नॉट ओनली पॉसिबल बट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू क्लच दिस राउंड अगेंस्ट स्मोकिया। One little peek can get the job done and there you go, Smokia will get that kill on towards bad love and ऐसे ही हमारी एफएस Esports चौथा राउंड पे पहुंच गई है। एक अच्छा शुरुआत हम कह सकते हैं एंड स्मोकिया 9 किल्स के साथ नजर आएंगे। एक अच्छा एस्ट्रा प्ले देखने के लिए मिल रहा है। द वे ही इज पुटिंग 2 स्टार्स एट द एग्जैक्ट सेम पोजीशन, एक नेबुला की तरह यूज किया जा रहा है और एक पल्स की तरह यूज किया जा रहा है, जिसके चलते साइट ए में एंट्री नहीं मिल रही है। ऑन द अदर हैंड VALORANT Esports थोड़ा सा कंफ्यूजिव बिहेवियर भी दिखा रहा है। दे आर टेकिंग रोटेशंस आफ्टर कमिटिंग टू अ साइट व्हिच इज एग्जैक्टली एब्सोल्युटली फॉर द मैप ऑफ SN। आई गॉट सर्टेनली इज टेकिंग फर्स्ट पिक एंड देन द अदर, उसको कवर देने के लिए डार्क कवर यूज किया गया है टू अवॉइड एनी फर्दर पीक्स कमिंग इन एंड रोटेशन में इजियर अफेयर क्रिएट हो जाए। एंड आई गॉड ने क्या ही धमाल मचा दिया, उन्होंने 2 किल्स ले लिया ऑपरेटर के साथ। काफी एग्रेसिव पीक था एंड ही इज आल्सो लुकिंग फॉर द थर्ड वन बट अनफॉर्चुनेटली इट्स गोइंग टू बी रियो जो क्लोज एंगल पे बैठा है। आई गॉड को टेक डाउन कर देंगे। स्मोक ऑन द अदर हैंड डबल किल, इज लुकिंग फॉर द ट्रिपल वन। ही नोज वेयर स्टॉर्म वाज स्टैंडिंग बट स्टॉर्म के हाथ में था शेरिफ एंड वो अभी बीमन की तरह जा रहे हैं एंड उनका HP बहुत कम है एंड गोली हाथ पे ओडिन लेके बैठे हुए थे। काफी स्मूथ किल था वहाँ पे, काफी स्मूथ राउंड था आई गॉड के हाथ से। बाय द वे 5-1 इज द स्कोर, 4 पॉइंट लीड फ्रॉम एफएस Esports एंड तानिया जैसे कि आपने बोला कि एफएस Esports शायद एक कमबैक करेंगे एंड डेफिनेटली लुक्स लाइक दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कमिंग बैक। बट एक और चीज, अगर VALORANT Esports 4 या 5 राउंड निकाल लेती है अटैकर्स पे तो उनको डिफेंडर्स पे जाके डिफेंड करना काफी आसान हो जाएगा। एफएस Esports हैव टू गेट द मोस्ट ऑफ द राउंड्स
they can in the defending side itself. एब्सोल्युटली यहाँ पर एक डिफेंडर साइड पर अच्छा लीड ले लिया तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड एडवांटेज। ड्रोन का यूज किया गया था कोहली की ओर से एंड आई गॉट फिर से एक बार पीक लेकर रेडी है, क्रॉस सेट करके बैठे हैं। एक अच्छा पिक स्मोकिया निकाल सकते हैं एंड यहाँ पर नोवा पल्स का यूज करके डीलेड एंट्री कर दी गई है। डिड यू जस्ट नोटिस वन थिंग, एक ओपोनेंट के स्मोक के अंदर अपना नोवा पल्स सेटल करना जो और एंट्री ब्लॉक करना एक अच्छा प्ले स्मोकिया की ओर से एज अ एस्ट्रा एज अ कंट्रोलर देखने के लिए मिल रहा है। हेडशॉट यहाँ पर एक पिक लेंगे एंड डिसमिस करके बैक हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन नॉट फॉर सो लॉन्ग। बैड लव अंडर हेवन अपनी प्लेसमेंट सेट कर चुके हैं एंड यहाँ पर एक स्पाइक प्लांट करने की अपॉर्चुनिटी जरूर थी, स्पाइक पिक करने के लिए भी जा चुके हैं। अच्छा लॉकडाउन का यूजेज टू गेट द एंट्री साइड टू गेट एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी टू प्लांट द स्पाइक एंड यहाँ पर एक इजियर अप्रोच हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक बैकफुट भेजने की जो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी वो एटलीस्ट पॉजिटिव वाइब दे रही है। एंड यहाँ पे एक प्लेयर डिटेन हो चुके हैं, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है कि FSI God has gone for a backstab and he's gonna be getting a beautiful kill on towards Sasmi. इनके पास ब्लेड्स आउट भी है, ये अपने ब्लेड्स आउट के साथ काफी अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। थ्रू द वॉल भी उन्होंने स्टॉर्म को किल ले चुके हैं एंड FSC Sports once again making this retake happen. What a beautiful play coming in from FSC Sports, especially I God. उन्होंने कितना जल्दी प्लान से आ चुके थे एंड Assassin he totally didn't expect कि थ्रू वॉल उनको शॉट लगने वाला था and FSC Sports is going just crazy. I don't think, I think replacing Deadly थोड़ा असर दिखा रहा है, मोमेंटम कैरी नहीं हुआ है VOD Sports का, बट Storm is still on top of the leaderboard with 5 kills. Storm is definitely on number 1 for the leaderboard, लेकिन टीम सपोर्ट की भी रिक्वायरमेंट ज़रूर रहेगी। देखेंगे वो टीम सपोर्ट कब तक मिलेगा। अभी के लिए आई गॉड फिर से एक बार मिड पर नजर आएंगे एंड ही हैज़ ऑपरेटर डार्क कवर का यूजेज कर दिया। हमने यहाँ पर एक एस लेते हुए देखा था, क्या फिर से एक बार एक एस देखने के लिए मिलेगा? एंड वेरी श्योर ऑफ नॉट विद द ऑफ फॉर श्योर एंड ड्रोन को डैमेज कर दिया है। इमीडिएट डैश का यूज करके एंट्री लेने की कोशिश की और यहाँ पर बैड लव आई गॉड को पिक कर लेंगे। हेडशॉट इमीडिएटली बैड लव को ट्रेड कर देंगे एंड यहाँ पर नेबुला का एक अच्छा यूजेज, फ्लैश ज्यादा देर तक काम नहीं कर रहा। हेडशॉट इज बीइंग द परफेक्ट ड्यूलिस्ट रिक्वायर्ड फॉर हिज टीम। यहाँ पर 4-2 कर दिया गया है, टर्निंग इट टू अ 1v4 अफेयर एंड स्पाइक इज डाउन जस्ट इन द मिड। अब यहाँ से MF गॉड के लिए डिफिकल्टीज काफी बढ़ चुकी हैं। आई थिंक इट इज इम्पॉसिबल एंड नेग्लिजिबल टू गेट दिस राउंड। Yes, but looks like Sheriffs too coming to advantage sometimes, and this time not for MF God, unfortunately, not for him. Well, Cactus का HP काफी कम था, 49 HP था, फिर भी पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज कर लिया MF God के ऊपर किल लेते हुए। And here we are. Let's have a look at the scoreboard. Let's have who is sitting down at the top. That is Mokia, जो खुद controller खेलते हुए 14 kills पे बैठे हुए थे. It was only one time we saw Mokia playing duelist, and that was in the last match जहाँ पे वो हार गए थे. So he decided that he's better he's better off as good with controller, and वो Astra निकाल चुके हैं, and nobody has hit the double digit except for Mokia so far. So that explains कि आधा काम स्मोकिया ने आसान कर लिया FSC Sports के लिए। FSC स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी आसानी हो चुकी है और मुसीबतें VOD स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। द मैप ऑफ एसेंट अगर आप एक एटलीस्ट ठीक है 6-6 नहीं हो रहा, 4-8 इज एटलीस्ट एक्सपेक्टेड कमिंग इन। अगर वो नहीं होता है तो एक मिल जाएगी FSC स्पोर्ट्स को, टर्निंग द पॉइंट टेबल टू 1-1। यहाँ पर सैसमी फर्स्ट पिक निकाल लेंगे। आई गॉड हैज बीन टेकन डाउन 4 वर्सेस 4। साइड A पर कमिट करने की कोशिश की जा रही है और यहाँ पर हेडशॉट एम्प्रेस के साथ रेडी हो चुके हैं। बैड लव एक प्रोसेस सेट करके बैठे हुए टू डिसअलाउ एंड ये चलेगा नहीं। कैक्टस हैड सम डिफरेंट प्लान्स कमिंग इन, टर्निंग इट टू अ 2 वर्सेस 4। फिर से एक बार राउंड ऑलमोस्ट जा चुका है एंड यहाँ पर कमिटमेंट भी चेंज हो रहे हैं। दे आर गोइंग फॉर द साइड बी, बट ओवर देयर वी कैन क्लियरली सी कोहली इज वेटिंग एंड यहाँ पर वार्म वेलकम तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। एक हीटेड अप लेड शावर वाला वेलकम हम देख सकते हैं। Yes, काफी warm welcome है, but VOD Sports are still in the advantage.
डाउन टू अ 2v3 सिचुएशन एंड स्टॉर्म काफी लो एचपी पे बैठे हुए, 2 एचपी है उनके हाथ में. So nanosum grenade, they're going to be placing it over towards the CT, and Sasmi is going to be the one playing in the up front right now. He breaks down the wall into the there you go, but it's not going to give much of an intel for him, and on top of that he's down to 67 HP. स्पाइक प्लांट हो चुका है, उनके पास एक ही फ्लैश है, कोई भी एबिलिटीज नहीं है उनके साथ अभी फिलहाल यूज करने के लिए. ही इज रेडी विद द फ्लैश, ही इज ट्राइंग टू पीक आउट, फर्स्ट लेन को पीक आउट कर रहे हैं एंड स्मोकिया इज गोइंग टू इमीडिएटली टेक हिम डाउन. There comes in some grenades and there comes that shot, gets one kill, and that is the end for VOD Esports again. तानिया, फिर से हमने काफी बढ़िया रीटेक देखा है एफएससी स्पोर्ट्स के साथ. पूरा वन साइडेड शटडाउन दे रहा है एफएससी स्पोर्ट्स. और ये एक सक्सेसफुल शटडाउन होते हुए 8 पॉइंट्स आ चुके हैं, 8 राउंड्स आ चुके हैं एफएससी स्पोर्ट्स के पास. एंड स्मोकिया की ओर से एक अच्छा एस्ट्रल फॉर्म का यूजेज भी हमें देखने के लिए मिला है. इवन दे वर अवेयर अबाउट इट कि हम मैन टू मैन एडवांटेज में है, उसके बावजूद दे डोंट वांट टू गिव अ सिंगल चांस हियर. एंड फिर से एक स्प्लिट स्ट्रैटेजी नजर आएगी. साइड ए पर 2 प्लेयर्स, मिड पर 1 प्लेयर नजर आएगा. एंड वी कैन क्लियरली सी दैट वन मोर प्लेयर विल गो अहेड एंड कंट्रोल द साइड बी. टाइम आउट लिया गया है फ्रॉम कोहली साइड. लेट्स सी कोहली की क्या प्लान्स हैं. एंड दिस टाइम आउट वाज आल्सो रिक्वायर्ड हियर, दो कोहली डिड गिव अ गुड चांस, अच्छा डीले भी करवाया. एंड ही डिड अटेम्प्ट के 1v2 क्लच ले लिया जाए, बट सासमी आल्सो हैड हिज ओन प्लान्स जहां पर उन्होंने ब्लेज का सही वक्त पे यूज लिया, साइड एंट्री भी ले ली. तो समवेयर आई डोंट नो इफ VOD esports are going to show a comeback or no, but Smokia is dominating, that is for sure. And I got की ओर से बहुत अच्छा टीम सपोर्ट भी देखने के लिए मिल रहा है. जरूर. बस यही नहीं तानिया, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ आती है जबकि अभी तक कोई भी डबल डिजिट पे रीच नहीं हुआ है. स्मोकिया इज द ओनली पर्सन विद 15 kills and 3 deaths, and he continues to be the killer over here. एंड जब बात आती है VOD स्पोर्ट्स की, दे आर वे टू क्लोज टू बी लूजिंग दिस मैप नाउ. 8-1 है स्कोर. ऑल दे नीड इज जस्ट 3 more राउंड्स तानिया की पहला हाफ वो एक ब्राइट साइड में एंड करे. 8-4 इज ऑल्सो अ गुड नोट टू बिगिन विथ. बट देखते हैं एफएससी स्पोर्ट्स अगर ये मैप ले जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी decide this map for sure. मैं तो expect कर रही हूँ यार decide this map. It's the grand finale. Of course, we need the performance at its best from all of the teams. एब्सोल्युटली इट इज गोइंग टू बी. एंड आई थिंक जो अब रेमन को रिमूव कर दिया है एफएससी स्पोर्ट्स से और उनके रिप्लेसमेंट में कैक्टस को लाया गया है, कैक्टस एक इमीडिएट पिक्स निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी रह रहे हैं. तो समवेयर स्वॉपिंग द टीम इज गिविंग द एडवांटेज, एंड दिस वाज मच रिक्वायर्ड एडवांटेज फॉर एफएससी स्पोर्ट्स. क्योंकि एज अ सेंटिनल रेमन ने डेफिनेटली हमने देखा रेजरेक्शन का यूज़ किया, बट स्टिल राउंड अटैकिंग साइड में निकालने में बार बार इम्पॉसिबल सिचुएशन क्रिएट हो रही थी. बट कमिंग बैक टू VOD स्पोर्ट्स, वेल VOD स्पोर्ट्स एक हम कह सकते हैं जो स्वॉप लिया गया, स्टॉर्म को लाया गया, रिमूव कर दिया गया गॉड को. आई थिंक दैट इज नॉट व्हाट एग्जैक्टली VOD स्पोर्ट्स वुड हैव वांटेड राइट नाउ. एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन दैट वे, क्योंकि VOD स्पोर्ट्स अगर इस तरीके से राउंड पर राउंड लॉस कर देगा तो डिफेंडर्स साइड में मौके काफ़ी कम मिलेंगे. ऑन द मैप ऑफ एसेंट वी वेरी वेल नो कि एक डिफेंडर्स का मैप है, डिफेंडर्स पे आप लीड ले सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मौके कम मिलेंगे तो वो लीड लेने के मौके चांसेस बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे. फॉर नाउ VOD स्पोर्ट्स इज रेडी विथ 3 अल्टीमेट्स रेडी. हम लॉकडाउन की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, हम हंटर्स फ्यूरी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. हंटर्स फ्यूरी इज बेटर एट पोस्ट प्लांट, तो अगर साइट एंट्री मिल जाती है बाय द लॉकडाउन, ये एक अच्छा कॉम्बो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. या इंटरेस्टिंगली कॉम्बोज जो है वो तो सही काम कर रहे हैं एफएससी स्पोर्ट्स के लिए, बट देखते हैं कितना दूर VOD स्पोर्ट्स के लिए काम करने वाले हैं. बट फिलहाल के लिए उनका इकोनॉमी तो सही दिख नहीं रहा है, एंड आई थिंक बैड लव के पास एक और चाहिए वो अल्ट निकालने के लिए, वो ब्लेड्स आउट करने के लिए. सो ही विल बी लुकिंग आउट टू गेट एन ऑब. I think they should start executing B more actively, like an entire full B push. या मिड कंट्रोल लेना काफी जरूरत है, बिकॉज मिड और मार्केट का कंट्रोल मिल गया तो आधा काम वही हो जाता है खत्म. तो I just want them to go for passive approach and get kills.
अगर वो पिक्स पे खेलेंगे तो काफी उनको एडवांटेज रह पाएगा, बिकॉज एफएससी स्पोर्ट्स आर एट देयर बेस्ट एम राइट नाउ, and especially they should target VOD sports should target on picking off Smokia at the first place. Not only Smokia is a controller, but also standing at the top of the leaderboard right now with only 3 deaths. एब्सोल्युटली। और सैसमी की ओर से मैं कमी देख रही हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, क्योंकि कल हमने सैसमी को एज अ फीनिक्स हाईएस्ट फ्रैगिंग पोटेंशियल देख चुके हैं। वी वेरी वेल नो हाउ सैसमी कैन गो अहेड विथ, एंड आज वो कंटिन्यूटी नज़र नहीं आ रही है। तो आई हैव अ फीलिंग अगर सैसमी लेवल अप कर पाएंगे तो थोड़े से राउंड्स अभी भी अटैकिंग साइड में उनके फेवर में जा सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या फिर नहीं वो देखेंगे। बट बैड लव, सिर्फ चोटी के साथ खेलेंगे, देखेंगे हम कि वो कितना फेवरफुल रहेगा। एंड नाउ जस्ट विद इन 3-2 एंड ऑन द काउंट ऑफ 0 हमारा राउंड शुरू हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी द 10th राउंड। 8 राउंड्स इनटू द फेवर ऑफ एफएस Esports एंड 1 इनटू द फेवर ऑफ वियर्ड Esports। ड्रोन डाला गया ऑन द साइड ए टू गेट द रिक्वायर्ड इंटेल, एंड ये साइड ए एम्प्टी मिल रहा है। लॉकडाउन का यूसेज ऑलरेडी हो चुका है एंड ब्लेड स्टॉर्म भी एक्टिवेट कर ली गई है। एक अच्छा पुश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड पोस्ट प्लांट के लिए अंडर फ्यूरी भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जरूर, फिलहाल के लिए तो लॉकडाउन काफी स्ट्रॉन्ग हिट करने वाली है डिफेंडर्स पे। एमएफ गॉड गेट्स वन, एमएफ गॉड डबल किल लेते हुए सैस में आ चुके हैं मैदान के, एंड ही इज ट्राइंग टू गेट अ किल, प्लानिंग किल ओवर टुवर्ड्स द हेवन, जो ऑलरेडी सैस पे ले चुके हैं बाय द वे। That is Smokia going down, and this time FSC Sports is just left with one player with an Odin in his hand. That is Mr. Kohli, and Kohli का सिर दिख चुका है. The spray will come through from Sasmi with a triple kill. He will get the round for VOD Sports. Second round for VOD Sports through the hands of Sasmi. काफी बढ़िया खेला था उन्होंने वो round. And I asked and Sasmi delivered. I really don't know how did this telepathy worked, but I am very sure of if Sasmi is functioning on point the way he did yesterday as Phoenix, I am very sure of attacking side पे बाकी के 2 rounds भी जा सकते हैं in the favor of Weird Esports, and 8-4 से comeback story लिखना from the defenders side is still probable, unlike 10-2 की story पर कोहली ड्रोन भेजेंगे। इंटेल नहीं मिला अभी तक, स्टार्स की प्लेसमेंट काफ़ी सही है, लेट्स सी यूटिलाइज कब किया जाएगा। कैक्टस यहाँ पर ड्रोन डैमेज कर देंगे, लेकिन पोजीशन रिवील हो चुकी है। इट वाज सोआ वर्सेस सोआ एंड कोहली वर्सेस सोआ। यहाँ पर शॉक डार्ट पर शॉक डार्ट एक्सचेंज किए जा रहे हैं। एक अच्छा नेबुला का यूजेज जिसके चलते बी पर इमीडिएट पुश नहीं आ रहा है, एंड कैक्टस इज एंटिसिपेटिंग समवन देयर, बट स्टॉर्म इज ऑलरेडी रेडी टू अवॉइड एनी एंट्री कमिंग इन। इमीडिएट यूज कर लिया गया है स्वॉर्म ग्रेनेड का टू नॉट बी टेकन आउट। या वेल, अभी तक तो किसी पे फर्स्ट पिक हुआ नहीं। 55 seconds left on the clock, and Headshot is holding over towards the A bomb side. रैना काफी इंटरेस्टिंग पिक है, एंड अगर आप नोटिस कर रहे हो तो 2 भी डुएलिस्ट यहाँ A bomb साइड पे खेल रहे हैं, so things are going to be very tricky over here. Sasmi is trying to be as sneaky as he could be, and I got the position reveal ho chuka है. He's going to be going into the collateral. Headshot, it's a triple, but it's one through the smoke. Sasmi 1 kill लेते हुए 2 kill लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं. It's a 2v2 situation right now. उनके पास बस 70 HP बचा है, and Smokia is trying to walk through the wall. The Molotov goes down in the heaven. स्पाइक बॉम्ब प्लांट हो रही है, एंड यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली स्टॉर्म स्पॉट हो गए हैं. Smokia will get one, Sasmi will get one, but little do they know that it's going to be Kohli coming in from the backstab, who will take Sasmi down. And unfortunately, FSC Sports will get 9th round, and Weird Esports will be starting with a very hard note in the first half of Ascent. एंड कल तो तानिया, कल तो हमने काफी डिफरेंट गेम खेल रहा था, देख रहे थे जब वियर्ड स्पोर्ट्स एसेंट पे खेल रही थी, बट आज पता नहीं इनको पूरे सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज चेंज हो चुके हैं, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी इवन मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक अ कमबैक इन द डिफेंडर्स साइड. इवन इफ द स्विच डाउन टू डिफेंडर्स, उनको काफी एफर्ट्स डालना पड़ेगा.
एफर्ट्स 200% डालकर भी आई थिंक अब ये कमबैक स्टोरी लिखना डिफिकल्ट होते जा रहा है। बाइंड में जो सिचुएशन एफएस स्पोर्ट्स की थी, एसेंट पे यहाँ पर सेम सिचुएशन वियर्ड स्पोर्ट्स की हो चुकी है। बैटलर फिर से एक बार मिड पर नजर आएंगे एंड एक रिकॉन आ चुका है। कुछ इंटेल मिला नहीं है, बैटलर की प्लेसमेंट पता नहीं चली है। डार्क कवर आ चुका है थ्रू द मिड मार्केट। गॉड ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं, पैरानोया का एक अच्छा यूजेज यहाँ पर बैटलर की एक मिस्टेक एंड यस बीन टेकन डाउन फॉलोड बाय द अदर। एक अच्छी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं वियर्ड स्पोर्ट्स एंड यहाँ पर अल्ट से कहाँ जाना चाहेंगे, वेल इमीडिएटली टुवर्ड्स द साइड स्पाइक प्लांट भी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा अल्टीमेट का यूजेज हमें एमएफ वॉर्ड की ओर से नजर आया है एंड पोस्ट प्लांट खेलना इज गोइंग टू बी अ इजियर अफेयर क्योंकि अभी भी हंटर्स फ्यूरी रेडी है। इट इज गोइंग टू बी 5 versus 3 and maybe third round going to the favor of VOD Sports. Well, looks like the flash will come through. Sasmi is gonna build up a wall. Sasmi का जो भी ability usage है, outstanding ability usage. He's using his walls, his flashes, everything, but it's just not working for him. Corey will get that kill onto its MF cord. He's trying to push down from the shot. In turn, he will get the second kill onto its Kohli. And VOD Sports successfully managed to get the last round in the first half. Well, the hard work has to be still kept continuing even in the second half because they just have 3 rounds in the first half. They have to get, I think, around 6 rounds back to back if they want to make it up against FSC Sports, or maybe put a strong fight against them. This is the opportunity they have to win the second half again from FSC Sports, and FSC Sports lineup looks way too one-sided for an attacker's lineup. एंड एंड आई डोंट नो, ये जीता हुआ राउंड मिस कर गए आई थिंक। थोड़ा सा अग्रेसिव प्ले की ओर चले गए आई गॉड एंड इफ यू वुड हैव शोन अ लिटिल बिट ऑफ पेशेंस द रिजल्ट वुड हैव बीन अ डिफरेंट मे बी द राउंड गोइंग टू द फेवर ऑफ एफएससी स्पोर्ट्स बट स्टिल दे आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज द लास्ट राउंड ऑन द अटैकर्स साइड हियर। ये राउंड किसके फेवर में जाएगा वो हम जरूर देखेंगे फॉर एफएसई स्पोर्ट्स। और यहाँ पर आई गॉड फिर से एक बार एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। स्पॉट का ये जा चुके हैं एंड यहाँ पर शॉक डार्ट का अच्छा खासा यूज भी देखने को मिला है। पैरानोया का यूज भी किया जा चुका है। साइट एंट्री ऑलमोस्ट मिल चुकी है। नहीं, नेबुला गेट सब कुछ बंद, एक पर पूरी तरीके से कमिट कर चुके हैं एंड आई एम अफ्रेड यहाँ पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलने वाली है। Yes, it's a pistol round, काफी important round है, तो ये काफी केयरफुली खेलने वाले MF Cord. He knows that it's going to be an A-shot push. He literally did give away the call out. He does not get spotted out by the recon, but it's going to be Kohli who will get that kill against him. And Headshot will be also taking the heal away. Storm यहाँ पे fight लेने वाले हैं, but unfortunately iGod will take him down as well. A side का पूरा control मिल चुका है FSC Sports के पास. They look very stronger and even more bolder at the first half right now. Like in the attacking side, they look even more strong. Look at Cactus hitting such naughty shots against Weird Esports. Just the last 2 players left, and they're trying their level best, which barely seems possible for me at this point. And if Sesame is able to clutch it out, it is going to be a dream come true. और यहाँ पर रिकॉर्ड डाला गया है, प्लेसमेंट आ चुकी है और आई गॉड इससे ज्यादा डीले नहीं करना चाहते हैं। मेकिंग इट टू द फर्स्ट विक्ट्री ऑन द अटैकर साइड एंड द स्कोर ऑफ 10 and 3, 2 steps away for the match point. And as the defenders, they did wonders. Exactly, बाइंड वाला स्कोर ही चला 9-3 का एंड यहाँ पर 10th राउंड इमीडिएटली आ चुका है एफएससी स्पोर्ट्स के हाथ में। ए साइड पर फिर से एक बार कमिट करने की कोशिश की जा रही है। हम जरूर देखेंगे क्या इस बार इजियर अफेयर रहेगा या फिर नहीं। कोहली यहाँ पर, डिड आई जस्ट नोटिस बुलडॉग कमिंग इन? यप अगेन वी कैन सी 2 bulldogs coming in for Smokia and as well as I got in 3 specters to work out with. एक aggressive push यहाँ पर हम anticipate कर सकते हैं। एग्रेसिव पुश जरूर, जैसे कि आपने बोला एफएससी स्पोर्ट्स ने ऑलरेडी एक पिक निकाल चुके हैं ए मेन पे. नाउ दे हैव बुलडॉग्स एंड स्पेक्टर्स इन द हैंड्स, which seems like it's going to be an easy fact for them. iGod is going to put down the smoke, is going to be dashing into the bomb site. There's Bad Love still waiting on the bomb site. MF God gets lucky, gets a kill. Headshot immediately switches to the Spectre. The wall has to be broken over towards the A-shot, and it definitely does get broken. Bad Love is down to a low HP. Headshot doesn't know that there's a person standing very close, and there comes Killjoy. I think Killjoy is trying to place over a turret or something. Yep.
and she's down to very low HP as the turret comes down and it goes down in a second as well. I got position has been revealed away. Another recon, another shock dart, which is gonna do a lot of damage. Takes Storm down. Headshot immediately taking MF got down. It's all in the hands of bad love. But now I think he's the last resort. We are expecting Rio in a 1v2 situation. He gets 7 bullets in his hand. Can he get it? No, he won't. Kohli will end things. And that is FSC Sports taking away 11th round in their hand. And looks like things are looking impossible for VOD Sports right now. Very close, one step away for the match point, and once again a push coming in. Now this time the sides are changed. They don't want to go ahead towards the side A. They have done enough from the attacker's side. They're immediately going ahead for the side B. Look at the stackier approach coming in, and side B पर दो players को हम spot कर पा रहे हैं. On the defender's side we can see Storm lead कर रहे हैं. उन्हीं के साथ support देते हुए Rio भी होने वाले हैं. तो immediate recon यहाँ पर use होगा and change of plans. Not rushing A, going for the mid पर यहाँ पर एक प्लेयर वेट जरूर कर रहा था, लेकिन उन्हें बैकफुट जाने पर मजबूर कर दिया बिकॉज 3 प्लेयर्स एक साथ मिड पुश कर रहे थे. एंड आई थिंक स्टॉर्म हैज रियलाइज कि मिड मार्केट पुश है. अलार्म बॉट हैज बीन ट्रिगर्ड. एक राइट टाइम पे नानो स्टॉर्म का यूज किया गया है. ड्रोन विल बी वेस्टेड आउट इमीडिएटली एंड फर्स्ट पिक हैज बीन टेकन डाउन बाय रियो. मच नीडेड वन. Yes. Well, looks like Rio is getting the most of the important picks over here. And Storm just being as aggressive as he could be. Cactus gets 1. That's Sasmi going down. It's a 3v4 situation. Defenders still have the upper hand advantage. They still have the man advantage, but not anymore as Cactus takes MF got down and he has control over towards the heaven. And bad luck. He picks down at the wrong time. The panic spray doesn't really help him. In turn, he gets taken down. A 4v3 to a 3v2 situation. Not a good beginning for VOD Sports. The bomb is getting planted down, but the Odin spray is also gonna put down a lot of different efforts. Storm gets curly. Smoke immediately trading him off. A 1v2. An Odin coming into the play. A shots in the hands of Rio. Do you think this 1v2 retake is gonna be possible for him? I don't think Rio will be able to take this round any closer because अगर आप इतना continuously हारते जाते हो तो कॉन्फिडेंस की भी कमी नजर आ सकती है. 1v2 है, क्लच निकालना इम्पॉसिबल नहीं है. अलार्म बॉट को वेस्ट आउट कर दिया गया है, टैरेट को भी वेस्ट आउट कर दिया गया है. अंडर हेवन एक प्लेयर है, जेनी के पास एक प्लेयर है. देखेंगे किस तरीके से कंफर्मेशन आएगा और रिवील यूज किया गया. दिस रिवील इज नॉट गोइंग टू वर्क बट ही इज एबल टू टेक डाउन कैक्टस. इज इट गोइंग टू बी अ ड्रीम कम ट्रू? मच रिक्वायर्ड. 1v2 स्पाइक को डिफ्यूज करने का मौका सीनियर दे रहे हैं. I don't know what was the up to. Well, he wanted a head, confirmed head here. With that, it is 12 rounds into the favor of FS Esports. And यहाँ पर tables turn हुए थे. हमने देखा था कि एडवांटेज आ चुका था VOD Esports के पास. वो एडवांटेज को वेस्ट आउट कर दिया गया. FS Esports अब लीड में आ चुके हैं, मैच पॉइंट के पास आ चुके हैं. तो अगर ये राउंड जीत जाते हैं तो वी कैन क्लियरली से बेस्ट ऑफ 5 से 1:1 का रेशियो हमें देखने के लिए मिल जाएगा फॉर बेस्ट ऑफ 5 एंड many more matches falling ahead. And अगर इतना ही tough competition होगा, cut throat competition होगा, because it is grand finals, we have to expect cut throat competition. हम breeze तक भी जा सकते हैं, which is one of the most now non-attacking friendly map. Yeah. Well, non-friendly it is, yes, but I guess फिलहाल के लिए तो FSC Sports is on a spree and I don't think they're gonna stop anytime soon. 12 rounds for FSC Sports. Just one more match point coming in. A lot of bullets have been poured through over there. And there comes the shock dart. Rio gets 1. Rio gets a double. Through the smoke, this man is making wonders. And there comes the plant, and it is definitely going to damage a lot for iGod. It's down to less than 50 HP. It's a 3v5 situation. The retake is gonna be very much possible. I'm of course sitting very close. Little does he know. And there you go. Sasmi gets 1. Bad Luck gets 1. It's the last player. iGod couldn't do much. But this is definitely going to be a very well remembered round for Rio because he just managed to get a double kill through the smoke. And of course VOD Sports will delay the victory on towards FS.
the victory is delayed for sure, and यहाँ पर एक मैच गया, इट्स ओके, स्टिल Need दे the आर drop. ऑन द बेटर स्टेट कंपेयर टू व्हाट दे वर इन बाइंड, क्योंकि बाइंड में वो 12-9 से हारे थे एंड यहाँ पर 12-4 पर हैं। एंड यहाँ पर अल्ट्स का वेस्ट हो चुका है, एस्ट्रल 4 वेस्ट हुआ था, लॉकडाउन वेस्ट हुआ था, जिसके चलते एक जीता हुआ राउंड हाथ से जा चुका है, बिकॉज व्हेन यू हैव एस्ट्रल फॉर्म एक इजी एंट्री साइड पर जाने के मौके होते हैं, बट देन हंटर्स फ्यूरी भी रेडी था ऑन द डिफेंडर्स साइड एंड बैड लव ने 2 पिक्स निकाल लिए। दिस इज मे बी द मैच पॉइंट हियर, टैरेट को वेस्ट आउट कर दिया गया है, ड्रोन कॉली का आ चुका है। आगे क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? वेल स्ट्रैटेजी ज्यादा नहीं है, एनिमी को टैग कर दिया गया है, नॉट ओनली वन गोइंग फॉर द सेकंड टैग, बट इट वाज नॉट पॉसिबल। सैसमी फिर से एक बार आ चुके हैं साइड पर और नोवा पल्स का यूज किया जा रहा है। Well, yes, moving forward, Bad Love looks really aggressive over towards the shot, which is not a good start for him. Sasmi immediately goes ahead, takes it, shot down. That's a one-man advantage. He's looking out for more, but there is over. The bomb is definitely dropped out. The recon comes in and look at Storm. He's going in for the flank. He's trying to push over towards the mid. And there is Kohli who managed to get himself the kill over towards the shot. He has a Marshall in his hand. There's nothing much he can do. He might get spotted over towards the issue. But there comes the Marshall. It will definitely put a bullet into Storm's head. And it is a very difficult situation for Weird Esports right now. I think it's already done. Weird Esports in a 1v3 situation right now. Unless MF God has some, miracles to do, I don't think it's going to be an easy factor. This position has already been given away. He's down to 10 HP. Nothing but losing. And here we are. Weird Esports unfortunately losing this map against FS Esports. But FS Esports, well played, Tanya. Well played, really. As you said, FS Esports have always been the strongest team, and this was the comeback they've been waiting for. They got the opportunity, they optimized it, they utilized it, and now they are the winners of the second map, that is Ascent. Which is, to my surprise, I thought Weird Esports' best map was Ascent yesterday. एंड वियर्ड esports were very shaky today because यहाँ पर स्कोर जो हम कंपेयर कर रहे हैं बाइंड से लेकर एसेंट तक के, एक कमबैक स्टोरी लिखने की कोशिश, आई वुड नॉट डिनाई कि ट्राई हार्ड बहुत ही किया, बहुत ही फोर्स एंट्री की कोशिश की, फोर्स ब्लॉक की कोशिश की, हर दफा अल्ट को यूज करने की कोशिश की टू डिले द स्पाइक, बट एफएन स्पोर्ट्स ऑलरेडी वो कहते हैं ना प्रेशर आ चुका था और वो प्रेशर के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म कर गए हैं। एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट मैच एक इक्वलाइज बैलेंस हो चुका है, नोबडी इज अंडर प्रेशर, यहाँ पर 1-1 फेयर स्क्वायर स्कोर हो चुका है, जिसके चलते अब हम वापस नॉर्मल सी देखेंगे। जो अग्रेसिव रशेस थे, अग्रेसिव पुशेस थे, वो थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट किए जाएंगे अंटिल एंड अनलेस फिर से एक बार एक क्रूशियल स्कोर क्रिएट कर लिया जाता है। यूजुअली हम देखते हैं कि डिफेंडर्स साइड में क्रूशियल स्कोर होता है सेंट के मैप में, बट यहाँ पर एफएन स्पोर्ट्स अटैकिंग साइड में एक स्टोरी लिख चुके हैं अपने लिए कि आइदर वी कैन डोमिनेट और डू नॉट सप्रेस अस। तो दोनों तरफ से एंगल, इट इज लाइक हेड्स इज आल्सो माइन, टेल्स इज आल्सो माइन ऑन द मैप ऑफ एसेंट, एटलीस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैप। यस, आपने सही बोला है। मैं तो बहुत शॉक हो गई थी बिकॉज आई वाज़न्ट रियली एक्सपेक्टिंग एफएससी स्पोर्ट्स टू गो सच स्ट्रॉन्ग, and maybe if they got the defender side and buying, they would have won that also in the first half. But yeah, Storm coming in for the replacement for Deadly, काफी सारी चीजें बदले हुए हैं. They still have to get along with Storm because of the player switch coming in at the last second. But yeah, all the very best to FSC Sports and Weird Sports for the next map, because next map में तो काफी अलग होने वाला है. The third map, I think we'll be seeing Split if I'm not wrong. Third map is Split, and I want to see Sage Sentinel here in the map of Split. And usually I do say कि KJ Cypher एक backstab के लिए, but पता नहीं एक Split का map ऐसा होता है जहाँ पर मुझे particularly ऐसा लगता है कि on the defender side एक Sage बहुत ही important role play करती है. Nowadays we don't see that meta के B को wall कर दिया, and I very well know, but still I stick to that exact same physics that we have been playing for quite too long. अब एक aggressive
डिफेंसिव पुश को यू फोकस किया जाता है, एंड सेंटिनल स्विच भी आ चुके हैं। एंड अब देखेंगे कि आज स्प्लिट के मैप में कौन सा प्लेयर क्या रोल करेगा, बिकॉज इफ यू टॉक अबाउट स्टॉर्म, हर एक मैप में, हर एक मैच में नया नया रोल दिखाते जाते हैं और हर एक रोल में सक्सेसफुली प्ले करके जा रहे थे, एक्सेप्ट फॉर ड्यूलिस्ट हाईएस्ट ट्रैगर होकर भी वो अचीव नहीं कर पाए जो वो एग्जैक्टली चाह रहे थे। यस, उनको, I mean, they had a different mindset in the map of Ascent. I wasn't really seeing them playing so aggressively, and here we have the map wise scorecard with Smokey, of course, in top for their team, 19 kills, 8 deaths. And speaking about weird esports, it's going to be Sasmi with 17 kills and 14 deaths. Unfortunately, Storm perform नहीं कर पाए जितना deadly perform किए थे पहले मैप में. He is down to 9 kills, 14 hits, and 2 assists. Rio and Bad Love. Bad Love, he's at the bottom of the leaderboard. Being a jet, being a duelist, he has to get the most of the job done. But इस बार हो नहीं पाया. And I God, he has done a marvelous job. 5 first bloods. Now that's a very huge thing that we are talking about. And he was able to pick it and save himself with the dash. That is which was way much more of importance, to not lose the duelist required for the team. And talking about Smokia, well, एक ace निकाल लिया through the nebula pulse, एक spray से ghost का use करके once again एक अच्छा dominative performance देखने के लिए मिला है, and 9 assists भी दिए 19 kills के साथ साथ. तो 20 का स्कोर, 20 का बैरियर भले ही कोई भी प्लेयर ने क्रॉस आउट नहीं किया, लेकिन एज शॉट की ओर से जब हम चेंजेस देखते हैं, वी हैव नेवर सीन हिम एज अ ड्यूलिस्ट, एंड अगर आज हम वो ड्यूलिस्ट के रोल से 10 पिक्स निकाल पा रहे हैं, अच्छे लेयर्स डाल पा रहे हैं टू अवॉइड द एंट्री टुवर्ड्स द साइड, आई थिंक एज शॉट का भी ये पर्टिकुलर विक्ट्री के अंदर काफी अच्छा सपोर्ट था. अनलाइक ओनली इनिशिएशन, ओनली बीइंग द सेंटिनल फॉर द टीम, ही इज बीइंग द टॉप में नहीं नजर आ रहे, नो डिनायल, लेकिन एक अच्छा काम था कंपेयर टू व्हाट ही वाज डूइंग इनटू द प्रीवियस मैप. Yes, I totally agree with you. Well, compared to what happened, what kind of performances were seen in the last map, where Bad Love went completely against FSC Sports. I mean, Bad Love was on top. He was the MVP in the last match with 28 kills. Now he barely crossed 10 kills. Up comes the player versus player, and I'm expecting Smokia versus Sasmi right now. Yep, it should be it because Sasmi did play very well Phoenix in this map. Smokia with 19 kills, Sasmi with 17 kills, 8 deaths, 14 deaths, 9 assists for Smokia. What a player! A total of 2.38 kill death ratio for him. Almost like average, he took 2 kills every single round. Tanya. And speaking about Sasmi, he was so close to cross Mokia's kills, just 2 kills away, but he couldn't make it. ही couldn't make it, and सैसमी ने एज अ ड्यूलिस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, अनडिनाएबल फैक्ट है ये. फिर से एक बार हम सैसमी से कुछ और एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ 2 मैचेस हुए हैं, बेस्ट आउट ऑफ 5 है. द टीम टू गेट द स्कोर ऑफ 3 इज गोइंग टू बी द ग्रैंड फाइनलिस्ट विनर, एंड आज वो कौन सी टीम विनर बनेगी वो ज़रूर हम देखेंगे. फॉर नाउ वेल आई विल से एक वियर्ड ई स्पोर्ट्स की ओर से हम अंडर परफॉर्म नहीं कहेंगे, बट एक शेकी परफॉर्म हम कह सकते हैं इन द मैप ऑफ एसेंट वे दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग येस्टरडे. और अगर उनके कंफर्ट जोन में उन्हें शेक कर दिया जाता है, तो जिस मैप में कंफर्ट नहीं होगा वहाँ और ज्यादा ट्रॉमा उठाना पड़ सकता है. बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी हियर द MVP for this particular match, and it has to be none other than Smokia with 19 kills, 8 deaths, 9 assists, and 2.38 average death, average kills per match, average kills per round. एक अच्छा पिक निकाल लेते थे, एक अच्छा होल्ड कर रहे थे, एंड अच्छी तरीके से एस्ट्रा एबिलिटीज को एक साइड कंट्रोल करने के लिए यूज किया गया था. एंड ऑन द अटैकिंग साइड एज वेल, जब पोस्ट प्लांट भी यूज किया गया था एस्ट्रा की यूटिलिटीज को, तो वहां पर साइट एंट्री नहीं मिल रही थी डिफेंस सिस्टम में. तो आई वुड अप्रिशिएट स्मोकिया, you are doing way much more for your team, and congratulations on being the MVP for second match for the day for ROG Showdown series Valorant.
A beautiful, beautiful execution coming in from Smokey in the last map. And now we are done with the first two maps in the grand finale. Just a little quick recap for all the audience. The first map was Bind. It happened between FSC Sports against Weird, where Weird Esports took away the victory of 13 to 9, I believe. And in the second map, we had Ascent, where FSC Sports completely striked out Weird Esports and put the best performance they had. And it was mostly a one-sided performance coming in from FSC Sports, which did surprise me a lot. Well, I'm looking forward for the third map, which is going to be Split, I believe. And after Split, we have Haven, and then we have the last. Sorry, we have the decided map as Breeze. So, ladies and gentlemen, we'll be back after a short break. In the break, definitely have a look to what ROG Showdown series has got something new into their markets, and the link will be in description for the same. See you on the other side. Got him. Let's go.
got him. Let's go. Got him. Let's go. Well, after a short break, me and Tanya are back at the stage for the third map to go live. Well, the first two maps have been a complete surprise for me and Tanya. Let's see what kind of surprises does the third map has to bring it to us. एब्सोल्युटली व्हाट नेक्स्ट सरप्राइजेस और क्या देखने के लिए बाकी है वेल एक टफ कंपटीशन जरूर आगे देखने के लिए बाकी है आई होप यू गाइज आर एंजॉयिंग इट इज गोइंग टू बी आरओजी शोडाउन बाय एसएस पावर्ड बाय इंटेल वैलोरेंट का ग्रैंड फाइनल्स है एंड यहाँ पर स्कोर जो है बेस्ट आउट ऑफ 5 में 1-1 कर दिया गया है 1-1 एंड इट इज क्लियर स्क्वायर कोई भी टीम प्रेशर में नहीं है कोई भी प्लेयर प्रेशर में नहीं है बिल्कुल फेयर चांस के साथ फिर से एक बार नया स्टार्ट किया जाएगा एक्सेप्ट अब यहाँ पर 2 और मौके मिलेंगे। क्या कोई टीम कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर पहुंच जाएगी या फिर से एक बार ब्रेक थ्रू देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर 1-1 देखा है फिर एक बार 2-2 देखने के लिए मिल जाए क्योंकि द वे वी आर स्पोर्ट्स एंड एफएस स्पोर्ट्स आर प्लेइंग वेल टू नो सरप्राइज कल डोमिनेंट थे आज ज्यादा डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जब फाइट ऑफ द इक्वल्स होती है तो यू टेंड टू सी दिस रोलर कोस्टर यू टेंड टू सी दिस अप्स एंड डाउन्स यस वेल रोलर कोस्टर राइड्स में ही अप एंड डाउन होते हैं फिलहाल के लिए तो हम एक बहुत ही इंटीमेट मोमेंट में है रोलर कोस्टर राइड में पहला मैप में हम बहुत ऊंचे पे गए थे एंड देन सडनली वी आर स्पोर्ट्स स्ट्राइकर्स डाउन एंड वी हिट द ग्राउंड एंड एफएससी स्पोर्ट्स अगेन दे बिल्ट अप दे ब्रॉट अस टू द हाईएस्ट पॉइंट अभी ये मैप हमको डिसाइड करके बताने वाला है कि हम सेम ऐसे ही अप एंड डाउन मोमेंटम पे बैठेंगे कि नहीं तो एक कंसिस्टेंट लाइन में जाने वाला है well, I'm very excited for this map because this is chosen by VOD Sports and they're going to be starting off at the attackers in the map of split.
And for the map of split, as an attacker, I would appreciate if they take at least two sentinels with themselves. Let's see if they are going to go ahead or not. Duelist are a priority, लेकिन in the map of split पोस्ट प्लांट के लिए सेंटिनल्स काफी ज्यादा प्रायोरिटी रखते हैं, बैकस्टैब्स रोकने के लिए भी प्रायोरिटी रखते हैं। तो एजेंट सिलेक्शन मैप ऑफ स्प्लिट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि हमने देखा है इवन बिग नेम्स, बिग डॉग्स ऑफ दिस टूर्नामेंट्स आर अ लिटिल बिट अफ्रेड ऑफ प्लेइंग स्प्लिट, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ना हम कहेंगे कि डिफेंडर्स को फेवर करता है, ना हम कहेंगे अटैकर्स को फेवर करता है। यहाँ पर मेन प्ले होता है एजेंट्स का, आप क्या सिलेक्ट करते हैं एंड किस तरीके से आप पुश देना चाहते हैं, स्प्लिट खेलना चाहते हैं। फॉर द डिफेंडर्स हमेशा फिक्स रहता है, एक मिड पर रहेगा, दो ए साइड पर रहेंगे, दो बी साइड पर रहेंगे। अटैकिंग साइड पर लर्किंग होती है या फिर एक स्ट्रॉन्ग पुश आएगा, क्योंकि बी साइड पर हमने मोस्टली देखा है एक पुश के साथ अग्रेसिव एंट्री एंड अ सक्सेसफुल प्लांट एंड अ सक्सेसफुल राउंड। वो स्ट्रैटेजीज क्या हमें देखने के लिए आज मिलेंगी ऑन दी अटैकर साइड, जबकि मैप सिलेक्शन वियर ई स्पोर्ट्स का है एंड साइड भी अच्छी सिलेक्ट की गई है ऑन दी अटैकर्स। ऑल द बेस्ट to both the teams. Both of them are performing very, very good, particularly the man Smokia outshining for his team, and Storm अभी अभी आए हैं लेकिन स्टॉर्मी परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। Yes, काफी सही बोला आपने. And this Tommy performance is gonna continue to the third map. I hope it comes true because FSC Sports, now that they have a map advantage, they might have a good shot at winning this map. अगर उन्होंने same momentum carry किया तो I'm definitely sure कि FSC Sports काफी आराम से ये मैच पे निकल लेंगे. But once again, they do have the advantage of starting and beginning the match with the defenders side. And defenders side, it always is a good luck for them. Even in the last map, they began in the defender side, especially in the map of Ascent. So they had a good chance. So they might have a good chance again because they're starting in split. As the defenders, we can appreciate their play, and having said, they are the defenders for the next round, for the third map for the day. अगर इसके अंदर अच्छी खासी तरीके से एडवांटेज उठा लिया तो आई थिंक यहाँ पर एक फिर से इतना लॉन्ग लैडर प्लेसमेंट कर देंगे कि क्लाइंब करने का मौका नहीं मिलेगा टू क्वालिफाई। लेट्स सी क्या वो उसी तरीके से स्टोरी लिखेंगे जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। एंड ये स्ट्रीम फेसबुक पर भी लाइव होती है, यूट्यूब पर भी लाइव होती है। आप कहाँ से देख रहे हैं वो हमें ज़रूर टाइप करके बताइए इन टर्म्स ऑफ हार्ट्स एंड स्माइलीज, हार्ट्स फॉर द फेसबुक, स्माइलीज फॉर यूट्यूब, एंड कीप ऑन शावरिंग द सेम लव एंड सपोर्ट फॉर योर फेवरेट टीम, फॉर योर फेवरेट प्लेयर। क्योंकि अब आप हम कल तक कह रहे थे थोड़े से नए नेम्स हैं, थोड़ा सा नया टीम है, लेकिन कल से लेके आज तक के सफर के अंदर आई थिंक नो बडी इज न्यू ईयर। यहाँ पर अपना फेवरेटिज्म आ सकता है, आप आपके फेवरेट प्लेयर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एंड कमिंग बैक टू फेवरेट प्लेयर, वेल एमवीपी फॉर द डे स्मोकिया, उनसे मैं फिर से एक बार कंट्रोलर या सेंटिनल का एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ। आई डोंट वांट टू सी हिम एज अ ड्यूलिस्ट। हियर वी गो ahead with the third map for the day, and it is going to be split weird esports against FS esports. Yes. Well, the match is yet to begin. मैं तो उसके लिए इंतजार में हूँ and I really cannot wait because the match is going tougher and intense between both of the teams. पहला मैंने सोचा कि VRT Sports advantage ले लेगी, maybe they will show a one-side performance, but no, FC Sports did the same in the second map. They completely struck us and they have changed the sides immediately. And I guess we'll be beginning the match shortly. And what kind of agent pick are you expecting in the map of split? आप defender side से चालू कीजिए कि what agent lineup are you expecting? If I had to choose for the duelist, I am expecting raise in the map of split. काफी priority रखता है, paint shells post plant में भी काम आते हैं, site entry में भी, so I am expecting a raise coming in. I am expecting one initiator, can be Soa or maybe say or Sky initiator. Let's go with the Soa for now, and we can also expect one more duelist. I personally prefer Jet here, जो split को काफी ज्यादा importance के साथ आप Jet से खेल सकते हैं, and thanks to the dash coming in from Jet. And as I mentioned, as a defender, I would definitely want a Sage within the team, and Sage and KJ. This would be my split. They have a healer, they have two sentinels to work out with. Controller की कमी definitely रहेगी, but I think that is enough अगर आपके पास दो sentinels हैं. Yes, two sentinels can completely
चेंज द एंटायर गेम। इवन इन अगर स्प्लिट पे हम बात करें अटैकिंग पे, आई थिंक वी शुड गो फॉर अ डबल इनिशिएटर। स्काई ले सकते हैं और स्काई के साथ एक और इनिशिएटर ले सकते हैं। इट्स वेरी लाइकली दैट देयर इज गोइंग टू बी सोवा, बट स्प्लिट इज अ लिटिल नैरो मैप, सो आई एक्सपेक्ट कि सोवा का भी अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। बट या nevertheless coming back towards the agents pick, किलजॉय काफी अच्छा पिक है एंड साइफर भी बहुत बढ़िया पिक है। काफी जगह पे हमको इंटेल फिनिश कर पाते हैं एंड आई गेस the most, the most unexpected duelist with the most durable duelist in split is yoru. मैं I really Yeah. want yoru to also be there. उसके short flashes, everything was very well, but one agent which is picked the most is Raze in split, because all the grenades and the boom pods, they go to a very higher advantage. As we move down to the agent selection, here we are, ladies and gentlemen, and that's, I guess, a little problem, but yeah, we are back again to the desk. Not a problem. We did see a sage coming in. स्प्लिट में सेज काफी अच्छा पिक है, टू बी ऑनेस्ट। मिड पे वॉल करके छोड़ दे सकते हैं एंड इवन द वॉल एंड सेज, दे बोथ गो हैंड इन हैंड वेरी वेल। The very trivial choice, a very old choice, going ahead with the Sage as a Sentinel. Well, and talking on the attackers side पे site entry के लिए मैं एक Brim को काफी prioritize करती हूँ, because just in case if you imagine they don't have a Sentinel, they don't have a Sage to work out with, अगर सिर्फ मेल रूम को smoke कर दिया जाता है तो एक अच्छी entry मिल सकती है site B पर to be precise। तो एक I want to see somebody going Brim on the attacking side, एंड डिफेंडर्स में भी हेल्प आउट कर देगा फॉर श्योर। तो आई वांट टू सी इफ दे आर गोइंग अहेड, एंड हाउ कैन वी फॉरगेट एमएफ गॉड जरूर स्मोक का रोल फिनिश कर ही देंगे एज अ ओमेन। तो ब्रिम का यूजेज शायद से हम अटैकिंग साइड पर नहीं देखेंगे। एंड जस्ट इन केस इफ यू हैड टू पिक एनीबॉडी फॉर द स्मोक पर्टिकुलरली, आप किसे प्रेफरेंस सबसे ज्यादा देते हो? I would say Astra, because nowadays Astra has been a very good one, and not only the smokes, it also stuns, it also pulls. And अगर Raze और Astra एक ही साथ काम करे तो they can completely change everything, because the pull and the grenade, if they both match at the same time, I guess number of kills will be in their hands. दो किल तो आराम से मिल जाएंगे if it's a proper pull and two to three people are actually getting vulnerable inside it. And Astra, the best part about being an Astra is that you can put multiple utilities usage at the same time. Like you can put a smoke and you can put a stun and pull. So if you stun and pull, not only the players only can't shoot you back, but also they are getting pulled and they are vulnerable at the same time. So वो काफी एडवांटेज दे देगा इन स्मोकर्स। एंड इफ यू आस्क मी इन सेंटिनल्स, आई डेफिनेटली पिक किलजॉय, द हाईएस्ट डैमेज अवेलेबल। इनिशिएटर्स, Sky, when it's a map like Split, I would definitely go for Sky because flashes काफी important है, and a lot of times we give up on flashes. And Sova के replacement में अगर कुछ अच्छा agent ले सकते हैं initiatives में, that would definitely be Sky. अनडाउटेबली हम स्काई का यूजेज देख सकते हैं, फ्लैशेस भी प्रायोरिटी रखते हैं। यस डेफिनेटली हम एक स्काई एज अ इनिशिएटर मिस आउट कर रहे थे, हम यहाँ पर स्काई को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं बीइंग पिक बाय एनी ऑफ द टीम विच एवर इज कंफर्टेबल। लेकिन आई रियली वांट कि जो टीम में जो ड्यूलिस्ट है ना, वो अपना रोल छोड़कर इनिशिएटर का रोल ना करे, इनिशिएटर ड्यूलिस्ट का रोल ना करे, क्योंकि ये जो जंबलिंग करने की कोशिश होती है वो उनके फेवर में नहीं जाती। सो विदाउट एनी डिले यहाँ पर हम आ चुके टुवर्ड्स द एजेंट सिलेक्शन ऑन द डिफेंडर साइड। हमने इमीडिएटली सेज को सिलेक्ट होते देखा एंड दैट इज सैसमी। वेल सैसमी मल्टीपल रोल खेलना चाह रहे हैं, आई डोंट नो इफ इट इज गोइंग टू वर्क और नो। एज अ फीनिक्स ही इज डेफिनेटली आउटशाइनिंग, वी हैव नेवर सीन हिम एज अ सेज। Yes, we've never seen him as a sage. That means ये कुछ interesting होने वाला है. Sasmi did play a duelist role in the last map and he completely outplayed everyone with the Phoenix. Well, this time I think things are going to be really different for us, as we हमने देखा है कि यहाँ पे Sasmi Sage ले रहे हैं and आगे जाके I'm also expecting Rio to Omen. I was expecting an initiator, but I guess we have a double sentinel setup from the defenders, which looks very strong. And coming in from FSC Select Sports, your we agent. have a double sentinel setup with an Astra, and they're not sure if they want to go in for the initiator.
Smokey, he's locking in full Sky, and it's a single duelist setup. I got अकेला attackers पे रेस खेलने वाला है. Do you think it's worth it, तानिया? अटैकर्स पे वो लोग एक ड्यूलिस्ट के साथ खेल रहे हैं, बल्कि जब डिफेंडर्स में डबल ड्यूलिस्ट प्लस डबल सेंटिनल सेटअप देखने को मिलेगा. And this was the exact setup that I was asking for: double duelist, double sentinel, and that is enough to control. And on the contrary, they have smokes as well. मुझे लग रहा है टीम वियर्ड esports का इस बार better है compared to what they have. They have got only one duelist, two initiators, and one sentinel to work out with. Once again, we will be seeing Astra as we predicted. टीम वैसे हम FS esports को भी अंडररेट नहीं करेंगे, डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, बिकॉज हियर वी आर गेटिंग स्मोक, हियर वी आर गेटिंग इनिशिएटर, एंड ब्लाइंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, एंड ब्लाइंड्स की कमी हमें देखने के लिए मिल सकती है फॉर वियर्ड esports. देखेंगे बिना ब्लाइंड के यहाँ पर डिफेंसिव सेटअप जो है काफ़ी स्मूथ है, बट यही सेटअप के साथ साइट में एंट्री लेना डिफिकल्ट हो सकता है. एंड और हैविंग सेड दैट, हम एक्सपेक्टेशंस दोनों की सेज से काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं, बिकॉज दिस इज द मैप ऑफ स्प्लिट जहां पर साइट कंट्रोल इज द प्रायोरिटी. क्योंकि एक बार एंट्री मिल गई तो इतनी स्नीकी अप्रोच है कि आप कहीं से भी कुछ भी करके अपना टारगेट अचीव कर सकते हो. या पर फिलहाल के लिए तो मुझे लगता है कि ये पिस्टल राउंड जो है वो डिफेंडर्स के हाथ में ही जाने वाला है, बिकॉज डिफेंडर्स के पास डबल सेंटिनल सेटअप है. इन पिस्टल राउंड में डबल सेंटिनल सेटअप को क्रॉस करना looks merely possible for me. And with the Sage's wall is about to break, and butterfly knife, काफी है, काफी सुंदर से हमने यहाँ wall तोड़ा गया, and they're trying to make their entry over towards the heaven, which they are being successful at right now. Well, एक interesting start है. We are down to 1 minute on the clock, and we really haven't seen any bodies getting dropped. They've got the control of mid, they've got the control of vents, they've even got the control of B heaven, a 3-player, 3 defenders setup over towards the B bomb side. I got, if you're thinking to hit B bomb side, you should be really careful, because you are gonna be fighting against a strong team who already have a triple player setup over towards the B bomb side. ए साइड पर फोर्स करने की कोशिश की गई है, रोप्स का यूजेज भी आ चुका है. यहाँ पर 1v2 सिचुएशन B2 के लिए हो गई है. वेल पिक निकालने का मौका नहीं, पैरानोया का यूजेज. B2 अपने आप को हील कर देंगे, बिल्कुल सही वॉल प्लेसमेंट टू अवॉइड एनी कैजुअलिटीज एज ऑफ नाउ. जा चुके हैं साइड पर, टीम फ्लैश की गलती हो चुकी है, एंड प्लांट भी कर चुकेंगे. प्लांट में भी डीले नहीं है, लास्ट 12 सेकेंड्स बची है. डीले विल रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ राउंड. वेल स्मोकिया फिर से एक बार एस लेते हुए हमें नजर आएंगे. गोइंग 1 2 3 एंड लास्ट 2 इन जस्ट अ स्नैप. फर्स्ट राउंड इन द फेवर ऑफ FS esports as a initiator. We can clearly see Smokia is doing very good. टीम फ्लैश जरूर दिया था, बट देन कवर भी काफी अच्छा दे दिया. यस, काफी बढ़िया एस था. पहला ही राउंड में स्मोकिया ने यहाँ धूमधाम मचा दिया है. 5 kills for him, and Weird Esports, they are off to a really tough start right now. डबल सेंटिनल के सेटअप के साथ भी यहाँ पे काफी मुश्किल से वो खेल पा रहे. काफी एग्रेसिव सेटअप लगाया गया है वियर्ड Esports के साथ. यहाँ पे they went for a very aggressive turret and a very aggressive push from Storm. Storm will get that first entry, which means FS Esports already losing out a player on their 4 spy round. Oli looks like it's gonna be peeking out over towards the bomb site. मुझे लगता है कि ये A setup होने वाला है. Smokey के हाथ से Wolf आने वाला है. Bad luck goes down, and there's another player that is the race, which will go down. Well, luckily Rio also is going down. It's a 2v4 situation, and I don't think Weird Esports stands a chance right now to win, but they do have an opportunity to get the as much as exit kills as possible. Well, another grenade coming into the play. It's gonna do a lot of damage to Sasmi over there. I got, if you peek, you'll be in big trouble. And there you go, he goes down as well. A 1v2 situation right now. The Sage is waiting, and B2 will put a bullet inside, as Asmi said. Second round on board for FS Esports, but it was a close one. FS Esports economy is damaged and moved a little by the exit kills Weird Esports have got. Smokia, well, the first round is
Second round, no picks at all. A good team support coming in from B2, iGod, and Kohli. And if you took a look at the weird esports side, Rio and Deadly, Deadly needs to be ready for his team to get some picks because he is raised. अगर पिक्स नहीं निकाला, अगर एंट्री नहीं दिलाया, तो व्हाट इज रेज ऑल अबाउट. यहाँ पर डेडली वेट कर रहे हैं एंड एस्ट्रा का यहाँ पर स्टार प्लेसमेंट देखने के लिए मिल रहा है. साइड बी पर कैक्टस वंस अगेन देखने के लिए मिल रहे हैं. क्या यहाँ पर एंट्री हो पाएगी? ट्रेल ब्लेजर डालने की कोशिश जरूर की गई थी. आई रियली डोंट नो व्हाई वाज दिस वॉल प्लेस्ड एट ऑल. वेल, टू वेस्ट आउट द ट्रेल ब्लेजर फॉर श्योर. ए पर 2 प्लेयर्स नजर आएंगे एंड यहाँ पर एक कवर का भी यूज किया जाएगा. डार्क कवर से एंट्री और डिले हो सकती है. डिड यू नोटिस समथिंग तन्वी? इतना लेट साइट एंट्री कर रहे हैं, इसके बावजूद भी स्पाइक हर बार प्लांट होते जा रहा है. I mean, slow and steady wins the race, and it definitely looks like it's helping them out. And especially FSC Sports जितना slow खेले, उतना weird esports push कर रहे हैं. I mean, they are giving away the first picks definitely, so it's working in their favor. And this time, Deadly gets the opening. Okay, Deadly is back in the game. पिछले गेम में हमने Deadly को नहीं देखा था, but इस बार Deadly वापस आ चुके हैं गेम के अंदर. डेडली के आते ही हर चीज डेडली हो सकती है. सीकर्स का यूज किया गया एंड ज्यादा कुछ डीले नहीं कर पाए. बैड लव का आमना सामना होते हुए नजर आएगा. एस्ट्रा बिल्कुल यहीं पर ही प्लेस कर रहे थे स्टार्स और इमीडिएटली रोक दिया गया है. कोहली क्या करना चाहते हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, लेकिन बैड लव यहाँ पर किल निकालने की कोशिश कर रहे हैं. डेडली ने 3 किल्स ले ली एंड डिफेंडर्स वन. Sassy was the one to knock the final nail in the coffin. With that, ये weird esports का पहला राउंड आया हुआ है अपने फेवर में. 1 and 2 का स्कोर है, इक्वल चल रहा है, हेड टू हेड चल रहा है. एंड यहाँ पर जो सेंटिनल सेटअप हमने डिस्कस किया था, फाइनली इट इज कमिंग इनटू एक्शन, जहाँ पर हम देख रहे हैं एक प्लेयर प्रॉपर्ली वॉल लगाकर साइड ए पर एंट्री ब्लॉक कर रहा है एंड यहाँ पर केजे के टैरेट्स अलार्म बॉट साइड बी पर ब्लॉकेज कर रहे हैं. एग्जैक्ट सेंटिनल का यूजेज अब हमें देखने के लिए मिल रहा है विद द प्रॉपर स्ट्रैटेजिक वे. Yes. Well, strategy is the best way to get most of it. But let's see. Kitna dur. A double account wall coming in, and that counter wall definitely did do a lot of damage for Weird Esports, taking down 2 of the main players. FSC Sports lost 1 man, but still are on the advantage. They're moving aggressively. FSC Sports, a triple player still up and running. Cactus gets himself a double kill, a triple kill, and that is the 3rd round for FSC Sports, immediately answering back to Weird. And right now, Weird, they're still in the disadvantage. They did get 1, but they will be answered immediately back. This time they're going for the B side. Let's see अगर वहाँ पर जाकर spike plant होता है या नहीं, because अभी भी we cannot see any momentum coming in from B2 as well. Sasmi ready है A side को block करने के लिए and वहाँ पर smokes के लिए भी ready है हमारे Omen and edge shot to be precise. अब देखेंगे Cactus क्या करना चाहते हैं. Over commitment B side की ओर नजर आएगा. Push भी हो चुका है and यहाँ पर restlessness भी esports की ओर से आ चुकी है. Sheriff का usage and versus Phantom. Definitely Phantom is going to do better. Well, no, it was Sheriff that just goes ahead and takes the first 1 tap for this round. iGod आगे आएंगे. रोप रूम की ओर एंट्री ले रहे हैं. स्मोक किया यहाँ पर बूम बॉट को डिस्ट्रॉय कर देंगे. आई थिंक यू आर राइट तन्वी. डिफेंडर साइड पर पुश कर Weird Esports एक गलती तो जरूर कर रही है. Why are they getting impatient? Why are they getting restless? वो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज FS Esports responsibility to just get in the side, plant the spike. Still restlessness into the hands of Weird Esports. Platform का usage and throw stopper साथ में देखने के लिए मिलेगा. Nobody delivers any damage. दोनों ultimate waste out होंगे and damage जो I got को लगा तो वो heal up हो जाएंगे. Thanks to Smokya for taking a heal up for the team. Yeah. Well, Rio is trying his level best to get the most of his. Okay, Rio gets 1. Rio gets a double, and now he's going to be using his ultimate. But he did cancel it. Yup, he did cancel it. Are they going to rotate back? No, Kohli's waiting for for Rio to get caught by the rotation, and I think Rio is not going to buy that. He's definitely going to go for a heaven push. Well, he's down to 28 HP, barely surviving. He can pick up a gun. Or else he's still standing down with the Sheriff in his hand. Yep, he has a Phantom. He's checking out Heaven.
He's slowly moving both of the players over towards the CT. Smokia. He's looking at CT right now. And Kohli did give away the noise, but it's not gonna be just it. Kohli will also get the kill. Fourth round on board for FSC Sports. What an interesting game, Tanya. Split was supposed to be different decided, and FSC Sports is still putting out such a strong fight. FS Esports is putting a good show on the attacker side for the map of Split. Undeniable fact. Winning rounds by rounds by rounds. Even after ults getting wasted, we have seen various times where showstoppers are now being used for the initiative pick and they are not successfully able to take but still round into their pockets. 3 पॉइंट्स की यहाँ पर लीड आ चुकी है एंड ए साइड पर एक फोर्स पुश देखने के लिए हमें मिल सकता है. सैसमी रहेंगे हाईएस्ट ट्रैगर एज सेंटिनल एज वेल एज ड्यूलिस्ट एज वेल. तो एक सैसमी की ओर से अच्छी किल स्ट्रीक देखने के लिए मिल रही है एंड डेडली 10 यहाँ पर थोड़ा सा पैंट्स अप करने पड़ेंगे. सॉक्स को टाइटली पुल करना पड़ेगा क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो थोड़ा सा डीले हो सकता है. बिकॉज आई एम वेरी श्योर अगर आप डिफेंडर साइड में इतने ज्यादा राउंड्स गवा दोगे तो ऑन द अटैकर साइड बहुत प्रेशर में खेलना पड़ सकता है. ड्यू टू विच यू माइट गो अग्रेसिव एंड यू माइट बी टेकन डाउन क्वाइट अर्ली. एंड यहाँ पर ए साइड का पुश शायद शुरू करेंगे आई गॉड विद द बूम बॉट. नो, अभी एक व्यू देखा जा रहा है. स्टॉर्म यहाँ पर अकेले हेवन पर गार्ड करते हुए खड़े नजर आएंगे. ट्रेल ब्लेजर को वेस्ट आउट कर दिया गया है, बॉम्बडी को भी, लेकिन लॉकडाउन रेडी है. लॉकडाउन रेडी है बट क्या प्लेयर्स रेडी है इस लॉकडाउन की मुकाबत लेने के लिए? दैट इज द क्वेश्चन. FSC Sports they still haven't made an entry over towards the A-bomb side, and as the lockdown gets finished, Storm is over towards the CT. He's over towards the screen. He's waiting, and he gets taken down with the double push coming in. And now this is not at all a good idea for Sage to go for a CT push. CT का wall हो चुका है यहाँ पे. Screens is no longer available for the defenders. The flash will be coming through. Smoke are getting another flash. They are gonna break the wall. But why would they build a wall if they want to break it? But nevertheless, they did manage to get the round. So I think as long as they're getting rounds back to back, the utility usage, it doesn't have to really make sense. FSC Sports with 5 rounds in the attacking. 5 राउंड्स इन दी अटैकिंग एक अच्छा लीड बना रहे हैं. 1 by 1 राउंड लेते तो एक डबल सेंटिनल का जो एक्चुअली डिफेंस फ्रेंडली टीम लिया गया था VAD स्पोर्ट्स की ओर से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा. पता नहीं कहाँ गलती एग्जैक्टली चूक रहे हैं. फर्स्ट पिक अर्ली दे रहे हैं, रेस्टलेस बिहेव करके अर्ली एक्सपोज होते जा रहे हैं. बॉम्बडी से मिड को पुश किया जा रहा है एंड यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है. मेल रूम में बॉम्बडी जा चुका है. यहाँ पर एक अर्ली पिक देखने के लिए मिल सकता है. वेल देखने के लिए तो नहीं मिला. जज के साथ डेडली रोप रूम में रेडी बैठे हुए हैं एंड यहाँ पर कैक्टस भी नजर आएंगे जो बैकफुट चले गए हैं. पर जजेस तो काफी डेंजरस गन्स होते हैं क्लोज रेंज में, सभी को पता ही है. एंड अगर एक स्टेप आगे अभी आईगॉड ने ले लिया तो ही इज गोना रिग्रेट द एंटायर गेम that he had to take a fight with Judge, and in turn he lost to it. And Storm is trying to play a little smart, even with the Sheriff is going to be putting his turret down placed, and he's moving back to CT. VAD Sports के पास economy तो जरूर नहीं है. Even the turret goes down right now. And FSI he waited for the rotation, and he will walk into them right now. He's going to the CT. Spike carriers down. काफी अच्छा बैक स्टेप देखने की चांस मिल सकता है. Bad Love already getting the entry over towards the smoke, and now he's going even more aggressively, which he didn't have to. And Sasmi will get another pick. 1-5 is the score. It's a 2 versus 5 situation. Looks merely possible for FSC Sports. Maybe is it finally time that VAD Sports to come back? FSC Sports, yes, they definitely can't do it, but VAD Sports do the comeback. Even the Sheriffs have worked for them like a charm, Tanya.
And a thrifty round 1 here. Well, it was a basic necessity coming in. As the defenders, finally, we can see them going patient and not pushing against them. Unlike they have to enter the side, Sasmi will still be the highest striker for the team with total of 7 kills coming in. On the other side, Smokey will also be seen. The exact PvP जो हमने देखा था Sasmi versus Smokia वही वापस से बनते हुए नजर आ रहा है. देखेंगे कंटिन्यूटी कितनी रहेगी. बैड लव हेवन का वेट करके बैठे एंट्री होगी या नहीं. एंड प्लेयर्स आर पुशिंग इट थ्रू द मिड. एक अच्छा डिसीजन है. बैड लव यहाँ पर स्पॉट आउट हो जाएंगे. बूम बॉट से डाउन ना कर दिए जाए. एंड लुक एट द वॉल प्लेसमेंट. थोड़ा सा डिफरेंट वॉल प्लेसमेंट है. नॉट इमीडिएट मिड बट ट्रेल ब्लेजर को भेजा गया है. वॉल ब्रेक कर दिया गया है. स्लो और कितनी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकेगा. एंड परफेक्ट टाइमिंग फॉर द सीकर ताकि अच्छी तरीके से साइड में एंट्री मिल जाए. एंड द एंट्री इज ऑलरेडी ऑन. हेवन पर कब्जा जमा चुके हैं. एंड एक पिक भी निकाल लिया है. काफी ज्यादा डैमेज ने कोली ने दिया भी है. Yeah. Well, I guess the Phantoms are definitely working like a charm. यहाँ पे Rio ने एक निकाला है, but Bad Love immediately trade करते हुए Smokia with the last double kill, finishing things in action. And that is going to be the 6th round for FSC Esports. I was expecting Weird Esports to go a little more aggressive, but FSC Esports का Smokia पता नहीं कहाँ से आ गए. He definitely shaked the entire map over there. They definitely shaked everything up and down, using the ults, forcing through mid, breaking the wall, using the trailblazer right on time, and getting the entry on the heaven. And then comes the first pick and also the 6th round into the favor. This is going to be the 9th round for the attackers side for Team FSC Sports. And Bad Love coming back to its role as a sniper, and Kohli will take down Bad Love. लेकिन resurrection B2 का ready था, जिसके चलते I got to revive दे दिया गया है. और यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है डेडली 10 की ओर से. 2 पिक्स एक साथ. बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस. एंड यहाँ पर बैड लव को रेजरेक्ट कर दिया जाएगा. Bad Love has been resurrected. He's back on his feet, and now he'll be putting. He'll actually be rotating down back towards A bomb site, and Deadly भी धीरे धीरे से वन से A bomb site जाने की प्लान बना रहे हैं. Bad Love उनके पास operator है, and he also has his ultimate blades out. 1 peek and 1 kill over towards the A mains. I think it pretty much balances the score between Weird Esports and FSC Sports. Cactus is trying to push over towards the Evans, but little does he know the showstopper is coming out. Deadly is looking for someone to push in, but he puts the ultimate at the wrong time, and the grenade also goes down at the wrong place. Little does he know, Cactus is standing very close. Cactus peeks out, gets one, gets traded. It's 2v2 situation all the way from 4v2. They've brought it down to a 1v2. And it's Storm who will be for the backstab. He gets one. He's waiting for the last man. That is B2. B2, the clutch master, will get the 7th round for FSC Sports. Unbelievable performance, Tanya. एंड यहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड लेट्स सी हाउ फार कैन दे कंटिन्यू एज इनिशिएटर. फिर से एक बार हम स्मोकिया को हाईएस्ट ट्रैगर एंड क्रॉसिंग द डबल डिजिट मार्केट पर देखेंगे. ब्लेड स्टॉर्म रेडी है, एज वेल एज हम यहाँ पर लॉकडाउन रेडी देख पा रहे हैं. एक साइड पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कि साइड बी को लॉकडाउन कर दिया जाए और ए पर ज़्यादा प्लेयर्स को रखा जाए टू अवॉइड एनी पुश कमिंग इन. एंड वेल यहाँ पर स्टॉर्म को हम देख पा रहे हैं लॉकडाउन का यूज़ नहीं है. प्लेयर्स हैव पुश्ड ऑल टुगेदर ऑन साइड ए. इमीडिएट रश था एंड कैक्टस ने स्टॉर्म को ही डाउन कर दिया है. पेंट शेल आता है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज. ब्लेड स्टॉर्म बैड लव का कैक्टस को टेक डाउन कर देगा. द मैन हु वाज वेरी क्लोज टू टेक द क्लच फॉर द प्रीवियस राउंड हैज बीन टेकन डाउन क्वाइट टू अर्ली. 4 वर्सेस 4 का सिचुएशन अराउज हो चुका है. Yeah, a 4v4 situation, but I guess things can change in a second, in a blink of an eye. Everything will disappear, and I feel like Bad Love with knives out, he's trying to make a statement over here, but they have no idea that एक player कोने पे बैठा हुआ है. He finds him out. Smokia goes out. It's down to a 3v4 situation with a man advantage. Bad Love going in for an immediate trade again. Kohli takes Bad Love down. B2 takes Bad Love.
And here we are, Rio finally clutching it out for Weird Esports. That one defend round that we've been waiting for. Third round for Weird Esports, 7 for F5, FS Esports. We might see an 8 to 4 score, or at least 7 to 5 seems like a cool deal for me, Tanya, in the first half. Yeah, if definitely if they are able to reach a 7:5, it is going to be good for weird esports क्योंकि attacking side पर यहाँ पर निकालना easy रह सकता है because they have got 10 this time who does help them a lot in terms of getting the picks possible for the attacking side. यहाँ पर हम देखेंगे I God को क्या करना चाहते हैं, B side को commit करते हुए नजर आएंगे and one player is lurking on the entire different area. Maybe mid से CUS से push करने की कोशिश की जाएगी. Once again bad love यहाँ पर first pick easily निकाल लेंगे and this time B2 has been taken down. Wall break कर दिया जाएगा and finally Cactus को एक लॉकडाउन यूज करने का मौका मिल चुका है. Rio back को जाएंगे and यहाँ पर पैरानोया का यूज करेंगे, साथ में सीकर्स का यूज करिए गए. It is a total mess coming in off the ult and यहाँ पर Rio को showstopper take down करेगा. इससे पहले Smokia का expected spray was certainly enough. I God will take down Sesame as well. Bad love अभी भी स्नाइपर से पिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एक failed attempt रहा. It is now 3v4 affair coming in for having the advantage for the attackers, turning it to 2. Yeah, a 4v2 situation definitely in the favor of FC Sports. Unless Bad Love has some mysteries to make on, he gets one, is looking for more. Close, way too close. It's not going to be getting that, but Cactus is going to get the last 2 kills. 8 rounds for FC Sports and 3 for Weird. Weird, you have to get the last round in the first half. If you get this round 8-4, you might have a chance of getting the comeback in the second half, but you have huge risks involved in this, Tanya, because beginning with the defender side, they're already on the lower scoreboard, I guess. And even if they switch down to the attackers, it's going to be trouble for them to fight against FC Sports. It is going to be trouble. Trailblazer को भेजा गया and Cactus इस बार Storm को take down कर लेंगे and defenders immediately एक disadvantage में आ चुके हैं. Bad Love यहाँ पर अलग strategies को करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, leaving the mid and coming to A. यहाँ पर एक pick निकालने की पूरी force कोशिश की गई थी and successfully ली भी गई है. यहाँ पर I God को take down कर लिया गया, with that turning it to a 4v4 situation. Bad Love this time will not be able to get a pick with the sniper at all and Smokia will take him down, turning it to a 4v3, having man-to-man advantage. This is the last round in terms of attackers for Team FS Esports. Kohli एक sneakier approach रखने, flash का use किया गया and बाकी होगी सासवी के हाथ में. ये एक unpredictable move था, फिर भी यहाँ पर Smokia और एक pick निकालेंगे. Cactus second pick sniper से चलेंगे and यहाँ पर ult use किया गया है from Rio. क्या ये ultimate उन्हें help करेगा? 1 versus 3 situation है, spike plant कर दिया गया है. Will he be able to make the dream come true of going 1v3 full with very low HP? एक को down कर दिया गया है, paranoia का usage and यहाँ पर Cactus will pick the third pick with the sniper. Cactus की वजह से ये round काफी अच्छा गया for FS Esports. Yeah. Well, I guess FSC Sports is off to a good beginning again. 9-3 is the score, ladies and gentlemen, and we are on a killing spree for FSC Sports. And speaking about Weird Esports again, Bad Love on the top. I don't know, Bad Love consistently keeps changing his performance. In the first, he was on top. In the second map, the last map, he was on the bottom of the leaderboard, and now again he's on top of the leaderboard. And Smokey and Cactus, they are having the best vibe right now. You know, it necessarily doesn't have to be the duelists, but I'm very proud of how FSC Sports, did their attacking side, because being attackers and having only single duelist setup, Tanya, that is a huge risk, and it definitely did pay them off well as a reward. And speaking about Weird, they had a double sentinel setup in the defense side and they still couldn't manage to get more than 3 rounds.
And now getting the round is a priority for Weird Esports. Will they get an opportunity? Immediate site entry is seen on the site. A paint shell का यूज डेड भी करेंगे, वहां पर डैमेज भी डिलीवर होगा ऑन द कोर्ट. कैक्टस एक पिक निकालेंगे, आई गॉड 2 पिक्स निकालेंगे. कैक्टस का भी सेकंड पिक आ चुका है. इट इज ऑल कमिंग टू आई गॉड वर्सेस वन प्लेयर. लास्ट मैन रिमेनिंग विल नॉट रिमेन एनी फर्दर. सैसमी को टेक डाउन कोहली कर लेंगे. विद दैट दिस इज गोइंग टू बी द 10th round into the favors of FS Esports. And as the defenders, first round काफी smoothly, काफी flawlessly निकाल लिया गया है. Need a drop. Midasi, thanks. Yes, just as smooth as how Smokia got the ace in the first pistol round, remember? Definitely, Smokia has got the second ace for the day into the grand finals. Well, बहुत ही difficult battle निकाल रहे हैं. Smokia is the man who needs the appreciation over and over time. बार बार हम भी reminder देते रहते हैं कि we have got such a strong player. Mid से push किया जा रहा है towards site B. देखेंगे कि क्या होगा. Well, I got एक pick जरूर निकालेंगे, लेकिन bad luck. ज्यादा देर तक परमिशन नहीं देंगे. I got will be taken down. B2 will come in, take down Deadly, turning it to a 4v3 affair. 4 players having a win-to-win advantage for FS Esports. एक फ्लैश का यूज किया गया है, लेकिन एस्ट्रा के स्प्रेड आउट काफी ज्यादा वास्ट है. Yes. Well, फोर्स बाय राउंड है ये FS Esports का, तो ज़रूर इनका एग्रेशन रुकने नहीं वाला है. Weird Esports is already down to the last 3 players standing. एंड अगर अच्छा रोटेशन होगा, अच्छा बैक स्टप हो गया, तो दैन इट्स गोइंग टू बी अ फीस्ट फॉर FS Esports. Nevertheless, उनके पास ऑलरेडी more than 60% of mid का control आ चुका है. And Sasmi on the other hand, he is trying to get kills with Sheriff, which he managed to get 1. It's a 3v3 situation, and whoever gets the first pick from now on will have the advantage. And looks like it's going to be Bad Luck who gets 1. It's Mokia. He's going in for the trade towards Storm, and he definitely will get that trade. 30 seconds left. Weird Esports left in a 1v2 situation, and that is, I guess, Sasmi, if I'm not wrong, from Weird Esports, is trying to make a rotation on towards Heaven. B2 and Sky, both of them are over towards the Heaven. Sasmi gets healed, peeks out, dies, and that is 11th round for FS Esports. Ladies and gentlemen, 1 round away from getting the match point. एंड यहाँ पर बैटल ऑफ 3 हीलर्स देखने के लिए मिली थी. एक टीम में एक स्काई थी, एक सेज था, और ओपोनेंट में भी सिर्फ एक सेज बिछे हुए थे. वेल, नॉट फॉर सो लॉन्ग. अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रही है FS Esports. कॉन्कर ऑलमोस्ट कर चुकी है, बस 2 steps अवे टू गेट द लीड फॉर द बेस्ट ऑफ 5 विथ 2 points ऑल टुगेदर. देखेंगे किस तरीके से करेंगे आगे चल के भी. Weird Esports से हमें कम बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डिफेंडर्स साइड में काफ़ी ज़्यादा डीले कर दिया, जिसके चलते अटैकर्स में मौके कम मिल रहे हैं. काफ़ी अच्छा स्मोक देखने के लिए हमें मिल रहा है. दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ब्रिम, लेकिन यहाँ हमें रियो की ओर से देखने के लिए मिला है. एंड विद दैट स्मोक एक पिक भी निकाल लिया गया है. बैड लव ने भी एक पिक निकाला है, टर्निंग इट टू अ 5v3 अफेयर. इस बार Weird Esports एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, लेकिन साइट एंट्री अभी भी नहीं मिली है. Yes. साइड का एंट्री नहीं है, बट ज़रूर यहाँ पे फ्रैग गेम खेला जा रहा है. एक के बाद एक इमीडिएट फ्रैग्स ले रहे हैं. मूविंग फॉरवर्ड 3v5 सिचुएशन. FS Esports, आई डोंट थिंक ये राउंड उनके हाथ में जाने वाला है, बट स्मोकिया मैनेज कर रहे, एक के बाद एक पिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कितानिया, अगर FS Esports ये राउंड निकाल लिया, तो do you think Weird Esports, do they have any chance to make the comeback? वेल टू बी ऑनेस्ट, अभी भी कम बैक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है. स्टॉर्म अभी एक पिक ज़रूर निकालेंगे. ये राउंड निकालने की अपॉर्चुनिटी से बहुत ही क्लोज आ चुके हैं, बिकॉज 4v1 क्लच निकालना इट इज़ नेवर ईजी. कैक्टस अकेले बचे हुए हैं, एंड ही इज़ यूजिंग ऑप. आई थिंक ऑपरेटर को एक पिक निकाल के सेव करने पर ज़्यादा फोकस दिया जाएगा एंड नॉट वेस्ट द रिसोर्सेज अवेलेबल. अब देखेंगे क्या करेंगे कैक्टस. वेल सर्टनली ही इज ट्राइंग टू सेव हिज ऑफ, और यहाँ पर एक अलार्म बॉट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. दैट मीन्स his position can be predicted here, but nobody has immediately pushed in, rushed in. एक स्पाइक ब्लास्ट देखने के लिए मिलेगा, एंड एक ऑपरेटर बचते हुए जरूर नजर आएगी. Yes. ऑपरेटर तो सेव कर लिया है यार. FS Esports Cactus, he might carry down that operator and drop it down to
one of his teammates, where he can put it down to a more greater use. Need a drop. And speaking about weird esports, they did manage to get the fourth round on board. मैंने सोचा कि FSC Sports थोड़ा खत्म करने वाली थी. They were about to get the 12th round, but nope, we do have a delay coming in from weird esports. Thanks. Delay for sure, but victory is very very far. Let's see if they are able to cross the road so far away. फिर से एक बार मिड को यूज किया जा रहा है साइड बी में एंट्री लेने के लिए. स्लो और बी डाल दिया गया है. सैसमी एक अच्छा क्रॉसर सेटअप लेकर बैठे हुए जहां से एक पिक निकालना काफी ज्यादा इजी होगा. और वॉल प्लेसमेंट है बी साइड पर, तो इमीडिएट रश नहीं मिलने वाला है. तो एक पिंक शेल आएगा, सैसमी को डैमेज बिल्कुल भी नहीं देगा. एंड स्टिल कमिटमेंट यहीं पर नहीं रहेगा. बी को पुश किया जा रहा है. रोप रूम में क्रॉस हो चुका है एंड नाउ दे आर हेडिंग टुवर्ड्स ए साइड. यहाँ पर क्रॉसर का प्लेसमेंट कोहली का बहुत अच्छा, आमने सामने बैठे हुए हैं कैक्टस एंड कोहली. एंड अगर यहाँ से इमीडिएट पुश आता है, आई एम अफ्रेड कि डेस्टिनी में हो सकता है स्पाइक प्लांट जरूर होगा, लेकिन ये राउंड छीना जा सकता है. Well, I do definitely think the same. Hopefully ऐसे कुछ चीजें नहीं होंगे. Sasmi धीरे धीरे से बढ़ रहा है. If Sasmi gets that pick, it can be a great asset to the team. He can get a double kill, but Igor is standing way too close, and he will get that 30 headshot seconds done. left. Storm, he's gonna be going behind Igor. He gets that kill. A 4v3 situation. FSC Sports is still on a man disadvantage. Where Esports is trying to get the plan done. Bad Love is in heaven. It's an eco for FSC Sports, if I'm not wrong. He's trying to have a catch over towards the mid. Nobody knows that he's over here. B2 unfortunately gets taken down by Bad Love. And Cactus, on the other hand, he still has the operator in his hand. He's gonna put Bad Love back to the sleep. Gets taken down by Storm. Now it's the last man standing from FSC Sports. That is Smokia. Who wouldn't be... I don't think he'll be able to do much right now. वेल थर्ड पिक जरूर निकाला एंड राउंड भी निकाल लिया गया है. क्या वियर्ड ई-स्पोर्ट्स से कमबैक स्टोरी लिख रही है. द वे कैक्टस इज प्लेइंग विद द स्नाइपर एंड एक अच्छा ट्रेड भी लिया गया था कमिंग इन फ्रॉम कैक्टस, जहां पर बैड लव स्नीकियर अप्रोच रखकर एंट्री ले रहे थे. ही वाज एबल टू पिक द थर्ड किल. स्टॉर्म की ओर से भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है. बैड लव हाईएस्ट फ्रैगर जरूर रहेंगे. सैसमी की ओर से एक अच्छा टीम सपोर्ट है. एंड दिस पर्टिकुलर राउंड यहाँ पर शो स्टॉपर और ब्लेड स्टॉर्म मिक्स ऑफ टू अल्टीमेट्स देखने के लिए मिल सकता है. सारे प्लेयर्स साइड ए पर क्या कर रहे हैं फॉर द डिफेंडर साइड आई डोंट नो, क्योंकि मिड पुश ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है. स्मोक का एक बखूबी यूजेज. कोहली ओपोनेंट के स्मोक में अपने लिए एक स्पेस बनाकर बैठे हैं. नैनो स्टॉर्म का यूजेज व्हिच इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट मच. बूम बॉट डाल दिया गया है जिसके चलते कोहली को बैकफुट जाना पड़ गया है. वंस अगेन वी कैन क्लियरली सी सेम वॉल प्लेसमेंट का यूजेज है. लेट्स सी इफ इट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स और नो. Well, definitely looks like it's going to be some wonder happening right now. Well, not closely. उनके पास उनका अल्टीमेट भी है जेट के पास, so even if he loses this round, it's okay, but it will give away a match point for FSC Sports Tanya. And Cactus, on the other hand, he definitely did go for a quick rotation. He gets one, and there comes Kohli. He's gonna be caught both the players off guard, and Cactus immediately shutting Storm back to the coffin, and now it's all in the hands of Sesame in a 1v5 situation, which is impossible, seconds left. Tanya. Which is definitely impossible. This is not gonna be easy. Which I can declare very early that FSC Sports has gone for the match point right now. With 16 seconds and a dream to plant a spike by not holding a spike is equal to the round immediately 10 going into seconds the hands, except he might get a pick coming in. He wanted a melee finisher though, which will not be allowed, and Sesame is trying to put a wall. I really don't know what for, just saving the weapon for the next round, which will not be allowed by B2, who will be on Match heaven. point. And now let's see what happens next. Match point की ओर आ चुके हैं FSC Sports. मैच
5 पॉइंट के साथ-साथ बेस्ट ऑफ 5 का राउंड चल रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हम एक 2 एंड 1 की लीड देख लेंगे। क्या वो इतना ईज़ी होगा या नहीं? कैक्टस थोड़े से अग्रेसिव होते जा रहे हैं विथ एवरी राउंड पासिंग बाय एंड कंपेयरिंग टू प्रीवियस मैप टू नाउ एक कैक्टस का ग्रोथ दिख रहा है, कंफर्ट बढ़ते जा रहा है ऐसा लग रहा है। यस, कंफर्ट तो पता नहीं, विक्ट्री का जो प्राइड होता है वो तो बढ़ता जा रहा है एफएस स्पोर्ट्स में। एक राउंड के बाद एक राउंड जो कॉन्फिडेंस उन्होंने बिल्ड किया, काफी सही बिल्ड किया है तानिया। एंड दिस इज द लास्ट राउंड दैट एफएस स्पोर्ट्स हैज बीन वेटिंग फॉर टू मेक द कमबैक हैपन। Battle with the blades out will go out in the open. Unfortunately, gets taken down. Not every time, buddy. And there comes Cactus with a double kill. Is he looking for more? Definitely seems like but Storm is gonna take Kohli down. Cactus goes for the triple and now he's looking for the quad, but it's going to be Smokia. Is gonna change things out, gets the last kill, and here we are, ladies and gentlemen, with FSE Sports walking away with another map in the hands. Third map going into the favor for FS. What a match it has been. I'm so surprised by Weird Esports right now. I guess after all, Tanya's predictions are coming out to be true. स्टिल इट इज अ लॉन्ग स्टोरी टू बी रिटन। इट इज बेस्ट ऑफ 5। अभी तक सिर्फ 3 मैचेस हुए हैं, 2 और बाकी है। 2 जा चुके हैं इन द पॉकेट्स ऑफ एफएस स्पोर्ट्स एंड बहुत ही ईज के साथ जा चुके हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी मैचेस वो जीते हैं एक अच्छा स्कोर डिफरेंस बनाकर जीतते जा रहे हैं। एंड इफ यू कम बैक टू वीआर स्पोर्ट्स, शुरुआत बाइन के मैप में बहुत अच्छी की थी, डोमिनेंस विक्ट्री, क्लोज कॉल लेने की कोशिश की थी, सक्सेसफुली एक पॉइंट भी ले लिया था। लेकिन द स्वैप ऑफ प्लेयर्स एंड ऑल दैट, I think that is creating a little bit of settling period for every first to 2 to 3 rounds। क्योंकि पहले में हमने देखा गॉड 10 को खेलते, फिर स्टॉर्म की एंट्री हुई, फिर वापस चेंज हुआ प्लेयर। आई थिंक वो हर एक बार प्लेयर एक सेटलिंग पीरियड डिमांड करता है एंड दे आर नॉट इन द स्टेट ऑफ प्रोवाइडिंग सेटलिंग पीरियड एवरी सिंगल टाइम। बट कमिंग बैक टू कैक्टस's play, he is getting a good growth for his team every single time। अग्रेसिव अप्रोच के साथ बीइंग अ सेंटिनल खेलना, वी कैन से कि ठीक है आप साइट होल्ड कर सकते हो, बट ही इज गेटिंग सम गुड पिक्स। समटाइम्स हमने देखा 3 पिक्स मिल रही है विद द स्नाइपर्स। वेल, आप एक ऑफ एंगल खड़े हुए हो, वहां से एक पिक निकालना इजी होता है। एडवांटेज ऑफ हाइट ओपोनेंट के पास है, उसको आप टर्न करके सेकंड पिक भी निकाल लेते हो, इमीडिएटली रोटेशन लेके थर्ड पिक निकाल लेते हो। भले ही इज नॉट द हाईएस्ट फ्रैगर, बट ही इज वन ऑफ द बेस्ट सपोर्टिंग प्लेयर फॉर द टीम एंड टीम जीत रही है। कैक्टस का एक काफी अच्छा क्रेडिट जाता है इस पर। Yes. Well, that was the third map analysis, but I guess we have to speak more about Cactus, जिन्होंने हमको पहले 2 मैप से भी देख रहे थे, बट उनका जो परफॉर्मेंस था सडनली काफ़ी बढ़िया था थर्ड मैप में। ये मैप में जिस तरीके के किलजॉय सेटअप्स एंड किलजॉय का एग्रेसिव पुशेस मैंने देखा है कैक्टस से, काफ़ी बढ़िया गया था। एंड the entire point of putting Sasmi in a sentinel was actually not a good idea for weird esports, because एक प्लेयर को आप कॉन्स्टेंटली अगर ड्यूअलिस्ट और सेंटिनल एंड कंट्रोलर के बीच में इफ यू कीप रनिंग अराउंड, देन एक द प्लेयर, इट टेक्स अ टाइम फॉर अ प्लेयर टू अडेप्ट फ्रॉम अ मैप टू मैप. When the map change, even the sites change, so even in changing the agents wouldn't be a good idea. And Sasmi going on the stage, he couldn't put and play to his potential, Tanya, to be honest. ही डिड अंडरपरफॉर्म, वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट फॉर श्योर। हाईएस्ट ट्रैगर रहकर भी अगर टीम नहीं जीत पा रही है, कुछ ना कुछ टीम के अंदर कमी नजर आती है। लेट्स सी वो क्या करना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। स्विच करना चाह रहे हैं, हाईएस्ट ट्रैगर बनकर अपनी टीम को जिताने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही टाइम आगे जाता जाएगा मौके कम होते जाएंगे। बेस्ट ऑफ 5 में से यहाँ पर 3 मैचेस ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, 1 पॉइंट की लीड पर आ चुकी है एफ एस ई स्पोर्ट्स। एंड यहाँ पर अगर एफ एस ई स्पोर्ट्स जीत जाती है, वी कैन कम टू द क्लोजर ऑफ द टूर्नामेंट एंड डिक्लेयर द विनर। तो अब यहाँ पर डू एंड डाई के प्रेशर में वीआर स्पोर्ट्स आ चुकी है। एंड वी वेरी वेल नो तन्वी, जब वीआर स्पोर्ट्स एक प्रेशर पॉइंट पर आ जाती है, दे पुल द ट्रिगर सो फास्ट के यहाँ पर हम एक एस भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स होप एक प्रेशर जो है पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए, अपने लिए सेकेंड पॉइंट की लीड लाने की कोशिश में किया जाए। आर दे गोइंग टू गो अहेड और नो, दैट टाइम इज डेफिनेटली गोइंग टू शो अस। बट कमिंग बैक टू द मैप ऑफ स्प्लिट, एक बहुत ही
शानदार शानदार परफॉर्मेंस फिर से एक बार एफएसई स्पोर्ट्स के लिए, इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग साइड, इन टर्म्स ऑफ डिफेंडिंग साइड, दोनों ही एंगल में काफी अच्छा परफॉर्म कर कर गए हैं. लेट्स हेड टूवर्ड्स द मैप वाइज scoreboard for the third map of split for the grand finals of SS ROG Showdown Series 2021. Well, looks like as I spoke of the devil, here he comes. It's going to be Cactus on top of the leaderboard with 21 kills. The MVP of this current match. What a performance! 21 kills, 8 deaths, and 1 assist. 4 first bloods, which completely turns him unique compared to any of his other players. Smokia, Kohli, iGod, and B2, all 4 of them have played very good, and having a single dually setup and still managing to win it against Weird Esports. Now that's a huge bow down from my side. And speaking about Weird Esports, Bad Love, good performance, 17 kills, 4 first bloods, followed by Storm with 2 first bloods. But Deadly, he couldn't perform at all. The one match he took a break for, he couldn't come back at all. 6 kills only for Deadly, playing as Raze and playing as a duelist. डेफिनेटली एक कमी देखने के लिए मिली है फ्रॉम रेस फ्रॉम द ड्यूलिस्ट ऑफ द टीम वे यू एक्सपेक्ट मच मोर कमिंग इन एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कैक्टस टू बी द हाईएस्ट फ्रैगर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट देयर मे बी आई मिस द स्कोर और समथिंग आई वाज स्टिल एंटिसिपेटिंग स्मोकिया टू बी स्मोकिया को मैं नंबर 1 पर एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन कैक्टस की जो परफॉर्मेंस थी वो आईज को प्रॉपर्ली स्टक करवा रहे थे अपने ऊपर द वे ही वाज टेकिंग सम किल्स द वे ही वाज गोइंग अहेड and हर बार aggressive and 4 first picks also mentions it all. Overall on the attacking side हमने देखा कि 9 plants हुए थे for FSE esports with 0 defusals and on the other hand हमने देखा weird esports के लिए सिर्फ 2 plants मिले थे with 1 defusal coming in very close. Map wise PvP अगर डिस्कस करते हैं तो cactus this time will come in right in front of others of our screen against bad love. 21 kills as a sentinel and 8 ही डेथ लिए थे तो आई वुड से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था 2.62 के 62 की केडी रेशियो मेंटेन कर चले थे पर राउंड एंड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कमिंग इन फ्रॉम कैक्टस. Yes, outstanding and unexpected. He was like the hidden gem of the team, and now he came out in the light and he completely awestruck each and every one of us. And I want Cactus to maintain the same consistency even in the fourth map, which is going to be Haven. And Haven is going to be a tough one on for FSC Sports because Weird Esports, it's one of their best maps. And so far in this entire tournament, it's very less chances that they have lost a match in the map of Haven against their opponents. And here we have the MVP Cactus, 21 kills, 8 deaths, 1 assist, and 2.62 KD. एब्सोल्युटली एक अच्छा प्रदर्शन कैक्टस की ओर से फ्रॉम एफएस स्पोर्ट्स एंड एफएस स्पोर्ट्स नीड्स टू मेक श्योर दे कंटिन्यू व्हाट दे आर डूइंग दे आर ऑन द स्ट्रीक विन. एक लॉस के बाद एक अच्छा सेटअप पुट कर रहे हैं 1 by 1 राउंड जीतते जा रहे हैं एंड इफ दे विन द टूर्नामेंट दे आर गोइंग टू विन विथ द हैट्रिक. लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होने वाला है कि क्या यहाँ पर वियर्ड स्पोर्ट्स इतना हैट्रिक विन दे भी देगी इन द मैप ऑफ हेवन. डिफेंडर्स साइड काफी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर अगर आप 5 प्लेयर्स अग्रेसिव रश दे देते हो तो इफ यू आर ऑन द डिफेंडर साइड आपको स्प्लिट खेलना पड़ेगा. एज ऑलवेज हम हमेशा देखते हैं कि बी साइड पर सेज वॉल कर देगी, स्प्लिट ऑफ 2-2 देखने के लिए मिलेगा बट एक रश यहाँ पर हर चीज डिटीरॉइट कर देगी. तो एजेंट सिलेक्शन फिर से एक बार हेवन के मैप में काफी ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है एंड आई थिंक एफएन स्पोर्ट्स एक मोमेंटम पिक कर चुकी है, कॉन्फिडेंस बूस्टर मोड ऑन में भी आ चुके हैं एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू स्टॉप देम बिकॉज अगर आप नाइट्रो बूस्ट पर होते हो तो नथिंग कैन स्टॉप यू. Yes, nothing can stop him from going on top right now. He is having the best possible time and the best possible aim right now. And before we go down to the fourth map, which is going to tell us, is it going to be a victory for FSE Sports or else is it going to be the deciders map, Breeze? I mean, it's been such a long time I actually see Breeze in the
competitive games and finals of the tournament. Seriously, it's very rare that we get to see Breeze in the final. So I'm definitely expecting a Breeze map coming in. But before we switch on to the map number 4, that is Haven, me and Tanya are going to be taking a short break and we'll meet you right back here at the same time, guys. थोड़ा मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए प्लांट मिलने के लिए, और यहाँ पर बाकी का तो पेशेंस का भी यूज कर दिया गया है और काफी अच्छी तरीके से बैड लव। या बट यहाँ पे आपने नोटिस किया 2 प्लेयर यहाँ अंदर है. They might have a chance against VALORANT Esports because they brought down a 4-5 round to a 1v2 situation. अभी हुक्का देखते हुए and I guess deadly spot करते हैं and I God will go down. आ जाते हैं and immediately बैड लव एक नॉक निकाल लेंगे, सेस्मी ले लेंगे and बैड लव। Connie. It looks like VALORANT Esports is definitely having a good beginning and through the smoke, Deadly gives a deadly shot and Kohli will go down. Of patience दिखाया जा रहा है लॉन्ग पर से एंट्री लेने की कोशिश, बट यहाँ पर एक शॉट एज अ स्काई कुछ करने का मौका नहीं दे रहे। बड़ा खेल सकते हैं, मल्टीपल किल्स मिलने का चांस है, नाइफ पे जाएंगे कि नहीं? नहीं, बैड लव. There you go. Bad luck is doing very well. He's gonna get himself into अलग ही scene चल रहा है. There's one player over towards the Charles who's trying to make all the what? Did he just hit through the wall and get that shot confirmed? But bad love was very committed कि A side पर एंट्री हम अलाउ नहीं करेंगे and Raymond Deadly यहाँ पे हुक्का के थ्रू उसको ओपन करते हुए जा रहे, एक किल मिलता है, immediately dash है. Raymond revive दे देंगे Kohli को। शो स्टॉपर एक बार रेडी हो चुका है काफी अच्छी तरीके से। शो स्टॉपर Oh my God. There you go. No. ऑलरेडी होते हुए नजर आ रहा है, एंड आई थिंक ऑलमोस्ट राउंड इज गॉन एंड वेल इट इज डेफिनेटली द ओपोनेंट दिस इज व्हाट ही हैज टू डू। एक रॉन्ग ऑर्बिटल स्ट्राइक का यूज देखने के लिए मिला है एंड फॉर पी टू सेव दिस राउंड। Absolutely. No, eagerly waiting for Deadly to push down right now, and Deadly ka position to reveal ho chuka. Smoke is going in for a wide peek and he get the enemy trapped in. And there you go, that's a triple kill with leaving FSC Sports final player in the map. He gets a 1, he gets a double kill and Smokey. Little does he know that he's towards the hookah and Battler will finish things. What a quick rotation. TP का यूज कर लिया गया है, Tasmi यहाँ पर वेट कर रहे हैं, Tasmi will be able to take down 1 second and third and it was a total delay जरूर किया गया है to get the immediate pick that was completely required. Smokey takes 1 kill, some missing जरूर है। Yes, looks like we are E is definitely aggressive Sage. Raymond gets 1, Cody gets 1, and now they're gonna make their way over towards the hookah. Deadly gets 1. Now he's looking forward to get to the. कर चुके, लेकिन bad love always, man. This is the man who is saving the team from anything. And Rio is ready with the crosshair all set up. 14 seconds, and it's a clutch. Kohli को already position मिल चुका है, and everybody is going to walk out in from the hookah. Just like man, both of the players from the 5 is gonna happen. I don't think FSC को चांस जरूर की गई थी। फिर से एक बार इक्वलाइज्ड बैटल चल रही है, ट्रेड्स परफेक्टली ले जा रहे हैं, लेकिन
Ouch, this was sad, very close call. अकेले बैड लव बच जाएंगे लेकिन boxes, he did take a lot of damage. Spike already tap हो चुका है यहाँ पे and डायरेक्शन में जाना सेफ है. Yikes. डायरेक्शन का तो फाइन है, खुद ही मर चुके हैं. MF Squad immediately responding to smoke. 8 seconds left to get the spike. हंटर फ्यूरी की भी एंट्री आ चुकी है. डेडली विल बी सेव्ड और नो वन स्ट्राइक भी एक बार देखने के लिए मिल रहा है एंड एसी के साथ रेडी हुआ है. कॉली यहाँ पर मॉली यूज करने की कोशिश कर रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली डैमेज बिल्कुल भी डिलीवर कुछ भी कर ले, टाइम हाथ से जा रहा है. दे इट इज सिचुएशन नाउ और नेवर. यहाँ से अच्छी तरीके से नाउ और नेवर को बिल्कुल पर बूम बॉट भी छोड़ा, इमीडिएटली जाएगा. शो स्टॉपर एक कंटिन्यूटी में रेडी है एंड स्मोक या लास्ट में यूज करने के फोकस किया जाता है, बट यह और पिक निकालने में फोकस किया जा रहा है. यहाँ पर ऑलरेडी ए बॉम्ब सेट पे प्लांट हो चुका है. इट मींस अभी ये रोटेशन पे जरूर आएंगे, बट डिफेंडर्स एडवांटेज पे है. बट यहाँ पे एक पर्सन है MF Squad जो रोटेशन पे निकल रहे थे. और सिचुएशन विच मेरली सीम्स पॉसिबल. यहाँ पे शॉक डॉट के इस्तेमाल आते हुए like Deadly is gonna be pushing over towards the U-Halls while Raymond is still in the U-Hall. Smokia gets one dead. Anticipating through the shards. फिर से एक बार शो स्टॉपर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर शो स्टॉपर ऊपर से बैड लव रेमन को डाउन कर देंगे. स्मोकिया को डाउन कर देंगे. आई गॉट गया है टर्निंग इट टू अ 4v3 मैन टू मैन एडवांटेज में आ चुके हैं VALORANT Esports. गॉड इज एवर कॉली को डाउन कर देंगे, टर्निंग इट टू अ 1v4 एंड आई थिंक VALORANT Esports have We still have hope left. We still have headshot left in a 1 versus 3. But I guess काफी नोया का एक शानदार यूज. उसके बावजूद यहाँ पर कैक्टस एक पिक ले लेंगे लेकिन ही भी यहाँ पिक ले लेंगे लेकिन ही भी टेकन डाउन अल्टीमेटली. गॉड की भी एंट्री हो चुकी है थ्रू द मार्केट. एक्सपोजिव इतना ज्यादा रिवीलिंग खेलकर कोई एडवांटेज नहीं होगा. स्मोकिया की एक अच्छी प्लेसमेंट एंड यहाँ पर टोटल एक स्प्रे में 2 प्लेयर्स को ले लिया एंड गोस्ट के यूजेज और एक को ले लिया गोस्ट के. अब देखेंगे VALORANT Esports are in the lead by 1 point for best of 5 and after चुका है. Now it is all up to last man standing. की अच्छी पोजीशनिंग आ चुकी है. He will not allow the mid rotation लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जाएगा बट नहीं चलती है. रियो ने टेक डाउन कर देंगे टर्निंग इट टू अ 4v4 अफेयर. कैक्टस यहाँ पर प्लांट से एंड यहाँ पर एक स्वॉर्म ग्रेनेड की यूजेज गोली आ चुके हैं अंदर. एक निकाल लेंगे. साइड एंट्री अलाउ बिल्कुल नहीं हो रही. फ्लैश का यूजेज साथ में जा चुके हैं. स्पाइक एज ऑफ नाउ एग्जैक्ट पोजीशन वाज रिवील्ड. वॉल बैंक के चलते यहाँ पर एक ब्लाइंड का यूजेज एंड रन इट बैक का यूज कर लिया गया है. अल्ट का एक अच्छा यूज हमें देखने के लिए for him to clutch this round against Smokia. One little peek can get the rotations after committing to a site which is exactly absolutely no for the map or for the map of SM. and I got certainly is taking for मान मचा दिया उन्होंने. 2 kills ले लिया ऑपरेटर के साथ. काफी aggressive peek था and he's one. But unfortunately it's going to be Rio जो close angle पे बैठा है. आईकॉड को टेक डाउन कर देंगे. स्मोकल स्टॉर्म के हाथ में था शेरिफ एंड वो अभी बीमेन की तरह जा रहे हैं एंड उनका हेड प्ले स्मोकिया की ओर से एज अ एस्ट्रा एज अ कंट्रोलर देखने के लिए मिल रहा है. हेडशॉट यहाँ पर एक बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है कि एफ साइड विल नॉट टुवर्ड्स सासमी. इनके पास ब्लेड्स आउट भी है. ये अपने ब्लेड्स आउट के साथ काफी चढ़े विद द ऑफ फॉर शॉट एंड ड्रोन को डैमेज कर दिया है. इमीडिएट डैश का यूज करके हेडशॉट को पिक कर देंगे. हेडशॉट इमीडिएटली बैड लक को ट्रेड कर देंगे एंड यहाँ पर नेबुला का एक अच्छा यूज. Yes, but looks like Sheriff's too coming to advantage sometimes and लव एक प्रोसेस सेट करके बैठे हुए टू डिसअलाउ एंड ये चलेगा. yes, काफी warm welcome है. but VALORANT Esports are still in the लॉकडाउन काफी स्ट्रॉन्ग हिट करने वाली है डिफेंडर्स पे. MF Squad gets one. MF Squad double player with an Odin in his hand. That is Mr. Kohli. And Kohli का सिर दिख चुका है. The spray will be very tricky over here. Sasmi is trying to be as sneaky as he could be. And I got the position reveal हो चुका है. He's going to be going into the collateral. Headshot going to be going into the collateral. Headshot. It's a triple. But it's one through the smoke. Out. It is going to be a dream come true. और यहाँ पर रिकॉर्ड डाला गया है. प्लेसमेंट आ चुकी है. I got position has been revealed away. Another recon. Another shot which is going to do a lot of damage. Love. But now I think he's the last resort. We are expecting Rio in a 1v. Did one. Yes.
looks like Rio is इस तरीके से कंफर्मेशन आएगा और रिवील यूज किया गया. दिस रिवील इज नॉट गोइंग टू वर्क बट द टीम कम थ्रू मच रिक्वायर्ड. 1v2 स्पाइक को डिफ्यूज करने का मौका सीरिया दे रहे हैं. आई डोंट नो व्हाट वाज द It's just one more match point coming in. A lot of bullets have been poured through over there. And there comes the shock dart. Rio gets one. He's gonna be very much possible. I'm of course sitting very close. Little does he know. No. And there you go. Sasmi gets one. Bad luck gets one. It's the last play. Basic factor. This position has already been given away. He's down to 10 HP. Nothing. But player that is the race which will go down. Well, lucky to sass me over there. I got if you peek, you'll be in big trouble, and there you go. Trouble, and there you go. He goes down as well. A 1v2 situation right now. The sage is waiting, and खेले उतना Got him. Let's go. Well, with the track of time, me and Tanya are back with the fourth map of Asus Rog Showdown Series Grand Finale happening between Weird Esports versus FSE Sports. We successfully finished the first three maps, where the first map it went into the favor of Weird Esports, and the next two went into the favor of FSE Sports, which is completely unexpected. And right now we are at the fourth map, and the agent pick has already begun. And what are your thoughts, Tanya, on the agent pick map of Haven? Well, talking about thoughts, we already have it on our screens. For the defenders side, we can see that two duelists coming in, one initiator, one controller, and one sentinel. Well, for the heaven, the picks are just about right, and rest of the care will be taken by Kohli for sure. The way he is going ahead with Astra once again. Talking about the attacker side, what do you think? What will Deadly 10 go with the marker? Because he was Jet by far, and now Jet is being used by Bad Love. Yes. I mean, I got speaking out Phoenix. Okay, it's my first time watching him play Phoenix and Cactus, going all the way from Sentinel to Jet. What exactly are we looking at over here? B2 going in for Cypher, which was quite unexpected. I was more like expecting a good setup. And speaking about Weird Esports, they have Phoenix, Jet, no healer, a smoker, Cypher coming in from both of the teams, and the Sova as well. Okay, the only difference we see is the Astra right now.
both of the teams have picked up Phoenix, and I guess that it's going to be a little advantage for Sasme because Sasme plays Phoenix as main character, and I've only seen I got play Jet, and Cactus has picked up Jet this time. Now, on the defenders side, how are they going to go ahead for FS Esports? Ladies and gentlemen, ये ग्रैंड फाइनल है एसएस आरओजी शोडाउन सीरीज 2021 के वैलोरेंट का 2 की लीड बना चुका है एफएस Esports। ये एक विनिंग स्ट्रीक क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है। ऑन द अटैकर साइड यहाँ पर हम वियर्ड Esports को देखेंगे एंड वियर्ड Esports यहाँ पर सी को फोकस देते हुए एक स्टैक पुश देने की कोशिश करेंगे। एंट्री काफ़ी इजी मिल सकती है क्योंकि सिर्फ पिस्टल राउंड है, ज़्यादा यूटिलिटीज देखने के लिए नहीं मिलेगी। और साइफर को लेने का एडवांटेज एक और होने वाला है कि बैक स्टेप गराज पुश से यहाँ पर कोई भी नहीं ले पाएंगे। डेडली ने अपना स्पाई कैम्प सेट कर दिया है, पुश की कोशिश शुरू की जा चुकी है। आई गॉड भी रोटेशन लेना शुरू कर चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं कि सी पर फोर्थ आ रहा है। कोहली यहाँ पर फर्स्ट टेक डाउन करेंगे सेसमी को, और यहाँ पर साइड क्लियरेंस मिल चुका है और सेकेंड पिक भी लिया जा चुका है। स्पाइक इमीडिएटली प्लांट होगा, 3 वर्सेस 3 की सिचुएशन बन चुकी है। Yes. Well, Cypher traps can be very deadly sometimes, and Cypher cages, they do put down a lot of advantage. With the plant going down, Weird Esports look like they started on a bright note. Starting off with the attack is in Deadly 10. He's definitely not gonna let FS Esports walk into the crosshairs. Cactus gets one. He has a very good gun. That was a frenzy in his hand. Weird Deadly takes Cactus down as well. Deadly is down to 16 HP. Smoke gets one. He should know where exactly the last person is standing down. A 1v1 situation, spots him out. 69 HP. There you go. MF God will get the first round for Weird Esports. FS Esports unfortunately losing it. Well, the pistol round goes into the favor of the attackers. I think finally Weird Esports got a chance to start off with the attackers in the map of Haven, and it's one of the strongest maps. So let's see, having a strongest map, having a strong team and a good set of players and the perfect agent selection, is it going to be the equalizer map which is going to turn it to a score of 2-2? इसका मतलब हम ब्रीज की आशा रख सकते हैं कि आगे चल के हमें ब्रीज भी देखने को मिल सकता है। बैड लव इज ट्राइंग टू एंटर द साइट एंड यहाँ पर एक अच्छा क्लाउड बर्स्ट का यूजेज कैक्टस अपने आप को रिवील कर चुके थे, जिसका बैड लव ने पूरे का पूरा एडवांटेज उठाया है और यहाँ पर अपने लिए फर्स्ट पिक ले लिया है। साइट में एंट्री फिर से एक बार लेने की पूरी कोशिश की जरूर गई थी, लेकिन इमीडिएट रश करने के बदले व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज गोइंग फॉर द स्प्लिट एंड स्प्लिट होकर सी को कमिट करने की कोशिश। एक पैरानोया का यूजेज, कोहली आमने सामने आ चुके थे एमएफ गॉड के और एमएफ गॉड ने कोहली को टेक डाउन कर दिया है, टर्निंग इट टू अ 3v5 मैन टू मैन एडवांटेज है। साइड कंट्रोल है, स्पाइक जरूर प्लांट होगा, इसका मतलब यहाँ पर हम 2-0 का स्कोर एंटिसिपेट कर सकते हैं। 2-0. Well, it's a forced buy round for Weird Esports, so why not? And all the 3 players are rotating from the B-bomb side. Nokia, the second he peaks, second he goes down, and the last person is able to miss the CT. Lot of shock darts, and an entire rush was coming on the face of iGod. And there you go, Weird Esports getting the second round, just as Tanya said. What अग्रेसिव प्ले। Weird Esports प्रेशर के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, एंड आई थिंक यहाँ पर ये प्रेशर प्ले जो है एक विक्ट्री की और आगे जा सकता है। हेवन्स का यही हेवन मैप का यही इशू होता है, जब एक फुल रश आ जाता है तो डिफेंडर्स कैन नॉट कंट्रोल द सिचुएशन, क्योंकि जब वो रोटेट करके आते हैं साइड तक तब तक दे ऑलरेडी टेंड टू लूज दैट प्लेयर, एंड ये स्ट्रैटेजी बखूबी जानते हैं Weird Esports के प्लेयर्स और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। With that, well, Weird Esports is taking the lead. Bad Love, as always, now no more a shock. It is as expected. Bad Love turning himself into the top fragger with a total of 5 kills for himself and 4 kills for himself and a good team support. Deadly B यहाँ पर 3 kills निकाल चुके हैं। MFCOD यहाँ पर एक राउंड जिता चुके हैं and I think A को कमिट करने की कोशिश की जा रही है। Yeah. वेल ये तो फुल बाय राउंड है, तो Weird Esports ज़रूर उनका बोनस राउंड पे वो फोर्स बाय नहीं करना चाहेंगे। सैसमी शेरिफ के साथ भी कमाल करते हुए अभी उन्होंने स्पेक्टर उठा लिया, शॉक डॉट्स की बारिश होते हुए ड्रोन चल रहा है ए लॉन्ग की तरह। सैसमी गॉट स्पॉटेड एंड सो डज द साइफर। 19 HP पे बचे हुए हैं यहाँ पे Smokia, and B2 is trying to aggressively get picks over towards the A long. One man down from both of the teams.
वेल देखेंगे अगर वियर्ड स्पोर्ट्स ये राउंड भी जीत लेती तो कुछ होगा, अच्छा होगा, बट एफएससी स्पोर्ट्स काफी बड़ी ट्रबल में होने वाली है. बट एफएससी स्पोर्ट्स इफ दे गेट दिस राउंड then they will have the economy to buy in the next round as well. 4 वर्सेस 4, नो हीलर एट ऑल एंड रियो बहुत ही लो एचपी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. लेट्स सी रियो क्या यहाँ पर करेंगे. एंड ट्रैप फायर को स्पॉट कर लिया गया है. सैसमी बी साइड में एंट्री करने से हेजिटेंट नजर आ रहे हैं. एक्सपेक्टिंग समबडी हियर. कोहली की एक अच्छी गराज विंडो प्लेसमेंट है. फिनिक्स का फ्लैश मिस आउट होते हुए कोई भी यहाँ पर फ्लैश नहीं हुआ है. इमीडिएट स्मोकिया भी यहाँ पर आ चुके हैं. स्मोकिया रियो को डाउन कर, कोहली रियो को डाउन करेंगे. इमीडिएटली मल्टीपल ट्रेड्स देखने को मिलेंगे. टर्निंग इनटू अ 2-2. फिर से एक बार एम्प्टी साइड मिल गया है. स्पाइक प्लांट हो चुका है. ओमन एचपी काफी कम है. स्पाइक कैम से टैग कर लिया गया था गॉड को, जिसके चलते थोड़ा सा डिले है एंट्री में. एंड यहाँ पर गॉड अच्छा खासा कवर बना रहे हैं. न्यूरल थ्रेट का यूज करने के लिए इतना प्रायोरिटी नहीं रखता था, बट स्टिल दे वांट टू मेक श्योर दैट दे डोंट लूज दिस राउंड. Yeah. Well, things definitely are not looking in the favor of FSE Sports. And there you go. That one last man over towards the long. It was a full buy round, and Weird Esports complete sheer domination, taking FSE Sports down. And here we are. Weird Esports ने तीसरा राउंड भी ले लिया, जिसका मतलब होता है कि FSE Sports अभी इको पे जाने वाली है. तानिया इको पे जाने वाली है. उसी के साथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 4-0 का स्कोर हो सकता है. वेल 50 राउंड्स भी निकालते हुए हमने देखा हुआ है, तो देखेंगे अभी एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी प्ले रहेगा. फॉर नाउ काफी क्लियर कट एजेंडा सेट करा हुआ है. ऑल दे वांट टू डू इज जस्ट गो फॉर सी पुश, गेट द साइट एंट्री एंड मेक श्योर दैट दे गेट एवरीथिंग पॉसिबल. कॉली फिर से एक बार सी साइड पर नजर आएंगे. नेबुला कितनी ज्यादा देर तक होल्ड करेगा वो देखेंगे. एंड यहाँ पर इमीडिएट क्लाउड स्मोक में दे डोंट नो वेयर एग्जैक्टली कोहली इज. यहाँ पर एक फर्स्ट पिक निकालने का मौका मिल जरूर सकता था, लेकिन एमएफ गॉड उनके हाथों से मौका छीन लेंगे. एंड यहाँ पर मॉली का यूजेज सैसमी की ओर से गराज पुश को डिले कर दिया गया है. ऑन द कोर्स स्पाइक भी प्लांट कर लिया गया है. विद दैट रियो बैक स्टैप पर फोकस ले रहे हैं. बिल्कुल सही एक पिक निकाला है शॉक डार्ट से, और एक डाउन निकालने की कोशिश कर रहे हैं. एचपी को लो कर दिया है और इजी किल भी ले लिया है. टर्निंग इट टू अ 4v2 अफेयर. Last player standing. Yes. Well, things are definitely looking in the favor of Weird Esports, and I guess it's not going to stop anytime soon. The domination, the entire aggression. Weird Esports, they're back at the track right now, and I think they are off to something big this time. What big? How big? And how strong? That is going to be the question throughout. How nice play is coming in from Weird Esports. The way they were totally shaken, वो shake करके अपने awaken कर दिया गया है. And ये awaken stage में काफी ज़्यादा difficulty बनाते नजर आ रहे हैं FSE Sports के लिए. And यहाँ पर MF God ने एक अच्छा alt utility use कर लिया है. And यहाँ पर अच्छा खासा rotation लेकर आ चुके हैं, जिसके चलते I God को take down कर लिया गया है. मॉली का perfect यूसेज, लेकिन कैक्टस वहां पर रेडी थे स्नाइपर लेकर खड़े हुए थे. एमवीपी ऑफ द मैप प्रीवियसली, लेकिन इस बार क्या फिर से एमवीपी बन पाएंगे? एमएफ गॉड पैरानोया का यूज करेंगे. सैसमी यहाँ पर एक पिक ले लेंगे. एंड नाउ ही डजंट हैव एनी मॉली टू हील, बट ब्लेज जरूर है. Yes. Well, काफी एग्रेसिव शॉट स्टार है सिटी की तरह, बट 5 एचपी पे बैठे हुए हैं. नीचे फिनिक्स हमारे सैसमी, उनके पास वॉल है बट उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है. कैक्टस एक किल लेते हुए कोहली बैड लव को टेक डाउन कर दिया. 1v1 सिचुएशन. लास्ट प्लेयर 8 शॉट पे बैठे हुए हैं. उनके पास रिकॉन डालते हुए आई थिंक हिज पोजीशन विल बी गिवन अवे, बट कोहली इज गोइंग इन फॉर द डिफ्यूज. हाफ डिफ्यूज हो चुका है, बट एट द लास्ट सेकंड रियो कम्स इनटू द प्ले, गेट्स द 5th राउंड, एंड हियर वी आर. Weird Esports completely surprising me. I mean, they are, I don't know what to say at this point, Tanya. Like, the last time I saw them play this good was in the first map, which was like 2 maps ago. And now we are in the 4th map. All of a sudden, they are on the top. And look at the streak.
5 नॉन स्टॉप विक्ट्रीज वो आज के पूरे ग्रैंड फाइनल्स में एक बार भी नहीं हुआ है। एंड अगर यही चलता रहा तो आई थिंक यहाँ पर हमें टाई देखने को मिल सकती है एंड देन द डिसाइडिंग मैच भी देखने को मिल सकता है। रियो मिड के थ्रू ड्रोन को क्रॉस ओवर करेंगे एंड यहाँ पर ज्यादा इंटेल मिलेगा या नहीं वो बिल्कुल टाइम बताएगा, लेकिन क्या मिल गया है वो ट्रैप फायर को नोटिस एंड बैड लव उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। 1v2 सिचुएशन एंड वंस अगेन रिकॉन बीइंग यूज्ड हियर, नोबडी गेट्स स्पॉटेड बट व्हाट दे डिसाइड इज जस्ट टू टेक द रोटेशन एंड ऑन द अदर हैंड ब्लेड स्टॉर्म का यूज करने की कोशिश करते हुए कैक्टस को स्पॉट करके रियो उन्हें इमीडिएटली टेक डाउन कर देंगे। एक अच्छा शॉक डार्ट का यूजेज यहाँ पर अगर कोई भी है तो उन्हें बैक पुश दे देंगे। विद दैट डैमेज डिलीवर नहीं हुआ है एंड कमिटिंग टुवर्ड्स साइड है। एक पिक जरूर रियो निकालेंगे, अब 45 एचपी है। हंटर्स फ्यूरी रेडी है लेकिन यूजुअली यू यूज एट पोस्ट प्लांट, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जरूरत है यूज करने की बिकॉज आउट नंबर हो चुके हैं टीम यहाँ पर एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू नॉट गिव देम एनी रिवॉर्ड्स, एटलीस्ट नॉट फ्रॉम व्हाट आई One सेड। enemy remaining. Well, looks like things are definitely looking difficult for FSC Esports. But अगर ये राउंड उनके हाथ में आ पाए तो अच्छा होता था. But I guess that's not happening. Safa goes down, 6th round on board. Well. Weird Esports. ये 10 मिनट की ब्रेक में शायद उन्होंने अपना एनर्जी बढ़ा लिया हो. I don't know what kind of mantras did they talk to each other, what kind of practices did they did, but they're looking something very different. Like I don't recall Weird Esports in the last 2 games, but all of a sudden they are playing very well. Just not very well. They are showing the excellency by far into the semi-finals as well as grand finals. 6-0 का स्कोर हमने नहीं देखा है coming up from Weird Esports and Hunter Fury का एक early usage स्मोकिया की ओर से wastage of ultimate मुझे लग रहा है and I don't know what for did he use. Flash से side entry की कोशिश and immediately cloudburst का use करके आ चुके हैं, लेकिन कोहली इस बार इतना easy नहीं होने देंगे and आ चुका रियो का Hunter Fury जहाँ पर कोहली को टेक डाउन कर लिया गया. The man who just took 3 picks for the team and Rio यहाँ पर कैक्टस को भी टेक डाउन कर देंगे. This might be the round जो आ सकता है. First ever round for FSC Sports of the map of SN. केज डाला गया और स्पाइक पिक करने का opportunity नहीं मिला and it is all up to 1v3. Now no more. B2 takes him down as well, turning the first round into the map of SN and turning the score to 1-6. Still a good scenario for Weird Esports. Yes. Well, तान्या आपको क्या लगता है कि इन्होंने ब्रेक में क्या खाया होगा Weird Esports ने? Weird Esports ने क्या खाया क्या नहीं खाया वो नहीं पता, बट प्रेशर जोर से खा लिया है और वो प्रेशर से स्प्रिंग को जितना ज्यादा प्रेशराइज करते हैं उतनी स्पीड से बाउंस अप होता है, वही नजर आ रहा है. Weird Esports यहाँ पर स्प्रिंग के स्पीड में पुश देते हुए एक अग्रेसिव अप्रोच रखकर 6-1 के स्कोर पर आ चुके हैं. फर्स्ट राउंड जरूर आया है यहाँ पर, लेकिन दैट इज डेफिनेटली नॉट सफिशिएंट इनफ. एक फ्लैश एंट्री करने की कोशिश जरूर की गई थी बट थैंक्स टू ट्रैप फायर एंड द नेबुला ऑल टुगेदर जहाँ पर कोहली सेसमी को टेक डाउन कर देंगे, टर्निंग इनटू एडवांटेज. आउट नंबर करने की कोशिश की गई है. कैक्टस और फायर वंस अगेन टेकिंग डाउन वन फॉलोड बाय द अदर. नाउ द थर्ड एज वेल ऑन द कोर्स. आई गॉड को टेक डाउन किया गया है बट स्टिल अब रियो आउट नंबर हो चुके हैं. कितना पिक ले सकेंगे 1v4 में? एक को ले चुके हैं एंड हाउ मेनी मोर टू गो? नो मोर सेज कैक्टस. एज जरूर चुका है लेकिन राउंड आ चुका है टू द फेवर्स ऑफ टीम एफएससी स्पोर्ट्स. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी वर वेटिंग फॉर एंड आई थिंक दिस इज द मोमेंटम स्पाइक कमिंग इन, टर्निंग द स्कोर टू 2-6 फ्रॉम 0 to 6 in no time. 2-6. Well, we still have 4 rounds to go. I mean, ये 4 राउंड अगर FSC Sports इनके हाथ में ले जाए तो 6-6 हो सकता है. फर्स्ट हाफ काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है अगर तुम मुझे पूछोगे तो. Well, एक और चीज मैंने यहाँ नोटिस किया है तान्या कि एक बार जब FSC Sports मोमेंटम ब्रेक कर देती है ओपोनेंट्स का तो वो रेस्ट ऑफ द गेम कैरी करती रहती है. एंड एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बोला आई गॉड फिर से उन्होंने एंट्री निकाली बट Weird bad love is gonna answer him back immediately. And B2 यहाँ पे पीक लेने जाने वाले थे C bomb side पे but he's gonna go back right now because it's a C execute coming in and he's waiting for the backup to arrive with an operator. Bad love already CT पे जा चुके. He's been tagged. He has his ultimate, 2 up traps and 1 dash. MF God gets on a kill on towards I God. FS के 2 player
टेक डाउन हो चुके हैं एंड इट्स अ 2v2 सिचुएशन राइट नाउ एंड बैड लक के हाथ में अभी ऑफ है, तो ऑफ इज Last नॉट player समथिंग दैट standing. वर्क्स आउट ऑलवेज एंड FSE Sports looks like they are having a good time with the डिफेंडिंग साइड नाउ। पहले जो राउंड ने उन्होंने लिया है उसके साथ साथ नई मोमेंटम के साथ राउंड्स पे मिल रहे हैं, तो उसके I साथ got उनका spotted. कॉन्फिडेंस भी बढ़ते जा रहा है। एक ऑपर वर्सेस दो राइफलर एंड बोथ ऑफ देम आर ऑन द 30 कॉर्नर्स seconds ऑफ द left. मैप। एक सीटी पे बैठे हुए हैं और एक लॉन्ग पे बैठे Spike हुए हैं। अगर planted. दोनों एक बार एक कोऑर्डिनेटेड पुश बनाएंगे तो मे बी द परफेक्ट फॉर्मूला विल कम इनटू द प्ले। And have a feeling that Bad Luck has already spotted out the jet. He's going to be going back to the garage. He still has an off in his hand. And there you go. Peter spots him out, takes him down. That's third round on board for FSC Sports. And going for the defusal immediately, third consecutive round won by FS Esports. And अच्छा engage करके रखा गया with the cloud burst and some dash moments. और उसी के साथ when his vision was completely on the other side of the map, long से आकर यहाँ पर kill secure कर लिया गया B2 की ओर से, and वो kill secure करना काफी ज्यादा priority रख भी रहा था with that third consecutive round coming into the hands of team FS Esports. अभी बैड लव का ब्लेड स्टॉर्म रेडी हो चुका है एंड कॉली का एस्ट्रल फॉर्म आई डिफ्यूजल में जरूर काम आ सकता है। कॉली का एस्ट्रल फॉर्म या फिर एंट्री रिस्ट्रिक्शंस में अगर आप मल्टीपल प्लेयर्स को स्टॉप करके रखेंगे तो एक अलग केस ऑफ सिनेरियो भी हो सकता है। Joke's over! You're dead! रन इट बैक का यूटिलिटी यूज अल्टीमेट यूज किया गया है एंड यहाँ पर फिनिश कर देने की कोशिश की जरूर गई थी। बैड लव को टेक डाउन कर लिया है कैक्टस ने, ये एक बैड न्यूज हो सकती है फॉर टीम वियर्ड स्पोर्ट्स एंड टर्निंग इट बैक टू वर्ड्स एंड 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है। डेडली यहाँ पर आ चुके हैं, साइट ए मिल चुकी है और यहाँ पर स्पाइक भी प्लांट हो जाएगा। काफी अच्छा डार्क कवर का यूजेज, हेवन से कोई भी व्यू अवेलेबल नहीं है। सो 2 वर्सेस 3 मैन टू मैन एडवांटेज है, कवर जा चुका है। किस तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा कि फोर्थ राउंड एफएसई स्पोर्ट्स के हाथ में आ जाए? वेल FFE Sports उनके पास मैन एडवांटेज जरूर है तानिया, and मुझे लगता है कि उनके पोजीशंस भी काफी क्लोज है। यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेल उन्होंने तो धमाल मचा दिया है ना FFE Sports वंस अगेन। बढ़िया रीटेक इस बार। कैक्टस यहाँ पे जेट के साथ काफी अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं। 4 rounds for FFE Sports and 6 for VOD Sports, and looks like the comeback is real after all. Here. The comeback is definitely real from nowhere to the score of 4 coming very close to 6 और अगर यहाँ पर और 2 राउंड जीत जाते हैं तो रेस्ट इज गोइंग टू बी हिस्ट्री, क्योंकि अगर 6 राउंड्स कॉन्जिक्यूटिवली वियर्ड स्पोर्ट्स जीत जाता है, इसके बाद 6 कॉन्जिक्यूटिव राउंड एफएसई स्पोर्ट्स जीत जाता है, तो ये एक इक्वलाइज्ड अफेयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ देयर ओन रिस्पेक्टिव साइड। देखेंगे क्या ये कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, क्योंकि डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर हो रहा है। रन इट बैक का यूज आई गॉट करेंगे एंड यहाँ पर एक प्लेयर को डाउन करके बैकफुट आ जाएंगे। आई एम रियली नॉट अवेयर कि दोनों साइड रन इट बैक था, जी नहीं, बिल्कुल नहीं था। तो एक अच्छा अल्टीमेट यूज किया गया और यहाँ पर 1 पिक लेकर फॉल बैक लिया गया। ऑन द कॉन्ट्ररी यहाँ पर स्मोक किया और एक पिक ले लेंगे। एमएफ गॉड को टेक डाउन कर लिया गया है, मतलब स्मोक की कमी साइट में एंट्री डिफिकल्टी कर सकता है। B2 और एक पिक ले लेंगे, टर्निंग इनटू अ 1v4। हाउ लॉन्ग विल द वन सर्वाइव? How long will this survive? I don't have any idea, Tanya, because Bad Love was the last player standing and FSE Sports is Last making round the in the comeback half. happen. Just one more round. It's going to be the last round before the side swap comes in, and this round is going to tell us that is it going to be VOD Sports ending things in a note of 7-5, or else is it going to be FSE Sports walking away with the momentum in their hands? 6-6. I think 6-6 can be a very ideal score in the map of Haven, if you ask me. इट इज एन आइडियल स्कोर बिकॉज ऑन द डिफेंडर साइड अगर आप एटलीस्ट कम से कम 5 राउंड भी निकाल लेते हो तो ऑन द अटैकर साइड डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हो। तो एफएसई स्पोर्ट्स ने फर्स्ट 6 राउंड्स भले गवा दिए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम पिक किया है। इफ यू कंपेयर कोहली एंड रियो, दोनों हाईएस्ट ट्रैगर नजर आ रहे हो। रियो बीइंग द इनिशिएटर, कोहली बीइंग द कंट्रोलर, एक अच्छा सेटअप पुट कर रहे हैं, एक अच्छा शो सेट कर रहे हैं, जिसके चलते दे आर द हाईएस्ट ट्रैगर्स एंड अर्ली पिक्स आर मैंडेटरी इन टर्म्स ऑफ एफएसई स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स करंट कंडीशन, एसेंट का मैप है, 6-4 का स्कोर है, टाइम आउट लिया गया है एंड देखेंगे हम कि टाइम आउट के बाद परफॉर्मेंस में कुछ चेंजेस ना आ जाए। यूजुअली वी हैव सीन कि जब जब टाइम आउट आता है तो जो मोमेंटम होता है वो क्रैश डाउन हो जाता है। इट इज लाइक अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो चढ़ते जाओ, अगर 1 सेकंड के लिए बैठोगे तो खड़े होने में फिर से टाइम लगेगा। लेट्स सी किस तरीके से प्लेयर वापस से कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि अभी के लिए हम क्लियरली देख पा रहे हैं कैक्टस एक रशर से स्नाइपर का रोल अब निभाते हुए नजर आएंगे। एंड यहाँ पर श्राउडेड से स्टेप का यूज किया गया एंड बी विंडो पर होल्ड किया जाएगा, ड्रोन भेजा गया है बट आई डोंट थिंक देयर इज एनीबॉडी एल्स। और यहाँ पर ट्रैप फायर को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया है फॉर नाउ। नेब्यूला के चलते होल्ड जरूर है, हंटर फ्यूरी का यूजेज, फ्लैश एक साथ एक बहुत ही डेडली प्ले नजर आ सकता है। कोहली यहाँ पर एक पिक जरूर ले लेंगे एंड यहाँ पर ट्रेड होते हुए 3 वर्सेस 3 में कन्वर्ट होकर केज डाला गया था और यहाँ पर डेडली और एक पिक ले लेंगे। आई थिंक अटैकर्स आर पुशिंग वे टू स्ट्रॉन्गर हियर एंड यहाँ पर ये राउंड डेफिनेटली वियर्ड esports ऑलमोस्ट जीत चुकी है। Yes, we are esports. Spectres definitely come handy in short range, and they definitely proved it to FS Esports. ना ही ऑप, ना ही वैंडल, ना ही फैंटम, बस स्पेक्टर से उन्होंने सब लोग ये राउंड उनके हाथ में लिया हुआ है। After the break, I mean after that short, timeout we took, FS Esports unfortunately lost their momentum, and this is going to be the end of the first half. 7 rounds for VALORANT Esports and 5 for FS Esports, which is actually not a bad thing because Haven is very well known as the attackers map. So having 7 rounds in attacking and 5 rounds in defending is a good thing to start with. I mean, it's okay. They can do the comeback later in the attacking side. And I guess that's what they're exactly going to do it, as VALORANT Esports switch to defending and FS is on the attacking right now. FS might have an advantage that they have a sulfur, to be honest. Yep, no, they have an Astra as well. Those the smokes, the stunts, the pulls, everything can be pre-done and like pre-planned. प्री प्लान को कितनी ज्यादा देर तक टेबल्स टर्न करने की कोशिश की जाएगी, दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन विल बी। कैक्टस इज ट्राइंग टू गिव अ स्ट्रेट पुश बट रियो वुडंट अलाउ इट। शॉटकट का यूजेज एंड डिले एंट्री फॉर नाउ ही इज गोइंग टू गो बैक फोर्थ एंड हील हिमसेल्फ। अब कैक्टस फिर से एंट्री लेंगे, यहाँ पर फ्रेंजी का यूजेज कर रहे हैं, स्पाइक जा चुका है, फ्लैश यूज करते हुए टेक डाउन कर लिया गया है। सैसमी को भी डेडली भी अच्छा बैटल दे रहे हैं, मैन टू मैन एडवांटेज में आ चुकी है एफएस स्पोर्ट्स। एज अ डिफेंडर 5 राउंड निकाल चुके थे, एज अ अटैकर आई थिंक वेरी फर्स्ट राउंड इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अ स्टेप क्लोजर टू देम। यहाँ पर एक स्मोक का यूज किया गया है, पैरानोया का यूज किया गया है, लेकिन आई गॉड चाहते हैं आप कुछ यूज मत करो, मैं गोस्ट यूज करूंगा और आपको टेक डाउन कर लूंगा। विद दैट इट इज गोइंग टू बी अ 6th राउंड इनटू द हैंड्स ऑफ एफएस स्पोर्ट्स। वीआर स्पोर्ट्स अभी भी 1 पॉइंट की लीड पर है, अगर लीड चली जाती है, इक्वलाइज हो जाते हैं तो एफएस स्पोर्ट्स ऑन द अटैकिंग साइड कैन प्रूव देमसेल्व्स सो बैडली दैट द existence will not be taken down even if you try wiping it for years. Yes, FS Sports, they've got the pistol round and now they'll get the next round, hopefully, if they go for a force buy. And speaking about Weird Esports, they did get the plan down, so they can also go for a force buy, but looks like they're going to be just sufficed with the Sheriffs itself. I got in his teams, they're still sticking to the pistols, which is not at all a good thing, by the way. FSI got spots out Sasmi, but Sasmi gives a headshot with the Sheriff from his hand. 2 players down. Actually 1 player down from FSC Sports, and Weird Esports is looking very strong. Bad luck is trying to push through the smoke. He's down to 12 HP, gets taken down. FSC Sports Cactus also gets another one. It's a 2v4 situation, and the bomb is going down at the A-bomb side. I think for FSC Sports, A-bomb side is working very well, Tanya. Even in the last round, they got the A-bomb side. They are able to capture it immediately. They are able to plant the spike, and on the course of getting the capture for the side, they are also able to take down players multiple times. तो जिसके चलते एक मैन टू मैन एडवांटेज आ जाता है, एंड फिर से एक बार कैक्टस यहाँ पर और एक पिक अपने लिए निकाल लेंगे। एमएफ टाउन को टेक डाउन कर लेंगे। इट इज ऑल अप टू रियो विद अ पिस्टल एंड अ रिकॉन। क्या करेंगे वो एक क्वेश्चन होगा। एक पुश आ रहा था, डेफिनेटली B2 को डाउन किया गया, लेकिन कैक्टस अपने लिए 3rd पिक निकाल लेंगे और उसी के साथ स्कोर को इक्वलाइज कर दिया गया है। 2-7
7-7। वेल कहाँ 0-6 एक टाइम पर स्कोर था और अब आ चुका है 7-7 पर। FS Esports are definitely trying to prove themselves, pave their way, get the title of the winner as well as the prize pool. And this tournament matters a lot because ये tournament अभी के लिए it is just 75k prize pool, लेकिन ऐसे बार बार tournaments आते रहेंगे. If you are putting a good show, I am very sure of you are going to go for the next as well. एक अच्छा शो देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर साइट ए पर डेडली अपना सेटअप सेट करते हुए नजर आएंगे. स्पाइक कैम एडजस्ट हो चुका है. स्मोक किया वंस अगेन, गोइंग फॉर द बी साइड एंड रिकॉन डाला गया, ड्रोन डाला गया एंड यहाँ पर इंटेल भी निकाल दिया गया है ऑन द कोर्ट. एफएसआई गॉट काफी अच्छी तरीके से दो पिक निकाल चुके जिसके चलते मैन टू मैन एडवांटेज में आ चुके. कैक्टस का एक अच्छा डैश एंड अ कंफर्मेशन, लेकिन मॉड एमएफ गॉड उसे ट्रेड आउट कर देंगे. टर्निंग इट टू अ 4v2 अफेयर. बी साइड पर पहली बार स्पाइक प्लांट हुआ है. Yes, spike plant हो चुका है. It's a force buy round for VOD Sports. Oh, it's actually a full buy round for VOD Sports actually, and FSC Sports is still having the advantage. And अगर FSC Sports के साथ ये round भी मिल गया तो then VOD Sports have to go for an eco in the next round. So मुझे लगता है कि VOD Sports should save this one. If they even give away the exit kills, economy is going to be in economy is going to be in a big trouble. आई वुड सेकंड दैट. इकोनॉमी बहुत बड़ा ट्रबल player क्रिएट कर standing. सकता है एंड B2 यहाँ आएंगे, एक पिक निकाल लेंगे वो और वेपन्स भी एक्सचेंज कर लेंगे. अटैकर्स जीत चुके हैं. वन मैन विल सर्वाइव एंड ट्रैप फायर अभी भी काम कर रहे हैं. डेडली डेफिनेटली एक अच्छा शो पुट अप करके गए. भले राउंड हार गए लेकिन पिक्स भी निकाली और अपने लिए वेपन भी एक्सचेंज कर लिया है. एंड अब 0-6 का स्कोर था थोड़ी देर पहले. हार्डली 15 मिनट्स हुए होंगे, 20 मिनट्स हुए होंगे. अब FSC Sports लीड पर आ चुकी है with the 1 point of lead and the score being 8-7, 8 into the favor of FSC Sports. It is grand final and the match point for FSC Sports. 5 more victories and the match point as well as the victory point will come very closer. क्या इतना easy रहेगा? सेटअप करते हुए मिड एरिया में नजर आएंगे एंड यहाँ पर स्पाइक कैम के चलते सेसमी शायद स्पॉट आउट हो सकते हैं. रियो यहाँ पर एंटिसिपेट कर रहे हैं थ्रू द स्यूअर्स. आई गॉट गो, लेकिन आई गॉट इतने इजी नहीं है हाथ में आने वाले. ही टेक्स इमीडिएटली वन पिक एंड रन इट बैक का यूज किया गया. क्या रन इट बैक का एक अच्छा यूटिलाइजेशन हमें नजर आएगा और एक पिक देखने के लिए मिल सकता है? बिल्कुल नहीं देखने के लिए मिलेगा. डेडली एफएस गॉड को आई गॉड को डाउन कर देंगे एंड नाउ टर्निंग इट टू अ 4v3 अफेयर. इस बार डिफेंडर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं. Well, looks like defenders first time they have an advantage, but still, I don't think it's going to be an easy fact for them. देखो battle of the बीच जाते हुए FS का B2 ने भी एक और प्ले निकाल from a 4v3 situation to a 1v3 situation. Absolutely no hopes left from Deadly. Well, I guess Deadly ने साउंड दे दिया कि वो CT पे है. He has to go for a save right now. Even if he tries to go and take a push, and there you go, I got is gonna put him back to sleep. That's 9th round on board for FSC Sports. And I guess if FSC Sports wins this match, I'm gonna not only crown them as the ROG Showdown champions, but also as the comeback masters in Valorant. टर्निंग द स्कोर टू 9. मैन टू मैन डिसएडवांटेज था उसको भी ओवरटेक कर लिया गया, ओवर पावर कर लिया गया और अपने आप के लिए 2 पॉइंट्स की लीड भी जनरेट कर ली गई है. दे आर जस्ट 3 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द मैच पॉइंट एंड द विनिंग टाइटल. ये 3 मैचेस कितने इजी रहेंगे एफएससी स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि हमने एफएससी स्पोर्ट्स की ओर से कमबैक जरूर देखा. क्या वीआरडी स्पोर्ट्स भी कमबैक करेंगे? स्मोकिया इस बार बी पर फिर से ड्रोन भेजने की कोशिश करेंगे एंड यहाँ पर आई गॉड ड्रोन को डैमेज कर चुके हैं. सेसमी बैक फुट जा चुके हैं. आई गॉड को एक अच्छी इजी एंट्री बी साइड पर मिल चुकी है एंड अच्छा नेबुला का यूज भी है. स्पाइक गोज इनटू नोबडीज हैंड्स एंड आई गॉड को स्पॉट किया गया था. पिछला राउंड आई गॉड ने बहुत ही आउटप्ले किया सबको. रन इट बैक का यूजेज फ्रॉम सेसमी, फ्लैश कार्ड का यूजेज, लेकिन लोकेशन कैक्टस की रिवील हो चुकी है. chaotic सिचुएशन 1 by 1 शैटर होते हुए एफएससी स्पोर्ट्स नजर आएंगे. मैन टू मैन एडवांटेज आ चुका है. सेसमी और एक पिक ले लेंगे. बहुत ही शानदार अल्टीमेट यूज. रन इट बैक का फ्रॉम सेसमी एंड यहाँ पर डिफ्यूज भी हो जाएगा. B2 को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आए जरूर थे. डेडली को टेक डाउन करके सेसमी विल सेव द डे with the run it back and also knocking the final nail in the coffin by turning the score to 9-8 and the lead which was converted to 2 points will be taken down to 1 point. Yes.
Weird Esports finally, after losing 4 rounds back to back against FS Esports, they finally made a move here, and this is going to be the first round in their defending side. By the way, Tanya, as I told you, attacking can be easy, but the defending, that's where it lies. That's where the difficulty comes in. That definitely shows the difficulties are on the way. How difficult are they going to be? Are they going to be from bad to worse or worse to worst? Now we can clearly see A side पर आ जाते हुए players नजर आएंगे. Split में जा रहे हैं 2:3 के 2:2 के रेशियो में. Except for always हम Cypher को wander करते देखते हैं side C पर, and यहाँ पर bad love B2 को take down कर देंगे, turning it to a disadvantage for FS Esports. Every single time you cannot afford to go there. एक अच्छा utility star का use किया गया and यहाँ पर कंकस कर दिया गया है, but still less in numbers, and यहाँ पर पूरी responsibility आ चुकी है एक player के ऊपर. यहाँ पर कैसे निभाई जाएगी वो responsibility, वो एक question होगा, क्योंकि 1v5 clutch pistol round में हमने निकालते हुए जरूर देखा है स्मोकिया को, लेकिन यहाँ पर snipers हैं, ARs हैं, सारे के सारे full utilities होने वाली है. कोहली यहाँ पर एक और पिक निकाल लेंगे, and coming to the crosshair of bad luck was one of the mistake. With that, the score comes equalized to the scoring 9:9, and for both the teams, FS Esports and VAD Esports, बहुत ही कांटे की टक्कर दे रहे हैं. कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, एक नेक टू नेक कॉम्पिटिशन. आई रियली डोंट नो ये कहाँ पर जा रहा है मैच, लेकिन इट इज बाय फार वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच इनटू द सेमीफाइनल्स as well as the grand finals. Oh, this is a nice spot. This goes Yes, here. that is definitely true. This is one of the closest match that I've seen in the last 2 days. I mean, compared to today and yesterday, this is the closest it has ever gone. 9-9 is definitely a close score. Now, whoever wins this round, they have a close might that they will be walking away with the victory and as well as the momentum. Well, I definitely feel like it's going to be Weird Esports who might get this round into their favor. There you go, 2 cages, and Cypher is already tagged down to very low HP. The shock dart coming in. iGod gets tagged double, and now with the ultimate coming in, iGod goes down. The spike hasn't been planted. Another damage from Rio. Rio, the lucky boy. The spike is getting planted down, and MF God, he has to be very careful at this time. The smoke's coming into the play, and Sasmi, he's in the bomb site right now, a 4v5 situation. I think FSC Sports, it's the least they could do is to, get the bomb. And there comes the Hunter's Fury. Will it do any damage? Definitely looks like it is doing a lot of damage. A double kill for Smokia. A shock dart also coming in through the last man standing, the Jet. Yeah, he can absolutely do nothing. Bad luck going down. 10th round for FSC Sports. What a strategy, Tanya. First, they wait till iGod goes into the side. They get the bomb planted down. They lost the first blade. And the way the stuns were placed by Astra, that is why I told you. Astra is very unique. The pulls, the stuns, and the Hunter's Fury coming in, the shock dots going into the place. Everything worked like a charm for FSC Sports. And Weird Esports were totally into the chaotic situation where they were not able to predict by which move has to be taken next. Over here, the split of 1:4 has to be seen, and that this is the push of C coming in. Sassy trying to delay the entry by using the volley over here. Bad Love will just go back foot with the sniper once again. He might get the early pick, but over here we can see run it back coming in clearly. Flash is also coming in. Bad Love will delay, not getting any pick, but it is a smoke. It is a probability where he can. Sesame will again go back. Run it back, did not deliver what exactly he wanted to. Still the battle is on. It is still 5v5, and Rio will be the man to take down Smoke here, and the spike will be taken down, turning it to a 4v4. Kohli will immediately trade down Rio, and Deadly taking down B2, turning it to a 3v4 affair. Neural theft immediately used, realizing that the rotations have been taken place, और rotations के साथ वो आ चुके साइड A पर एक साइड क्लियरेंस मिल चुका है, लेकिन बैड लव स्नाइपर के साथ आ चुके हैं, तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ चुकी है यहाँ पर FS Esports के लिए. एक कांटे की टक्कर, और अगर यही प्ले चला तो तन्वी शायद OT भी हमें देखने के लिए मिल सकता है. Well, OT तो मैं जरूर एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज ये तो 4th मैप है. अगर 4th में Weird Esports ने ले ही लिया तो हम डिसाइडर मैप नहीं देखेंगे. मुझे तो डिसाइडर मैप देखने की और बड़ा शौक हो गया है. And I guess FSC Esports का iGod, now he has to go for a save.
If he peeks through that window, that will be the biggest regret he ever made. But he still managed to get a kill over towards Bad Love and gets immediately traded. And the op has been retrieved by Deadly 10. 10 to 10 is the score, ladies and gentlemen. Both of the teams are not giving up. And FSC Sports is just 3 rounds away from getting the victory of Asus Rog Showdown series. नाउ आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर एफएससी स्पोर्ट्स के लिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उन्हें पता है आइदर लेट्स गो अहेड विन 3 राउंड एंड द डे इनटू आवर फेवर्स, और अगर ये राउंड चला जाएगा तो ब्रीज इज द डिसाइडर मैप और वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है। एक ऑल इन प्ले मैं पर्सनली एक्सपेक्ट करती हूँ, लेकिन दे आर नॉट गोइंग ऑल इन एज ऑफ नाउ। काफ़ी पैसिव अप्रोच रखा जा रहा है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, मिसडायरेक्ट करने के लिए। स्प्लिट स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। कैक्टस यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं आज के यूएस में, लेकिन यहाँ पर इससे ज्यादा कोई भी मूवमेंट नहीं दिया गया। अल्टीमेटली धीरे धीरे वन बाय वन प्लेयर्स आर ट्राइंग टू रीच आउट एंड साइड ए टोटली क्लियर हो चुकी है एक्सेप्ट फॉर वन प्लेयर स्टिल स्टैंडिंग। बैड लव स्नाइपर्स के साथ रेडी है। एक गलती एंड वन पिक, देखेंगे क्या वो पिक इतना इजी रहने वाला है या नहीं, क्योंकि द वे प्लेसमेंट क्रॉस सेट प्लेसमेंट इज देयर फॉर बैड लव। एक पिक डेफिनेटली नजर आ रहा है। धीरे धीरे से राउंड शुरुआत तो हो गया है। अभी तक कहीं पे भी हमको एक पिन ऑफ नॉइस भी नहीं सुनाई दिया। कैक्टस इज ट्राइंग टू पुश आउट टुवर्ड्स ए शॉट। उनको साइफर का ट्रैप तोड़ना पड़ेगा एंड ही डेफिनेटली डिड मैनेज टू गेट द साइफर्स ट्रैप। एंड लॉन्ग जाना काफी बड़ी रॉन्ग डिसीजन होगा बिकॉज बैडलर इज सिटिंग डाउन विद एन ऑप एंड ही विल गेट दैट हेडशॉट, बट लिटिल डज ही नो दैट साइड का कंट्रोल ऑलरेडी मिल चुका है। अभी भी लॉन्ग पे एक ऑपर बैठा है। बैड लव एक और किल लेते हुए तीसरा किल पे जा रहे थे कि कैक्टस ने उनको शट डाउन कर दिया हुआ है। 3v4 सिचुएशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड फॉर FS Esports. FS Kohli is going in for a flank. He will spot out Sopa. He takes him down. The players are equalized. The spike is planted down. There is a Spectre in the hands of Deadly. एक रिकॉन आ चुका है। अभी ये शॉट से डैमेज होगा डेडली के पास नहीं। अनफॉर्चुनेट ज्यादा डैमेज और गई नहीं है। सोवा का ये सोवा, ओ माय गॉड, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तानिया। व्हाट अ करेक्ट टाइमिंग ऑफ द फ्लैश एंड साइफर्स पुश। बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग हो चुका था और वो टाइमिंग का परफेक्ट यूटिलाइजेशन किया गया, जिसके चलते यहाँ पर 1 पॉइंट की लीड पर फिर से एफएससी स्पोर्ट्स आ चुकी है। एंड ये लीड को मेंटेन नहीं करने दिया जा रहा, बार बार इक्वलाइज किया जा रहा है। अभी भी हाईएस्ट स्ट्राइकर कोहली हैं अपनी टीम से एज एस्ट्रा। ऑन द अदर हैंड रियो इज डेफिनेटली आउट नंबरिंग अदर प्लेयर्स, लेकिन इस बार हम कहेंगे कि टीम सपोर्ट में कहीं पर भी कमी नहीं है। अगर हम डेडली 10 की किल्स देख रहे हैं, वेरी क्लोज। बैड लव भी इक्वल अमाउंट ऑफ किल्स शेयर कर रहे हैं। तो इस बार का जो मुकाबला चल रहा है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज के साथ चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा टीम इंटरेक्शंस के साथ चल रहा है। एक बहुत ही ये जो राउंड है एक बहुत ही कहते हैं ना सेफर अप्रोच वाला राउंड हो सकता है। दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि अब गलती की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए बिकॉज इट इज अ सेव राउंड फॉर VALORANT स्पोर्ट्स एंड दिस इज द एग्जैक्ट टाइम फॉर FSC स्पोर्ट्स टू विन दिस राउंड। इसके साथ 2 पॉइंट्स की लीड बन सकती है। यस, बट मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि FSC स्पोर्ट्स ये राउंड जीत जाएगी और मैच पॉइंट पे आ जाएगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिकॉज आप ही खुद इकोनॉमी देखो। VALORANT स्पोर्ट्स अराउंड 3 of the players cannot afford to buy a rifle now, so they have to go for an eco, or if they go for a force buy they have to be really careful. On top of that, they're playing on the defending side. If one mistake can lead them to give away an entire bomb set and the plant will go on eventually. Deadly picked up a Bucky. Okay, never mind. He changed his decision back. Sasmit is connected. I think he'll be back anytime soon. And look at the scoreboard currently. Everybody is on double digit. Kohli is sitting up there with 19 kills on top, by the way. And you know, Tanya, don't you think FSC Sports is a surprising team? कभी स्मोक या टॉप में दिख जाता है, कभी आईगोर दिख जाता है, कभी कैक्टस दिख जाते हैं। अभी तो कोहली दिख रहा है मुझे।
एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ हर एक मैप में, हर एक साइड में हम कहेंगे, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि अटैकिंग साइड में कोई और हाई स्ट्राइकर होता है, डिफेंडर साइड में कोई और, तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज बना हुआ रहता है फॉर द कास्टर्स, फॉर द व्यूअर्स एंड फॉर द प्लेयर्स एज वेल, क्योंकि यहाँ पर वियर्ड ई-स्पोर्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि स्मोकिया यूजुअली हाई स्ट्राइकर रहते हैं, तो उनसे हम थोड़ा सा बच के चलेंगे, बट ऑन दी अदर हैंड दूसरा प्लेयर आ जाता है मल्टीपल पिक्स निकालने के लिए। कैक्टस को फिर से हमने एक बार एक अच्छे रोल में देखा है, 3 पिक्स निकालते हुए रिपीटेडली 2 या 3 राउंड में, जिसके चलते ही इज वेरी क्लोज टू द टॉप फ्रैगर, जस्ट 2 किल्स अवे। अगेन आई गॉट इज 2 किल्स अवे फ्रॉम कैक्टस एंड 1 किल अवे B2। तो एक अच्छा टीम कोऑर्डिनेशन होता है जब किल्स ऑलमोस्ट इक्वलाइज्ड होती है, और वो दोनों ही एंड में नजर आ रहा है। मेट भी स्मोक किया, अभी के लिए वी कैन से 10 kills ही है, but look at the assists as well. He does have 6 assists to work out with, though Sasmi has the assist 7, and Rio highest fragger as well as highest assist providing player for the team. एक अच्छा coordination दोनों के end पे, that is what is making me go towards the thought कि यहाँ पर हम definitely एक OT expect करेंगे। यस, ओवर टाइम मैं तो एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ फिलहाल के लिए। एक राउंड बस चाहिए एफएस को, एक राउंड एंड सब कुछ बदल जाएगा एफएस के लिए। वो लोग मैच पॉइंट पे रहेंगे, और अभी इफ वियर्ड ई-स्पोर्ट्स गोज फॉर एन इन्वेस्टमेंट राइट नाउ, दे कांट डू एनीथिंग व्हेन एफएस ई-स्पोर्ट्स इज ऑन अ मैच पॉइंट। देयर इकोनॉमी विल बी कंप्लीटली डेवास्टेटेड, सो दे हैव टू टेक द कॉल राइट नाउ। तान्या, do they want to invest right now, or do they want to invest in the next round? Oh, well, certainly they are going for the mix, and we've seen Deadly taking some picks with the Sheriff and MF God as well. Though being the bottom fragger right now, it's all good until and unless if he's able to get the round for his team without even taking maximum kills. Because you've seen various such smokes where the vision was thoroughly blocked, due to which the picks were not easier, and they were winning rounds by rounds and getting to the score of 0 and 6. साइड चेंज हुआ, इसके बाद एफएस स्पोर्ट्स का एक अलग प्ले सेट नज़र आ रहा है। तो अब देखेंगे माइंड सेट चेंज हुआ है, प्ले सेट चेंज हुआ है, एंड आई ऑलवेज सी जब भी टाइम आउट आता है तो जो भी टीम मोमेंटम में होती है वो टीम का मोमेंटम बिल्कुल ही चला जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पर इक्वलाइज मोमेंटम हम कहेंगे, क्योंकि 1 पॉइंट की लीड इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं होती है, बट 1 पॉइंट इज स्टिल अ पॉइंट। अगर ये राउंड एफएस स्पोर्ट्स जीत जाती है तो दे आर गोइंग टू बी अ स्टेप अवे from the winning from this title of winning the tournament, as well as the third consecutive victory, a hat trick victory, which is certainly massive, क्योंकि फाइनल्स में हम इतना सेम पैटर्न रिपीटेटिवली नहीं देख सकते हैं, लेकिन आज एफएस स्पोर्ट्स ने वो अपने लिए बनाया हुआ है। Yes. FSC Sports looks like they have a plenty of time right now left to discuss strategies and stuff. What would you recommend there? What kind of strategy would you recommend VOD Sports to do right now? For weird esports, if they are going for eco, then the next full buy round is going to be very interesting, क्योंकि सामने मैच पॉइंट होगा और यहाँ पर टफ कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। तो I cannot exactly anticipate, because what they are doing right now is absolutely correct. नेक्स्ट में हार्ड फुल बाई कर एक हार्ड टाइम क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी अगेंस्ट एफएस स्पोर्ट्स, लेकिन एफएस स्पोर्ट्स विल बी सो क्लोज टुवर्ड्स द विक्ट्री कि अगर एक गलती भी डी स्पोर्ट कर देगी यहाँ पर, तो एफएस स्पोर्ट्स विल बी द अनाउंस्ड विनर्स। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन सा भी है, बट ऑल टुगेदर अच्छा डिसीजन लिया जा रहा है वियर्ड स्पोर्ट्स की ओर से टू गो अहेड विथ द सेव राउंड, गोइंग विथ 1 फैंटम फॉर बैड लव, and we have seen bad love reducing the amounts of players for the opposite side. So अगर वो successfully कर लिया जाता है तो फिर तो weapons of FSC sports आ ही जाएंगे gradually। तो एक अच्छा राउंड क्रिएट कर लेते हैं तो एक टफ कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, एंड FSC sports is giving tough time to VAD sports to write a comeback story, and VAD sports यहाँ से खाली हाथ जाना नहीं चाह रही है। They want to make sure कि अगर हम यहाँ जाएंगे तो कुछ दिखा कर जाएंगे। सो एरिस का यूजेज नजर आ रहा है वेल कमिंग इन फ्रॉम रियो एंड डेडली। आई होप ये एक टाइम पास का सिचुएशन हो, एंड इफ दे टेक एरिस तो ये राउंड डेफिनेटली वीआईडी स्पोर्ट्स के हाथों में चला जाएगा। Yes. And I guess it is taking a little more than we expected. Unfortunately, Sasmi is disconnected and we are waiting for him.
How long is it going to take, ladies and gentlemen? We'll just be telling you. But till then, what do you think? Who might win this tournament? Do you think that FS Esports has done enough to win the tournament, or still the race is on for VAD Esports? क्योंकि यहाँ पर VAD Esports आउट प्ले नहीं हुए हैं, अभी भी रेस में दौड़ रहे हैं, बहुत ही क्लोज बैटल है एंड ये बैटल इतनी आसानी से खत्म होने वालों में से नहीं है, दैट आई एम वेरी श्योर ऑफ। तो अब ये बैटल कहाँ पर जाएगी, क्योंकि अभी के लिए एक टेक्निकल टाइम आउट लिया गया है, जिसके चलते प्लेयर्स आर जस्ट एंजॉयिंग हैविंग अ गाला टाइम, This is a nice bunny dress. hopping This here and dress there, goes there. and This goes here. I think Yes. Deadly This is dress going goes there. insane with the This is a TP nice strategies dress. that This should he's go. using. Yes. Well, so far there have been so many like ups and downs in this game. पहले वो 0-6 चल रहा था, फिर बाद में 6-6 हो गया था, no 7-5 हुआ था फर्स्ट हाफ में, it was 9-5 9-7 and it became 9-9 and अभी 10-10 हुआ and अभी 11-10 पे चल रहा है। and ये राउंड काफी important है Beard Esports के लिए, and it's also equally important for FS Esports. One round and they're on the match point and just 1-2 rounds away from being the champions. 2 steps away to get the title, and देखेंगे वो टाइटल अचीव करना कितना इजी रहेगा। एक पिस्टल राउंड है एंड ये कुछ टीपी चल रहा है बिकॉज देयर इज अ डिस्कनेक्शन फ्रॉम सैसमी, जिसके चलते वी आर वेटिंग फॉर हिम टू कम बैक एंड देन कंटिन्यू विद द प्ले एंड कमिंग बैक टूवर्ड फ्रॉम बाइंड अंटिल नाउ। एक अच्छी जर्नी थी VAD Esports की, बाइंड अच्छी तरीके से डोमिनेट करके अपने पॉकेट में डाल कर गए थे। इसके बाद 2 कॉन्सिक्यूटिव विक्ट्रीज FS Esports की ओर से इन द मैप ऑफ स्प्लिट एज वेल एज एसेंट में नजर आया था एंड नाउ इट इज द 4th मैच फॉर द डे, जहां पर अब 0-6 की लीड बनाकर वी डिड सी दैट VAD Esports went very strong, but ultimately FS Esports also has some good plans to work out with। एक अच्छा कमबैक स्टोरी लिखा है एंड इंडीड अपने आप को लीड में डाल दिया है। तो एक कंसिस्टेंसी है 2 राउंड्स की विक्ट्री की, एक कमबैक स्टोरी है एंड 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम बीइंग द विनर। बट एक इजी जर्नी नहीं है लिखा, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट जर्नी फॉर देम। Yes, it definitely is. Just for the audience, let's do a quick recap of what has been happening today. Today, it's the finals of Showdown series happening between VAD Esports versus FS Esports. So we begin with the map of Bind, जहाँ पे VAD Esports attacking पे थे, VAD Esports पहले defend पे थे and पहले FS Esports attack पे थे. The first half ended totally into the favor of VAD Esports, 9-3 था. फिर उन्होंने डिफेंडिंग में काफी स्ट्रॉन्ग काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस किए थे, बट फिर भी VAD Esports had a way too much man advantage already, like way too much rounds advantage as well. So VAD Esports won that out luckily. Second map we had second map भी काफी अच्छा गया था एंड स्प्लिट पे काफी ज्यादा ups and downs हुए थे, but eventually Ascent and Split दोनों में FS somehow managed to get the victory and we are back in the action, ladies and gentlemen. VAD is back in the action. FSI already got himself a double kill. It's a 4v3 situation. VAD Esports currently has the advantage of 4 players. FS Esports, they have the spike. All the players of them have full HP. Now FSP2 will be putting its hats down. It's the neural theft coming into the play. And Sasmi will put down the flash. He's gonna put down the wall, but he will go down in the flames, unfortunately. It's a 2v3 situation. B2 made his way over towards the CT. Over towards the C-bomb side, and they will be getting the bomb planted over there. 2 versus 3, not a dream, एक अचीवेबल टारगेट है। लेट्स होप स्पाइक तो प्लांट हो गया है, बट होल्ड किस तरीके से किया जाएगा। एंड B2 यहाँ पर अपने आप को रिस्क करते हुए ओवर एक्सटेंड करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। स्मोक किया विंडो पर, गराज विंडो पर वेट कर रहे हैं एंड डेडली की एंट्री हो चुकी है। एक अच्छा रिकॉन जिससे पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो सकती है एंड एन अटेम्प्ट टू बैक स्टैब। क्या ये बैक स्टैब अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहेगा? स्पाइक मिल चुका है, डिफ्यूजल आ चुका है, टेकिंग द फर्स्ट किल एंड
हाफ player डिफ्यूज standing. हाफ डिफ होता हुआ एंड यहाँ पर स्कोर इक्वलाइज हो जाएंगे। बहुत अच्छा बैटल था, बहुत अच्छा बैटल था। रियो 3 पिक लेकर अपने टीम को यहाँ पर स्पाइक डिफ्यूजल देकर राउंड जितवा देंगे और इक्वलाइज कर देंगे 11-11। फॉर अ सेकंड आई फेल्ट इट वाज डन एंड डस्टेड, बट इट इज नेवर। एंड दिस इज द गेम where you can always say expect the unexpected, where you also outnumber but you also stand a chance to getting outnumbered. Well, unfortunately, we did not see that coming. I was expecting कि ये 1v3 तो खत्म होने ही वाला था. I was more, I was sort of expecting it to end into the match point. But I guess, sometimes a little surprises do come along the way. And I guess this time हमको weird esports ने दिया. But nevertheless, moving forward, we are 11-11 tied up score for both of the teams. And looks like both of the teams are gonna be putting their best. It's going to be the B-bomb side hit again. iGod is trying to push over towards the other side. He definitely does manage. Weird Rio on the other hand takes iGod down, and I guess Weird Esports is going in for a match point right now. Cactus gets a kill. He's looking for more. He gives the cover to the planter. Gets Cypher down as well. Gets taken down. It's a 2v3 situation. Advantage over towards Weird Esports, and there is a very intense fight going on. Weird Esports takes the man down. It's the last man standing who's inside the garage. He's in a big trouble. He gets one. Will he get another one? But the defusal has already been done and dusted. Weird Esports, they are on the match point right now, Tanya. And this is looking very different for me. One break, and everything is different right now. From not having the lead to achieving one, and a step closer to achieving the win point. And if this is the round that Weird Esports is able to pull it all together, then we can say that Breeze is just around the corner, ladies and gentlemen. What do you think? What is FS Esports up to? Are they not going to go push all in? And I would like to criticize Cactus a little, as Astral Form के आगे आने की जरूरत नहीं थी, and his revealing himself, being taken down, go make it a little easier for Weird Esports. और यहाँ पर आ चुके हैं हम towards the match point game for Weird Esports, और ये राउंड किसके फेवर में जाएगा? साइड बी पर एंट्री ले ली गई है, प्लांट लेने की कोशिश जरूर की जाएगी। सैप से आई गॉड को इमीडिएटली ट्रेड आउट कर देंगे, टर्निंग इट टू 4 वर्सेस 4। एक अच्छा रिवील दिया गया है। डेडली अपने आप को नेबुला में होल्ड कर बैठे, स्मोक किया। यहाँ पर क्या करना चाहते थे? वेल ज्यादा कुछ नहीं, इमीडिएटली डेडली 10 को टेक डाउन कर देना चाहते थे। टर्निंग इट टू 4v2, एंड नाउ we can clearly see neural theft being used, and the player has been spotted. क्या सैप्सी ये क्लच निकाल पाएंगे या फिर एक डिफिकल्टी होने वाली है? कैक्टस के पास एक अच्छी पोजीशन, एंड इट्स ओटी। Yes, we finally come down to an overtime. Finally, all the way from semi-finale to finale. ये हम एक पहला OT witness कर रहे हैं, and this is so exciting for me, really, because I was expecting, मैंने सोचा था कि इससे काफी, मैंने सोचा कि ये गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, because I thought FS Esports was going down for a match point, but nahi, things have definitely changed and turned very different for all of us. And anyway, good luck for both of the teams in the overtime. And what are your predictions, Tanya? Well, nothing, no predictions are going to work here. They are sharing the same score. Overtime पर जा चुके हैं. Winning 2 consecutive round is the priority for now. And यहाँ पर Cloudburst use कर लिया गया है, Nebula use कर लिया गया है, Molly use कर लिया गया है, and यहाँ पर एक दूसरा Nebula भी हम देख पा रहे हैं. एक delayed play नजर आएगा Weird Esports की ओर से, this time as an attacker, and spot जरूर किया गया है, but that is not going to give any impact for now. एक rotation लिया जा रहा है, heading towards side A, clustered entry होने वाली है. Deadly यहाँ पर trap fire reset कर चुके हैं to avoid any backstabs coming in. एक sneaky entry लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इतनी sneaky होगी नहीं. Heaven पे 2 players already wait कर रहे हैं. Yes. Well, it's the overtime, and we're definitely expecting the shower of bullets to be coming on the way. It's a 4v3 situation. Weird Esports, उनके पास एक man disadvantage है.
एफसी स्पोर्ट्स यहाँ पे वो काफी अच्छे से डिफेंड काफी अच्छे से स्पाइक प्लांट भी कर रहे, नहीं डिफेंड भी कर रहे, स्पाइक ऑलरेडी प्लांट हो चुका है ए बॉम्ब साइड पे, एंड आई गेस ऑल दे हैव टू डू इज जस्ट वेट एंड प्ले till the clock strikes 30 seconds. And I guess जो aggression यहाँ पे Beard Esports दिखा रही है, like जो Beard angles यहाँ Beard Esports खेल रही है, तो उससे थोड़ा मुश्किल होने वाला है. It's down to a 3v2 situation, and I guess both of the players of Beard Esports positions have been reverted. Smoke coming towards the CT. It's a 1v1 situation, and Beard Esports deadly takes down B2, 13th round for Beard Esports. A 3v2 situation going into the favor of Beard Esports. I don't know what kind of mistakes are Beard Esports doing this at this point. Like FSC Sports, they are so close, they have the man advantage, a 4v3, yet they lose. Yet to lose, and now match point once again into the hands of Weird Esports, and this is the exact time to turn the best of 5 to the score of 2-2 and getting the new map for themselves to get the victory. Overtime match point, and इस बार अटैकर्स की ओर से हमें FS Esports नजर आएंगे. FS Esports का डिफेंडिंग काफी अच्छा मुझे लग रहा था into the map of Heaven. अब यहाँ पर डबल डोज की और प्लेयर्स होल्ड कर रहे हैं, स्मोकिया एंट्री ले लेंगे. डू दे इवन नो कि यहाँ पर डेडली 10 वेट कर रहे थे, कैक्टस को डाउन किया जाएगा, इमीडिएटली कोहली उन्हें ट्रेड आउट कर लेंगे. एक पैरानोया का यूजेज जिसके चलते एवरीथिंग इज कंकस्ट डाउन, कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता. एमएफ गॉड यहाँ पर यूज करेंगे डार्क का वका टू अवॉइड द गराज एंट्री. Yes, it looks like FSC Sports, they are gonna play it out till their hearts. And yes, Sasmi on the other hand is being a little aggressive, is pushed up towards the window, but is not gonna be expecting B to be pushed. He is gonna take him down. If it's a smoke A gets a kill, and it's a 3v3 situation. Once again, both of the teams are having the advantage. Well, Jet is down to a little bit low HP, Tanya. Like Weird Esports are on the lower hand, if you ask me. And 30 seconds left. B2 has been taken down, turning it to a 2v3, 20 seconds to 27 seconds and counting, and the dream to plant a spike. Will he get the opportunity? MF God using the shrouded step, and it is not going to work any wonders for now. And 15 seconds and the dream to plant a spike. It is going to be a dream or no, I really don't know. 10 seconds and left. spike B is coming very close. Spike planted, and it is planted into the condition of after turning it to a 2v2. God is able to take down to make it 1v2, and MF Bot will come in with the sniper. Close call battle is not going to be any interesting affair. अब देखेंगे क्या होता है. And there you go. अब देखेंगे क्या होता है. अभी FSC Sports राउंड निकालता है, and what a brilliant way, Tanya. I mean, FSC Sports, well played. एक अच्छा परफॉर्मेंस, फिर से फेयर स्क्वायर स्कोर 13-13. पता नहीं किसकी डेस्टिनी में ये मैप लिखा हुआ है फॉर द प्लेसमेंट ऑफ विक्ट्री. और टाइम और बढ़ेगा. 2 कॉन्सिक्यूटिव राउंड्स कौन सी टीम जीतेगी उस पर नजरें रहेंगी. ए साइड पर कमिट करने की कोशिश की जाएगी. यहाँ पर B2 ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, स्पाइक यहाँ सेट हो चुका है. इसके साथ इंटेल भी मिल चुका है कि कितने प्लेयर्स यहाँ पर होंगे, आगे जाते हुए नजर आएंगे. हमें 4 प्लेयर्स ड्रोन का यूजेज रियो करते हुए नजर आएंगे. एंड क्या ये एक स्पॉट कर पाएंगे एनिमीज? वेल सर्टेनली स्पॉट किया जा चुका है. यहाँ पर 3 प्लेयर्स को स्पॉट किया जा चुका है. नॉट ओनली वन वेस्टिंग ऑफ द शॉक डार्ट, रिस्किंग. रियो इज रिस्किंग. नो, ही इज नॉट, ही इज वेटिंग. फिर से एक बार शॉक डार्ट, रियलाइजिंग रिस्क काफी ज्यादा है. एक रोटेशन लिया जा रहा है, और यहाँ पर एस्ट्रा अपने स्टार्स को इन्फ्लिक्ट करते हुए नजर आएंगे. नेबुलास दिख रहे थे, एंड आई गॉड यहाँ पर फर्स्ट पिक ले लेंगे. गॉड वर्सेस गॉड हो गया. आई गॉड वर्सेस MF गॉड, टर्निंग इट टू अ 5v4 situation. Spike down. C. यहाँ पर स्पाइक गिरा दिया गया है. दैट मीन्स FS Esports एक लीड बना रहे हैं. रियो यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं. Do they even know? और 1v5 फेयर क्रिएट हो चुका है, और 14th round going into the hands of FS Esports. What a
ट्रमेंडस प्ले। अब एक मैच पॉइंट हो चुका है ओवर टाइम के ड्यूरिंग फॉर एफएसई स्पोर्ट्स एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट एज अ डिफेंडर। एफएसई स्पोर्ट्स जरूर राउंड निकालने में कैपेबिलिटी रख के इमीडिएटली प्ले आउट प्ले कर देते हैं, बट ऑन द अटैकर साइड थोड़ी सी डिफिकल्टी जरूर हो जाती है। फॉर नाउ 1 पॉइंट की लीड है और यहाँ पर डिसाइडिंग टाइम चल रहा है कि वेयर एग्जैक्टली विल एफएसई स्पोर्ट्स हेड टूवर्ड्स। स्प्लिट ऑफ 3 वर्सेस 2 माइट बी सीन ओवर हियर एंड स्नाइपर के साथ बैड लव रेडी है। फर्स्ट पिक ले लिया गया है और स्मोकिया के बगैर क्या ये टीम वैसे ही खेलेगी। एक अच्छा फ्लैश यूटिलाइजेशन, बैड लव को सेकंड पिक निकालने से डिक्लाइन किया गया और एक फ्लैश का यूजेज डिसएडवांटेज में नजर आएगी हमें एफएसई स्पोर्ट्स। यहाँ पर हॉट हैंड्स का यूज किया जाएगा, हील अप किया जाएगा, एक पुश दिया गया लेकिन हॉट हैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भी यूज होगा टू अवॉइड द एंट्री, साइड एंट्री, बी साइड एंट्री, बी साइड एंट्री सी की कोशिश की जा रही है थ्रू द गराज। एमएफ कोड यहीं पर वेट कर रहे हैं, 1 पिक एंड यू आर डन। गलती करना नहीं चाहेंगे एंड एक पिक इजी मिल जाएगा। ओनली विल बी द वन टू टेक डाउन एमएफ गॉड एंड आई गॉड विल टेक डाउन डेडली 10 एज वेल। 3 वर्सेस 3 एक्सेप्ट एस्ट्रा इज वेरी लो ऑन एचपी। क्या ये ड्रीम कम ट्रू होगा? यहाँ पर स्पाइक प्लांट हो पाएगा? बैड लव हैज गॉट सच अ स्ट्रॉन्ग व्यू कमिंग इन। एक अच्छा नेबुला का यूजेज भी स्पाइक कंप्लांट करने के लिए ए साइड पर रोटेशन ले लिया गया है। कैक्टस बैड लव को ले लेंगे, टर्निंग इट टू अ 2v3 अफेयर एंड स्टिल आई वुड नॉट डिनाई कैक्टस के पास काफी लो एचपी रहेगी। ट्रिप फाइव डिस्ट्रॉय हुआ है, मतलब का रियो वाज एंटिसिपेटिंग हियर वंस अगेन 2v2। क्या स्पाइक प्लांट होगा या फिर इट इज अगेन गोइंग टू गो 14:14 स्पाइक प्लांट होते हुए नजर आ रहा है। शॉक कार्ड में विजुअलाइजिंग एंड ये किल ले लिया गया है। स्पाइक विल नॉट बी प्लांटेड फॉर श्योर एंड यहाँ पर डिफेंडर्स जीत जाएंगे, टर्निंग इट टू 1 मोर ओवर टाइम 14-14। Switching sides. Overtime. लेडीज एंड जेंटलमैन ओवर टाइम फिर से कंटिन्यू होगा एफएसई स्पोर्ट्स वर्सेस वियर ई स्पोर्ट्स। सैसमी यहाँ पर फ्लैश पे यूज़ करेंगे एज अ डिफेंडर्स। हमने एफएसई स्पोर्ट्स को बार बार देखा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड यहाँ पर एक पिक लिया जा सकता था। श्राउडेड स्टेप का एक अच्छा मूवमेंट, ए साइड पर इमीडिएट कंट्रोल आ चुका है और यहाँ पर ट्रैप फायर का यूजेज भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। स्पाइक एम को केज ट्रिगर है, पैरानोया के इन्फ्लुएंस में प्लेयर्स आ चुके हैं, साइड कंट्रोल जरूर आ चुका है लेकिन क्या यहाँ पर प्लांट करने का मौका मिलेगा? ट्रेड लिया गया है, 2 प्लेयर, ट्रेड बिल्कुल नहीं लिया गया, डैमेज डिलीवर किया गया। एफएसई स्पोर्ट्स यहाँ पर 2 प्लेयर्स डाउन, 3 वर्सेस 5 का सिचुएशन। शॉक डार्ट का यूजेज भी नजर आएगा। बैड लव एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं वो हम जरूर देखेंगे क्योंकि स्पाइक प्लांट हो चुका है। वियर्ड स्पोर्ट्स इज कमिंग टुवर्ड्स द लीड। आई थिंक यहाँ पर हम एक 15-14 स्कोर देखेंगे। इसके बाद फिर से मैच पॉइंट आएगा एंड देन इट विल बी द डेस्टिनी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर स्मोकिया और एक पिक निकालेंगे, टर्निंग इट टू 2v3 ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा स्पाइक डिफ्यूज करने के लिए। कैक्टस विद द ड्रीम एंड द ड्रीम will not come true. It is going to be Rio to shatter all the dreams of Cactus and getting the lead for VALORANT Esports. 15-14 का स्कोर हो चुका है इधर एंड ये ओवर टाइम काफी ज्यादा लंबा जाते हुए नजर आएगा। अब एज द डिफेंडर्स नजर आएंगे VALORANT Esports एंड कोहली वेल एज एस्ट्रा क्या करना चाहेंगे? स्पाइक को निग्लेक्ट किया जा रहा है, वेल नहीं किया जा रहा, स्पाइक पिक कर लिया गया है। कौन सी साइड को कमिट करेंगे वो एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। Here. Take flight. ड्रोन की एंट्री हो चुकी है साइट में, आगे देखेंगे क्या करना चाहेंगे। कैक्टस यहाँ पर बहुत ही अच्छा साइड एंट्री ले चुके हैं। यहाँ पर एक अर्ली पिक रख सकते हैं, ब्लेज का यूज और यहाँ पर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। अच्छी पोजीशन मिल चुकी है। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी 1 मोर ओवर टाइम। स्मोकिया यहाँ पर 2 पिक्स ले लेंगे, स्मोकिया को ट्रेड आउट कर लिया जाएगा बाय डेडली, बट डेडली को भी डाउन कर दिया गया, टर्निंग इट टू 4v1 एंड ये 4v1 बैड लव है। वी कैन एक्सपेक्ट कमिंग इन
time, but not with a flash of eye god. And once again, the scores will equalize. Overtime continues. 15 and 15 score है Switching FS sides. Esports as well as VALORANT Overtime. Esports के लिए. अब एज अ डिफेंडर्स एफएससी स्पोर्ट्स ये क्या ये राउंड निकाल पाएंगे? वी आर आई डिड मेंशन कि एज अ डिफेंडर काफी स्ट्रॉन्ग खेलते हैं एफएससी स्पोर्ट्स, लेकिन दिस टाइम अराउंड आई थिंक एज अ this is a अटैकर भी nice one. कमाल कर गए, बिकॉज दे जस्ट where to लॉस्ट set up वन प्लेयर ओवर अदर्स. फिर से एक बार B2 को हम साइड ए पर फोकस करते देखेंगे. एक अच्छा श्राउडेड स्टेप देखने को मिला है, लेकिन स्पाइक कैम ने टैग कर दिया है. टैग निकालने की कोशिश की जा चुकी है. नाउ द प्लेयर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ रोटेशन. पता चल चुका है कि प्लेयर्स हैव कमिटेड टू साइड ए, लेकिन एक अच्छी पोजीशन कैक्टस की. दे हैव टेकन डाउन 2 पिक्स ऑलरेडी एंड स्पाइक डाउन. पैरानोया का यूजेज और यहाँ पर B2 और एक किल निकाल लेंगे. विद दैट एफएससी स्पोर्ट्स हैव टर्न टुवर्ड्स द लीड एंड विल कैक्टस बी द मैन टू नॉक द फाइनल नेल इन द coffin. With that turning the score to 16-5, and once again match Switching point for sides. FSC Sports as well as the Match title of this tournament of Asus Rog Showdown Series 2021. Who will be the winner? That is going to be question. काफी ज्यादा देर से ओटी पर ओटी चलते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ये एक डिसाइडिंग मैप है एफएस की लीड के साथ. नॉट ओनली दिस मैप बट एंटायर टूर्नामेंट एफएससी स्पोर्ट्स के हाथों में आ जाएगा. कैक्टस फिर से एक बार हाईएस्ट फ्रैगर बन जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या होगा नेक्स्ट. वेल यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लिया गया है. 16-5 का स्कोर नज़र आएगा एंड ये पॉज जो होता है हमेशा मोमेंटम तोड़ देता है. पॉज क्लियर आउट हो चुका है. फिर से एक बार साइड ए को कमिट करेंगे. साइड ए को यहाँ पर रिकॉन किया गया है और अच्छी खासी फिर से एक बार एस्ट्रा के स्टार्स प्लेसमेंट हम कह सकते हैं. सेसमी यहाँ पर ग्रेविटी बेल अर्ली यूज़ कर ली गई. वियर्ड रियो कैक्टस को टेक डाउन कर लेंगे एंड यहाँ पर एडवांटेज इमीडिएटली अचीव कर लेंगे. एफएसआई गॉड यहाँ पर सैसमी को डाउन कर चुके हैं. शॉक डार्ट का अच्छा यूजेज, लेकिन इतना इनफ नहीं था टू कंफर्म द नॉक, कंफर्म द किल. एक रिस्की मूव लिया गया एंड स्मोकिया ने उसका पूरे का पूरा एडवांटेज लिया. टर्न टू 4v3 अफेयर, लेकिन एचपी की काफ़ी ज़्यादा कमी नज़र आ रही है. स्पाइक अभी भी प्लांट नहीं हुआ, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा है. पूरा 1 मिनट का टाइम यहाँ पर नज़र आएगा एंड देखेंगे कोहली क्या यहीं पर होल्ड करना चाहेंगे. बैड लव यहाँ से विकेट नहीं कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं. ही इज हैविंग द थ्रेट कि अभी भी प्लेयर्स इधर है. रोटेशन नहीं लिया गया है. एस्ट्रा का स्टार यूज किया गया है एंड यहाँ पर रिकॉन के यूज होते बैड लव ने थ्रेट रियलाइज कर लिया है और यहाँ पर डेडली बैक स्टेप करेंगे. B2 को ले लेंगे बैड लव, सोफिया को ले लेंगे एंड डिफेंडर्स ओवर मैच पॉइंट को ओवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे, टर्निंग इट टू 16 एंड 16 स्कोर. Overtime. साइड्स फिर से एक बार स्विच होंगी. साइड स्विचिंग stands a very prior role ताकि मोमेंटम क्रैश किया जा सके, न्यू स्टोरी लाइन बिल्टअप हो सके. एंड एज अटैकर्स we the esports have proved them every single time by going for this particular map to score of 0 to 6. Well, certainly they are doing very very good and let's hope something better comes in. Sesame को हम यहाँ पर देख पाएंगे. Sesame यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं towards the long A and कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, रियलाइजिंग कि यहाँ पर एनिमीज आ चुके हैं. इंटेल पास हो जाएगा. एफएस कैक्टस फिर से एक बार ऑफ एंगल स्पॉट पर होल्ड कर रहे हैं एंड स्पाइक नहीं लिया गया. नोबडी इज द स्पाइक कैरियर. इस बार यहाँ पर एक अल्टीमेट बैटल, अल्टीमेट शोडाउन जस्ट बाय किल्स देखने को मिल सकती है. देखेंगे वो किल्स किस तरीके की होगी और आगे जाते हुए नो पिक व्हाटसोएवर. डिफेंसिव है एफएससी स्पोर्ट्स, आगे बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे. दे आर वेटिंग फॉर द प्लेयर्स टू कम इन. ड्रोन का यूजेज रियलाइजिंग कि ए साइड पर अभी भी प्लेयर्स हैं. आगे क्या होगा वो हम जरूर देखेंगे. एंड रिवील का यूज किया गया. रिवील वाज नॉट वेरी क्लियर, लेकिन केज से रियो अपने आप को बता चुके हैं. लेट्स होप कि कुछ अच्छा मूवमेंट पिक किया जा सके बिकॉज टाइम इज टिकिंग विद ओनली 42 seconds रिमेनिंग. आगे क्या होगा? 4 people committing for the side C and it is going to be only 1 player here. अब यहाँ पर इंटेल दिया जाएगा. कैक्टस काफी अच्छा एंगल होल्ड करके बैठे, लेकिन पैरानोया का एक अच्छा यूजेज. डैश यूज करके साइड में एंट्री, एक पिक लेंगे, ट्रेड आउट होंगे. 3v3 में कन्वर्ट हो चुका है
remaining. and I think it is going to be a lead coming in for Weird Esports. ये बहुत ही close call चल रहा है and it is Spike as planted. anticipated. यहाँ पर एक लीड बनते हुए नजर आएगी एंड स्कोर हो चुका है 16-16. ओवरटाइम इज गोइंग फॉर एन ओवरटाइम बाय ओवरटाइम फ्रॉम 12 राउंड्स अंटिल 16. एक अच्छा परफॉर्मेंस पुट कर रहे हैं दोनों ही टीम्स, गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है एंड दिस राउंड इज ऑलरेडी गोइंग इनटू द फेवर ऑफ Weird Esports. एस्ट्रा का नेब्यूला क्या कवर दे देगा वो एक क्वेश्चन होगा, लेकिन लोकेशन रिवील हो चुकी है. रियलाइजिंग कौन से एंगल से एस्ट्रा एंट्री लेंगे एंड डेडली 10 will be the man to take him down. फिर से एक बार Weird Esports एक लीड ले लेंगे Switching एंड sides. Match साइड point. स्विच होगी एंड FSE Sports, is it a dream come true, is it a comeback story, or it is not going to be one? Let's see what will happen here, because अगर FSE Sports ये राउंड हार जाती है that means Weird Esports का स्कोर हो जाएगा 2-2 एंड एक एक्स्ट्रा मैप हमको देखने के लिए मिल सकता है, द डिसाइडर्स मैप, जो कि है ब्रीज. एंड अब देखेंगे अगर FSE Sports ये मैप जीत जाती है तो फिर से एक बार ओवर टाइम की ओर आगे बढ़ेंगे. इस साइड पर पुश किया जा रहा है और यहाँ पर Weird Rio एक अच्छा प्लेसमेंट होल्ड करके बैठे, ड्रोन को डिस्टर्ब कर दिया गया है, टोटली वेस्ट आउट कर दिया गया है एंड यहाँ पर इंटेल पास हो चुका है. लुक एट द रोटेशन कमिंग इन फ्रॉम Weird Esports. सारे प्लेयर्स एक साथ ये साइड पर आ चुके हैं एक्सेप्ट वन मैन, वहां पर साइड को वकेट नहीं करना चाहते. बैड लक विद द स्नाइपर वंस अगेन. एक स्प्लिट है 3-2, 3 प्लेयर्स एंटरिंग थ्रू द मेन एंड 2 थ्रू द स्टीवर्ड्स एंड यहाँ पर पिक लेने की कोशिश अनसक्सेसफुल रहेगी एंड कोहली यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं. यहाँ पर रिवील का यूज नहीं किया जा रहा, इंडीड शॉक डार्ट का यूज किया जा रहा है. रिवील will be used now. Sasmi यहाँ पर स्पॉट आउट हो चुके हैं. फ्लैश का यूजेज बहुत ही अच्छा, नोवा पल्स का टाइमिंग और यहाँ पर one by one the team Weird Esports will be shattered. Finally pick लिया गया है by Bad Love and Spike को डाउन करके गए. स्टिल man to man advantage यहाँ पर होने वाला है FSE Sports के हाथों में and turning it to a 3v2. except we cannot underrate कि साइफर 30 के पास seconds बहुत left. लो HP है. स्पाइक प्लांट कर दिया जाएगा. डेडली की planted. एंट्री आते हुए नजर आएगी एंड यहाँ पर रियो की एक अच्छी प्लेसमेंट. स्मोक की कमी एस्ट्रा के पास जरूर नजर आने वाली है. केज अभी भी हाथों में है. लेट्स सी इज स्पाई कैम गोइंग टू बी यूज्ड और नो. केज ट्रिगर टू गेट द एंट्री टू द साइड, लेकिन विद दैट द रिवीलेशन कम्स इन क्लोज. रिवील हो चुका है कौन सी साइड से एंट्री होगी. अदर 2 One प्लेयर्स enemy आर remaining. आल्सो रेडी, टर्निंग इट टू अ 1v3 and Kohli makes sure to knock the final nail in the coffin. Ladies and gentlemen, फिर Switching से एक sides. बार एक और टाइम आ Overtime. चुका है, turning it to a 17-17. I need this. My thanks. फिर से एक बार हम This goes FSE here. Sports को एज अ डिफेंडर देखेंगे. आगे क्या स्ट्रैटेजीज रहेगी वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बना हुआ रहेगा. Yes, this should do. अब इसके बाद goes there. यहाँ पर अच्छा खासा B2 सेटअप कर देंगे साइड C पर और यहाँ पर एस्ट्रा का नेबुला आ चुका है. डज इट मीन के C साइड पर कमिट किया जा रहा है कि या फिर एक फेक अटेम्प्ट किया जा रहा है. फॉर नाउ स्पाइक नहीं लिया गया है एंड एक गराज पुश हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. डबल डोर्स के पार्ट्स ऑलरेडी क्रॉस है सेट किया हुआ है बाय कैक्टस ऑलवेज होल्ड्स द ऑफ एंगल्स, uses the updraft every single time successfully, is able to take 2 picks altogether, taken 1 and on the verge of taking second but was not allowed by Bad Love. immediately trade out हो जाएंगे. Bad Love की ओर से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला. स्मोकिया यहाँ पर साइड पर होंगे एंड यहाँ पर Bad Love को टेक डाउन कर देंगे. अभी भी मैन टू मैन एडवांटेज और Weird Esports के पास नहीं है एंड FSE Sports एक अच्छा शो पुट अप कर सकती है. आई गॉड यहाँ पर नॉट ओनली 1 2 प्लेयर्स को टेक डाउन कर देंगे एंड 50 seconds and a dream to plant a spike against 4 players and Blaze का अच्छा खासा यूज जरूर था. MF God will totally dodge that Blaze और आगे जाते हुए नजर आएंगे. स्मोकिया यहाँ पर मिड विंडो से एंट्री लेते हुए नजर आएंगे एंड MF God वर्सेस स्मोकिया हम एंटिसिपेट कर सकते हैं. स्मोकिया के क्रॉस हेयर में आ चुके हैं. He already knows 30 where the last man is and
ultimately defenders will win. FSC Sports again coming to the lead. Match point as well as win point. क्या ये Switching एक win sides. point होने वाला है Match या point. फिर नहीं? क्योंकि अगर ये मैच जीत जाते हैं तो they are also going to win the titles, undeniable fact. And let's hope ये match point achieve हो जाए. Just in case not, we will be seeing Breeze map, a decider map. Cactus still being the highest fragger by crossing the total score of 31. Rio very close the total of 30 scores. We can see Cactus being the duelist achieving the score. लेकिन Rio as a initiator वो score achieve कर पा रहे. MF God भी एक अच्छा शो पुट अप करने की कोशिश कर रहे हैं काफी देर से और कर भी पा रहे हैं. Reaching to the score of 17. अब देखेंगे कि ये मैच किस डायरेक्शन में जाएगा, because I really want to see what will happen next, ladies and gentlemen. What will happen 18 and 17. For now we are seeing it as a break, and I really don't know what this technical break is for. अभी जब जब ब्रेक लिया गया है एक लीड तोड़ दी गई है, एक कंटिन्यूटी भी तोड़ दी गई है, and in just 2 seconds of time break खत्म हो जाएगा, and within 18 seconds the show will be back. FS Esports with the dream to plant the spike and win this round and the tournament all together. The stakes are really high, and let's see what happens here. And यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्लियरली कि स्पाइक कैरी कर लिया गया है B2 की ओर से, एंड यहाँ पर ड्रोन का यूजेज थ्रू द मिड विंडो टूवर्ड साइड बी. यहाँ पर बैड लव एज ऑलवेज होल्ड करने के लिए बैठे हैं, एंड नाउ रियलाइजिंग बी को पुश किया जा रहा है. दूसरे प्लेयर्स को कॉल कर लिया गया है. ब्लेज से थोड़ा सा डैमेज लेते हुए कैक्टस इमीडिएटली स्पाइक प्लांट हो चुका है, लेकिन करने का मौका नहीं मिलेगा. बियर्ड्रियो का शॉट डार्ट डिड द डील. कोहली ने भी बैड लव को टेक डाउन जरूर कर लिया. अब यहाँ पर आउट ऑफ चार्जेस होते हुए नजर आएंगे. सैसनी एक अच्छा डबल डोर होल्ड कर बैठे हुए हैं. ड्रोन का यूटिलाइजेशन टर्निंग इट टू अ 3v4 अफेयर. आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वन मोर ओवर टाइम, क्योंकि एचपी की कमी काफी ज्यादा नजर आ रही है. सैसमी अभी भी डबल डोर को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है. टू नॉट लव द साइड एंट्री. हम देखेंगे आगे क्या होगा, बिकॉज आई थिंक कमिटमेंट इज नॉट येट क्लियर. कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं. रोटेशन ए पर लिया जा चुका है, एंड व्हाट कम्स नेक्स्ट. 43 seconds and the dream to plant the spike and to win the tournament. डेडली आ चुके हैं, डेडली तौर से ये ड्रीम को शैटर करने के लिए, लेकिन ए साइड पर कमिट किया जा चुका है. 2 प्लेयर्स आ चुके हैं. डेफिनेटली हम यहाँ पर देख रहे हैं एक प्लेयर मिड में लर्क करते हुए, एंड स्मोकिया इज कॉट ऑफ गार्ड विद द ट्रैप फायर बीइंग यूज्ड. यहाँ पर शॉक डार्ट का यूजेज, स्पाइक पे फेक प्लांट की कोशिश सक्सेसफुल रही, टर्निंग इट टू अ 3v3 अफेयर, एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी अ 2v3 affair. Spike is being planted. एक अच्छा ट्रैप फायर का यूज, एंड यहाँ पर टैग कर दिया गया था. रियो को टैग रिमूव्ड ऑलरेडी, एंड द क्लॉक इज टिकिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. आफ्टर डिसाइडिंग सैसमी सक्सेसफुली B2 को ले लेंगे, एंड MF बहुत स्मोकिया को ले लेंगे. दिस इन टर्न्स गोज अहेड विथ वन मोर ओवर टाइम. Well, what a hectic map for the players, and Switching we sides. will see what Overtime. happens here. 18 and 18 is the score. Overtime still continues. VALORANT Esports are still of the deciding factor on which side to push. आगे देखेंगे कि what will happen exactly, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बढ़ते जा रहे हैं with every single map coming in, with every single overtime This is coming a in. nice spot. Nobody is ready to dodge, nobody is ready to give up, and this is real competition, ladies and gentlemen. ये एक ग्रैंड फाइनल्स है, हम यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सारे के सारे प्लेयर से. 18 and 18 का स्कोर है, एंड यहाँ पर एक डेडली 10 की ओर से कैंप प्लेसमेंट की कोशिश, एंड यहाँ पर सैसमी का इमीडिएट पुश, ये एक रिस्कियर पुश आ सकता है, और यहाँ पर स्मोकियर रिवील हो चुके हैं. इट वाज अ सोआ वर्सेस सोआ, एंड रेकॉन्डार्ट को क्रैश कर दिया गया है. सो नाउ द इंटेल दैट वाज पास्ड फॉर अ सेकंड, इट इज ऑल गॉन. सी साइड पर रोटेशन स्नीकी वे में किया जरूर जा रहा है, बट आई डोंट थिंक इट इज गोइंग टू वर्क फॉर एनी लॉन्गर हियर.
18-18. Bad Love अभी भी अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाहते हैं. He very well knows this will be the time जब 4 प्लेयर्स स्पाइक प्लांट करेंगे. मैं रोटेशन लेने वाले डिफेंडर्स को टेक डाउन कर दूंगा. आउट ड्रोन का यूजेज यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर रियो की ओर से काफी स्ट्रॉन्ग पुश और एनिमी टैग्ड और साइट में एंट्री नहीं मिलेगी. एंड इट इज गोइंग टू बी अ 5v4 बैटल. 49 seconds and a dream to plant the spike. Who shatters the dream? वो एक क्वेश्चन होगा. एक अच्छा सा केज में ट्रैप कर लिया गया एंड एक स्पॉट कर लिया गया, टर्निंग इट टू अ 3v5 अफेयर. डेडली की ओर से एक पुश जरूर आ चुका है. नेबुला का यूजेज राइट ऑन टाइम, रियलाइजिंग वेयर द एनिमी इज. शॉक डार्ट का यूजेज 30 seconds एंड विल इट बी अ ड्रीम कम ट्रू टू प्लांट अ स्पाइक या फिर विदाउट डूइंग एनीथिंग एफएस Esports is going to win this round. यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से नेबुला का यूज फिर से एक बार. कैक्टस आ चुके इधर. स्पाइक को डाउन करा दिया गया. 11 seconds. This spike definitely plant करना next to impossible with only one man remaining into the sides of weird Esports. यहाँ पर एफएस Esports फिर से एक बार लीड जरूर लेंगे लेकिन B2 यहाँ पर ज्यादा मौका नहीं देंगे. With that, it is a 19 score for team FS Esports and Weird Esports will try to contest the score. यहाँ पर 19 and 18 का score and the match point for team FS Esports 3 seconds and the match will start. The destiny will be written and over here Cactus की ओर से B window पर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करी गई है. ड्रोन का यूजेज बैड लव एज ऑलवेज. मिड पर विद द स्नाइपर नजर आएंगे. आई गॉड यहाँ पर हॉट हैंड्स का यूज करेंगे एंड लकीली थैंक्स टू द डार्क कवर वो डॉज कर दी गई बैड लव की शॉट. वरना तो बैड लव डजंट अलाउ. लेकिन रियो यहाँ पर अच्छी पोजीशन पर बैठे. कैक्टस को टेक डाउन करेंगे. B2 इमीडिएटली ट्रेड डाउन करेंगे. ट्रैप फायर में फंसे जरूर थे. ट्रैप फायर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया. बैड लव का थ्रेट इज डेफिनेटली रियर. अभी 4v4 सिचुएशन है. 1 मिनट है. अभी भी साइड कमिट करने के लिए काफी अच्छा मौका है. लेट्स सी कौन सी साइड पर ये कमिटमेंट दिया जाएगा. और शाउटेड स्ट्रैप का यूजेज जरूर है एंड इमीडिएट पैरानोया का यूजेज हमें देखने के लिए मिलेगा. लेकिन उससे पहले हमें स्मोक देखने के लिए मिल चुका है. वी कैन सी B2 वर्सेस MF गॉड एंड सैमसी का एक अच्छा डीलेड रोटेशन जिसके चलते स्पाइक प्लांट नहीं हुआ. लेस इन नंबर्स है एंड आई थिंक ट्रेड अच्छे चल रहे हैं. 3v3 हो चुका है. स्पाइक प्लांट करने का मौका अर्न कर लिया गया है. स्पाइक विल बी planted within just 30 seconds of time remaining. Fight of the equals and the dream of achieving the target, but Deadly will not allow the easy achieving of dream. Takes down Kohli and Smokia will take down Deadly. Hunter's Fury का एक early usage फिर से एक बार हमें देखने के लिए मिल रहा है. And might be taken down and it is going to be 1 versus 1. No! What in the world just happened? It was a complete victory coming in for FS Esports and the overtime will still continue. The Hunter's Fury did not work wonders, ladies and gentlemen. Well, tiresome journey for the players, for the casters for sure, but interesting alongside. And let's see, 1919, well, it will be a FML. What will happen here? No, it will be fill my life with the victories. Fill my life with the victories. Who is going to fill the life with the victories? Who is not going to go ahead? Bad Luck will definitely give a good push. And Samsi will try to block it. Now FSC again coming to the strength and will take a lead towards the score of 20. And will it be a victory? Dream to get the finisher and now the players are definitely looking very frustrated and spike carry नहीं किया जा रहा. फिर से एक बार fill my life with the victories, ladies and gentlemen. Who is going to win it out?
यहाँ पर एक कंफ्यूजन का टाइम है। 9 सेकंड्स में फिर से एक बार एक मौका है एफएस स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट जीतने का। हर एक बार वो मौका वी स्पोर्ट्स गवा देती है। एंड ये जो पिछला वाला हंटर्स फ्यूरी वाला राउंड था, वो हाथ से छीना गया है। एंड ये क्या था? व्हाट डिड आई जस्ट विटनेस? थ्रू दिस स्मोक एमएफ गॉड वाज एबल टू टेक डाउन कैक्टस ऑलरेडी। एंड आई थिंक FS Esports is already losing the time. यहाँ पर एक अच्छा बैड लव का स्नाइपर शॉट की कोशिश, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट नॉक नहीं लिया जा सका। बट अल्टीमेटली एक पैरानोया का अच्छा यूज, जिसके चलते एक और फ्री किल बोल सकते हैं आप, टीम सपोर्ट वाला किल, टर्निंग इट टू अ 3v5 अफेयर। एंड आई एम वेरी श्योर स्पाइक प्लांट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। डबल डॉट्स पर ही पूरे की पूरी पोजिशनिंग सेट हो चुकी है। B2 यहाँ पर पीक लेने से भी डर रहे हैं आफ्टर लूजिंग कैक्टस। डेडली यहाँ पर डेडली क्रॉस हेयर सेट करके बैठे हैं। 54 seconds and the dream to plant the spike. Hostile एक remove. पिक लिया गया है एंड दैट मीन्स कि फिर से एक ओवर टाइम हमें देखने के लिए मिल सकता है। एक डॉज टू शॉट डार्ट, सेकेंड डॉज टू शॉट 30 डार्ट। seconds left. यहाँ पर एक अटेम्प्ट टू गेट द एलिमिनेशन एंड यहाँ पर डेडली को डाउन करने की कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन वो कोशिश ज्यादा देर तक नहीं चली। वंस अगेन इट इज गोइंग टू बी ओवर टाइम, Switching टर्निंग इट sides. टू अ Overtime. 20-20। अब क्या होगा? एक इंटरेस्टिंग अफेयर। Here. फिर से एफएस स्पोर्ट्स एज अ डिफेंडर्स राउंड निकाल लेती है, लेकिन एज अ अटैकर डॉज हो जाता है कुछ ना कुछ होते हुए। Deep breath. Scanning ahead. स्कैन को भेजा गया है नेबुला के और चलते स्मोकिया एक और एक्सटेंडेड स्टेप ले रहे हैं, विच आई वुड डेफिनेटली नॉट एडवाइज टू गिव द लीड टू वियर्ड ई स्पोर्ट्स। एक अच्छा पैसिव अप्रोच रखा था, जिसके चलते स्पाइक प्लांट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट की थी, लेकिन ऑन द कोर्स ए साइड को बैरन रखा गया है। रोटेशन ऑलरेडी ऑन द वे आ चुके हैं एंड ए साइड को बैरन रखने की पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। देखेंगे वो पनिशमेंट कैसी रहेगी। विल इट बी द स्वीटेस्ट पनिशमेंट एवर और इट इज़ गोइंग टू बी द बेटर वन। यहाँ पर वियर्ड MF गॉड ऑलरेडी ए साइड की वेरी क्लोज जा चुके हैं एंड 4 players ऑन साइड सी टू एंड फाइनली रोटेशन दिया जा रहा है। फिर से एक बार सी साइड की और प्लेयर्स आगे बढ़ रहे हैं। फ्लैश का यूजेज हमें देखने के लिए मिलेगा। आई गॉट डीलेइंग इन द परफेक्ट पैटर्न, क्योंकि हमने देखा है डीले करके स्पाइक प्लांट करने की अपॉर्चुनिटी ना देके दे आर एबल टू विन द राउंड। एक हॉट हैंड्स का यूज हम देख रहे हैं, जिसके चलते डीले किया जाएगा एंड 36 सेकेंड्स में क्या यहाँ पर स्पाइक प्लांट करने का मौका होगा। ब्लेज काफी सही टाइम पे यूज किया गया है। 30 सैसमी seconds यहाँ left. पर अपने आप को बचा नहीं, यहाँ पर अपने लिए किल नहीं ले पाएंगे। अब इट इज 4 versus 5 सिचुएशन। MF गॉड की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, वो एक क्वेश्चन होने वाला है। ए साइड पर कमिट किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पर स्मोक क्या ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। केज थोड़ा सा अर्ली ट्रिगर हुआ है एंड आई रियली डोंट नो ये जो डार्क कवर था 10 seconds किसके left. लिए प्लेसमेंट किया गया है। कैक्टस आ चुके हैं विच इज 10 seconds एंड स्पाइक विल बी प्लांटेड। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पाइक planted. प्लांट हो चुका है इतना अच्छा अटेम्प्ट करने के बावजूद। नाउ इट इज अ 5v2 अफेयर और हेवन के नीचे प्लेयर को स्पॉट करके टेक डाउन कर लिया गया। वन प्लेयर इज डेफिनेटली गोइंग टू गो अहेड फॉर द डिफ्यूजल एंड वेयर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। He'll be able to take down one followed by the other, and will it be the third as well? No, Smokia will not allow that, turning it to a 21 Last player 20 standing. score. Once Switching again, sides. FSC Sports come Match towards the point. lead and to make the tournament into their name. क्या ये होने वाला है या फिर नहीं, या फिर ओवर टाइम फिर से एक बार वियर्ड स्पोर्ट्स अपने लिए अचीव कर लेगी। एफएससी स्पोर्ट्स रेडी ज़रूर है एंड हम देखेंगे स्पाइक फिर से एक बार हम देख रहे हैं एस्ट्रा कंट्रोलर के हाथों में आई गॉड क्या करना चाहेंगे। विल इट कम टू एन एंड या फिर एक ये नेवर एंडिंग प्ले चलता रहेगा। रियो यहाँ पर
सी लॉन्ग को देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लाइंग ड्रोन को भेजा गया जिसके चलते हर एक प्लेयर स्पॉट आउट हो चुका है। द व्यू दैट वाज रिक्वायर्ड वो आ चुका है और एक पुश भी रियो एक अच्छा एंगल लेके बैठे हुए हैं जिसके चलते B2 को टेक डाउन कर लिया गया है। फॉलो बाय दी अदर इक्वल ट्रेड्स जा रहे हैं। 3 वर्सेस 2 का सिचुएशन हो चुका है। लीड पर है। विल द स्पाइक बी प्लांटेड? दैट इज गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर नाउ। डेडली फिर से एक बार हेवन की ओर आ चुके हैं। शॉक डार्ट डाला गया विद द एंटिसिपेशन के वहीं पर है। डैमेज भी दिया गया है, काफी ज्यादा डैमेज दिया गया विद जस्ट 33 एचपी रिमेनिंग। एमएफ गॉड यहाँ पर से सीट से आते हुए नजर आएंगे। कैक्टस ले लेंगे एंड आई थिंक वी आर कमिंग टू अ क्लोजर लेडीज एंड जेंटलमैन। वी आर डेफिनेटली कमिंग टू क्लोजर। 1v2 सिचुएशन। इज इट गोइंग टू बी द अनाउंस्ड विक्टर्स? या केस का एक अच्छा शानदार यूजेज एंड इट इज गोइंग टू बी कैक्टस to finally end the overtime and end the tournament into their favor, turning it to a 20-20 score. What a play, what a show put up by FS Esports. Congratulations for such a strong play. And Cactus, you are the man to watch out for every single time required. You made it possible and you are the announced victors, announced winners for ROG Showdown series. You put up the show so strongly and you made it all yours. Congratulations once again. And the prize distribution that we're talking about, you very well know about it. The winner gets 50k INR and the runner up Beard Esports definitely putting a very strong show into the map of heaven. लेकिन a little low यहाँ पर हर टूर्नामेंट में या आप कुछ सीखते हैं या आप कुछ जीतते हैं। जीत कर जरूर एफएससी स्पोर्ट्स चली गई है लेकिन यहाँ पर वीआरडी स्पोर्ट्स काफी ज्यादा सीख कर जरूर गई होगी। Congratulations for winning this tournament. ROG Showdown series of Valorant powered by Intel बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया ओवर टाइम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, which was literally giving goosebumps, which was literally giving the pulsation every single time. And ultimately the day has come to end and it is going to be FS Esports who ends up into their favor. बहुत अच्छा शो पुट अप था एंड फर्स्ट मैच जब हारे I thought कि FS Esports is not the one that I was rooting out for the starting of the show, and ultimately the players that I was watching out for one by one अपना show put up करते गए, अपना performance दिखाते गए, and into the grand finale, grand finals, winning it with the hat trick is never too easy. But FS Esports definitely pulled up their socks and tightened their belts as well as rolled their sleeves. With that they went with a new magic card every single time and they definitely made their day towards their themselves, and it was a wonderful day for them. And congratulations to all of them all together. Well, ladies and gentlemen, how did you like the show? This is just one tournament coming in, many more in the future. Links description में है, अगर आपने अभी तक सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया फॉलो कर लीजिए एंड आप फॉलो करने के साथ आपको नए नए टूर्नामेंट्स की अपडेट्स आती रहेगी। यू रियली नेवर नो हु इज गोइंग टू बी द विनर नेक्स्ट टाइम, तो आप अपने लिए एक सोशल मीडिया पर फॉलो करिए, उसी के साथ ऐसे टूर्नामेंट्स बार बार आते रहेंगे। एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू थैंक ROG Asus ROG Showdown series to allow me to give me the opportunity to cast, and it was wonderful being the part of the tournament held right now. And just in case, if you are a gamer or not a gamer, peripherals as well as the products will be into the description. Just in case if you want to be a gamer or for the routine purpose, you can definitely go ahead and go order itself as well. हम match wise scoreboard पर जाएंगे सबसे पहले and we will see about how this game exactly went. हमें पता है कैक्टस ने एक बहुत अच्छा शो पुट अप किया था जिसके चलते कैक्टस को हम डेफिनेटली एक MVP के रोल में देखेंगे, लेकिन वी कैन नॉट अंडररेट और अंडर एस्टिमेट द प्ले ऑफ एवरी अदर प्लेयर एज वेल, क्योंकि कहीं से भी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी फॉर दिस पर्टिकुलर मैप। हम कह सकते हैं कि इन द मैप ऑफ बाइंड कमी नजर आई थी, इन द मैप ऑफ स्प्लिट कमी नजर आई थी, इन द मैप ऑफ एसेंट नजर आई थी, लेकिन ये मैप में कोई कमी नहीं रखी गई थी एंड इट वाज द टेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर मैप। इट वाज अ गुड प्ले फॉर FS Esports के वो लीड बना चुके थे एंड दिस वाज द मैप दैट वाज रिक्वायर्ड टू गेट द टाइटल।
We are here with a map wise scoreboard, ladies and gentlemen. Without a doubt, Cactus को हम नंबर 1 पर देख रहे हैं, and this was totally expected. काफी अच्छा परफॉर्मेंस रखा गया था, लेकिन from Weird Esports as well, being the initiator, एक अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप करने की कोशिश रियो ने करी थी. 36 किल्स भी निकाल लिए गए थे, एंड दैट वाज डेफिनेटली नॉट इनफ. अगर वी टॉक अबाउट फर्स्ट ब्लड्स, आई गॉड को एज ए ड्यूलिस्ट हम डेफिनेटली एक राउंड ऑफ अप्लॉज देंगे, क्योंकि फर्स्ट ब्लड निकालना एज ए ड्यूलिस्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द साइड कैप्टिवेटेड, एंड दैट डेफिनेटली मेड इट ईजियर. तो कॉन्ग्रेचुलेशन आई गॉड, आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी. स्मोकिया certainly went overboard with total of 32 kills for himself. And coming back towards the plants and refusals, total 16 plants कर लिए थे टीम, या टोटल 16 प्लान्स यहाँ पर कर लिए थे एफ एस ई स्पोर्ट्स ने. बट इफ यू टॉक अबाउट वियर्ड ई स्पोर्ट्स, प्लांट्स की अपॉर्चुनिटी कम मिली थी, विच इज टोटल, आई थिंक इट कम्स टू टोटल ऑफ 12 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. एंड इंडीड यस, इट इज 12, जिसमें से डिफ्यूजल्स टोटल 3 हो चुके थे, एंड टोटल 5 डिफ्यूजल्स हुए थे फॉर वियर्ड ई स्पोर्ट्स. एक अच्छा शो पुटअप किया एज अ इनिशिएटर. वियर्ड रियो ने भी 8 अर्ली पिक्स निकाली थी, फर्स्ट ब्लड्स निकाली थी. एंड इफ यू कंपेयर अबाउट समथिंग दैट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट, लीस्ट अमाउंट ऑफ डेथ, इट वाज नो वन बट कैक्टस विथ ओनली 25 फ्रैग्स कंपेयरिंग टू ऑल 10 प्लेयर. सबसे कम था. एक बहुत ही अच्छा शो पुटअप था. टीम सपोर्ट जो था सडनली एफएससी स्पोर्ट्स की ओर से अग्रेशन के साथ आ चुका था. लेट्स हेड टूवर्ड्स पीवीपी, प्लेयर वर्सेस प्लेयर. किसकी कंपैरिजन होगी? इट हैज टू बी रियो वर्सेस कैक्टस. अनडिनाइबल फैक्ट, हम देखेंगे कि किस तरीके का प्ले हुआ था, एंड इट इज गोइंग टू बी रियो वर्सेस कैक्टस फॉर श्योर. 39 kills coming in for Cactus and 36 for Rio. Cactus, well, we did not see him yesterday in map wise, and this was the hidden card, and he turned out to be the ace of spade for his team. Paid every single time, and इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद अपने लिए एक MVP की भी जगह बना ली है into the PvP with total of 25 deaths compared to 30 deaths for Rio. Rio being an initiator got a good opening. 1.56 KDR था, but here 1.2 था, and assists में कहीं पर भी रियो ने कमी नहीं छोड़ी थी. So if you look at Rio as well, 8 अर्ली पिक्स मिले थे, फर्स्ट ब्लड्स मिले थे, उसी के साथ अपनी टीम के लिए 12 असिस्ट्स भी अर्न करे थे. तो वी कैन अप्रिशिएट Rio as well in every single direction for his team. But जो bottom two players थे into the map wise scoreboard, थोड़ा एक्सटेंसिव सपोर्ट आता, तो वी कुड हैव सीन एन एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो. Maybe we could have gone towards the deciding map, which was Breeze, but ultimately winners are declared. It is FSC Sports. Cactus ने कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी थी, and team support में भी कहीं कमी नहीं रही थी. तो I started appreciating him since the map of Split, and it was at that exact point जब I started noticing him, because until then we were appreciating each and every player, and I was not even expecting him to be the highest fragger to the map of Split. And as soon as the scoreboard came in, my each and every thought totally changed, and I was like, yes, he is taking every 3 picks. Talking about Cactus too much, let's also head towards the MVP for the day. और यहाँ पर हम आ चुके हैं towards MVP. Who other than Cactus could achieve that from FSE Sports? Heartiest congratulations Cactus. आपने बहुत ही अच्छा शो पुट किया व्यूअर्स के लिए, प्लेयर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, एंड ओपोनेंट्स के लिए. आप एक लेसन बन के रह गए हो, और वो लेसन लर्निंग लेसन है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको फेस करने के लिए आएंगे, उनके पास नई टिप्स होंगी, नई ट्रिक्स होंगी, ताकि दे कैन टेक यू डाउन with being able to take down 1.56 picks per round, that is on an average. हर 2 राउंड में आप 3 किल निकाल लेते हो. What else would you want? And 6 assists as well, and last man surviving every single time, pulling it out, clutching it out, and making the day all yours by yourself.
and we will also head towards for the overall scoreboard. well ये overall scoreboard हमें बताएगा पूरा जर्नी कैसे रहा था, अबाउट विच टीम वेंट हाउ, किस तरीके से चेंज किया गया था सिनेरियो को। वियर्ड ई स्पोर्ट्स शुरुआत काफ़ी स्ट्रांगली करी ज़रूर थी, बट अल्टीमेटली दे कुड नॉट कंटिन्यू। We will talk about the journey later, but if we come back towards overall scoreboard, 7 kills away, Smoke. Yeah, you were just 7 kills away for reaching the century. Nevertheless, you are still the highest striker for your team. Very well played. Cactus with total of 74 kills. Well, he was not playing one match. Apart from that, he was able to achieve the score of 74. And that is how he deserves to be the MVP. And with total of 0.96 KD, that indicates के total kill per ratio Cactus से अच्छा किसी का नहीं था. And if we talk about assists, well, Smokia, what were you up to, man? Assists ही half century के आसपास आ चुकी है, and the deaths 56. The man to die least was, of course, Cactus. I don't know if I should be saying it that way कि आप सबसे कम games खेले थे इसलिए, because even without that, into the map of Haven आपने wonders कर दिया. Coming towards the weird esports, bad luck की ओर से 78 kills, 79 deaths and 13 assists. यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि रियो की ओर से असिस्ट 33 थे, एंड एम एफ गॉड बीइंग द ओमन फॉर द टीम एक अच्छा शो पुट अप कर रहे थे एंड एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे. लेट्स सी, इट वाज अ ग्रेट ग्रेट डे, लॉन्ग डे, एंड लॉन्ग डे इन द सेंस कि किस तरीके का परफॉर्मेंस पुट आउट करने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन अल्टीमेटली विनर्स आर डिक्लेयर्ड. एक एफ एस स्पोर्ट्स की ओर से एक आउटशाइनिंग, एक शानदार परफॉर्मेंस एंड अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस, एंड एक ऐसी हिस्ट्री लिखी गई है. जब बाइंड में उन्हें हराया गया तो वो आए एक नॉन स्टॉप रेसर की तरह. नाइट्रो बूस्ट वुड बी द एग्जैक्ट वर्ड, एंड द बूस्ट दैट no one could stop it at all, winning the tournament of SSROG Showdown Series Valorant 2021 with the score of 3-1. And mind you, ladies and gentlemen, ये 3 हैट्रिक फेज में था. ग्रैंड फाइनल्स के अंदर 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज are always difficult to achieve. What a show, man, what a show. Particularly एक वाइब्रेशनल मैप होता है. हमेशा आपको कोई एक मैप बहुत अच्छा लग जाता है, एंड यस, ओवर टाइम वाला मैप आपको एक, यू कैन से इट इज टायरिंग, बट आई वुड से एक वाइब्रेशनल मैप अगर मेरे लिए कोई होगा तो इट वाज द मैप ऑफ हेवन. एंड आई गॉट अटैच्ड टू दिस मैप बिकॉज एवरी सिंगल टाइम टेबल टर्न होते हुए नजर आ रहे थे, क्रॉस होते हुए नजर आ रहे थे, अचीव होते होते चले जा रहे थे. एंड दैट इज व्हाट यू एंजॉय, राइट, व्हेन यू गेट टू सी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग कमिंग इन, व्हाट यू एक्सपेक्ट द मोस्ट. एंड अल्टीमेटली expectations were clear for FSE Sports, not for the casters, not for the analysts, not for the production unit, but ultimately FSE Sports had the targets determined for themselves, making the day in their name, making the tournament in their name, making themselves the proud victors for the day. It was a great day, and I would appreciate for the assists MF God, though you did not play, assist में कहीं पर भी कमी नहीं छोड़ी है. And I would give a round of applause to the winners for the day, FS Esports. Once again, we are Esports, heartiest congratulations. You are the first runner up for the tournament. You're not going empty handed, you are going with the prize pool and so much lessons to learn. Intel, this tournament was totally powered by Intel and SSROG Showdown Series. Thank you once again for giving me this opportunity to having to cast this show. And this show was definitely very interesting. It was last final match that totally turned the tables, made the day for me. And once again, to the production unit, you put up a good efforts for making it easier on the casters to give a good day. Thank you to the viewers who join in, thank you to the players for participating, and special thanks to the sponsors SSROG Showdown powered by Intel for once again giving me the opportunity. This is Star Tanya, and just in case, if you want to follow me, if you enjoyed the show, make sure to follow me on Instagram. My Instagram handle is Tanya Gaming YT. Definitely do give a follow, and let's meet up soon. Take care of yourself, and let's call it a night.
got him. Let's go. आई गॉड अभी भी हुक्का देखते हुए एंड आई गेस एटली स्पॉट करते हैं एंड आई गॉड विल गो डाउन स्मोक आ जाते हैं एंड इमीडिएटली बैडलब एक नॉक निकाल लेंगे, सेसमी ले लेंगे एंड economy. But looks like VALORANT Esports is definitely having a good beginning and through the smoke, deadly gives a deadly shot and Kohli will go down. प्ले ऑफ पेशेंस दिखाया जा रहा है लॉन्ग पर से एंट्री लेने की कोशिश, बट यहाँ पर एक शॉट एज अ स्काई कुछ करने का मौका नहीं दे रहे। बड़ा के खेल सकते हैं, मल्टीपल किल्स मिलने का चांस है, नाइफ पे जाएंगे कि नहीं? नहीं, बैड लक. There you go. Bad luck is doing very well. He's gonna get himself a अलग ही सीन चल रहा है. There's one player over towards the Charles who's trying to make all the what? That did he just hit through the wall and get that shot confirmed? इतना ज्यादा एक्सपोजिव, इतना ज्यादा रिवीलिंग खेलकर कोई एडवांटेज नहीं होगा। स्मोकिया की अच्छी प्लेसमेंट एंड यहाँ पर टोटल एक्सप्रे में 2 प्लेयर्स को ले लिया एंड गोस्ट के यूजेस और एक को ले लिया Esports के। अब देखेंगे VALORANT Esports are in the lead by 1 point for best of 5 and it land चुका है। Now it is all up to last man standing. की अच्छी पोजीशनिंग आ चुकी है। He will not allow the mid rotation, लेकिन यहाँ पर रिस्क लिया जाएगा, नहीं चलती है। रियो ने टेक डाउन कर देंगे, टर्निंग इट टू अ 4v4 अफेयर। कैक्टस यहाँ पर एंड यहाँ पर एक स्वॉर्म ग्रेनेड की यूजेज कोहली आ चुके हैं अंदर, एक पे निकाल लेंगे। साइड एंट्री अलाउ बिल्कुल नहीं हो रही। फ्लैश का यूजेज साथ जा चुके हैं और हैव स्पाइक एज ऑफ नाउ। नाउ एग्जैक्ट पोजीशन वाज रिवील्ड वॉल बैंक के चलते। यहाँ पर एक ब्लाइंड का यूजेज एंड रन इट बैक का यूज कर लिया गया है। अल्ट का एक अच्छा यूज हमें देखने स्टॉर्म के हाथ में था शेरिफ एंड वो अभी बीमन की तरह जा रहे हैं एंड उनका हेड प्ले स्मोकिया की ओर से एज अ एस्ट्रा एज अ कंट्रोलर देखने के लिए मिल रहा है। हेडशॉट यहां पर इंशाल्लाह, बट इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ज्यादा इससे फर्क पड़ने वाला है कि एफ साइड के लॉन्ग टुवर्ड्स सैसमी, उनके पास ब्लेड्स आउट भी है। ये अपने ब्लेड्स आउट के साथ काफी चट विद द ऑफ फॉर शॉट एंड ड्रोन को डैमेज कर दिया है। इमीडिएट डैश का यूज करके एंड नॉट को पिक कर देंगे। हेडशॉट इमीडिएटली बैड लक को ट्रेड कर देंगे एंड यहाँ पर नबीला का एक अच्छा यूज। 3v5 सिचुएशन FSC Sports, I don't think ये राउंड उनके हाथ में जाने तक। Well, to be honest, अभी भी कमबैक काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। स्टॉर्म अभी एक team he can get a double kill, but Igor is standing way too close and he will get us wrong. He's trying to have a catch over towards the mid. Nobody knows that he's over here. Yeah. And Cactus on the other hand, he definitely did go for a quick rotation. He gets one and there comes Kohli. There comes Kohli. He's gonna be caught in both the players off guard and Cactus in one. By not holding a spike is equal to the round immediately going into the hands, except he might get a pick coming in. He wanted a melee finisher though and trying to put a wall. I really don't know what for, just saving the weapon for the next round which will not Time buddy. And there comes Cactus with a double kill. Is he looking for more? टेक डाउन करेंगे सेसमी को और यहाँ पर साइड क्लियरेंस मिल चुका है और सेकंड Down a lot of advantage with the plant going down. VALORANT Esports look like they started on a bright note. After the attack is in deadly 10. He's definitely not gonna let FSC Esports walk into the. He should know where exactly the last person is standing down. A 1v1 situation spots him out. 69H starting 2-0. Well, it's a 4-spy round for VALORANT Esports, so why not? And one players are rotating from the B-bomb side. Nokia, the second he goes down at the last. Well, ये तो फुल बाय राउंड है तो VALORANT Esports जरूर उनका बोनस राउंड पे गराज पुश को डिले कर दिया गया है। ऑन द कोर्ट स्पाइक भी प्लांट कर लिया गया है विद दैट रियो और एक डाउन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एचपी को लो कर दिया है और इजी किल भी ले लिया है। Last player standing. Yes. Well, things are definitely looking. पर कैपेट से MVP बन पाएंगे। एमएफ कोड पैरानोया का यूज करेंगे।
सैसमी यहाँ पर एक पिक से फिनिक्स हमारे सासनी उनके पास वाले बट उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया है कैक्टस एक किल लेते हुए थिंक हिज पोजीशन विल बी गिवन अवे बट कोहली इज गोइंग इन फॉर द डिफ्यूज हाफ डिफ्यूज हो चुका है बट with that damage deliver नहीं हुआ है and committing towards site एक pick Esports is going to not give them any rewards, at least not from what I said. Enemy remaining. I think FC Esports but अगर ये राउंड उनके हाथ में आ पाए तो अच्छा होता था but I guess that's not happening Saphagos And I don't know what for did he use. Flash से site entry की कोशिश and immediately cloudburst का use करके आ चुके हैं लेकिन कोहली इस बार इतना easy नहीं होने देंगे and आ चुका रियो can't have this to advantage outnumber करने की कोशिश की गई है Cactus और Fire once again taking down one follow up pick ले सकेंगे 1v4 में एक को ले चुके हैं and how many more to go no more पे जा चुके हैं he's been tagged he has his ultimate 2 up traps and one dash MF God gets on a kill on towards I God. He spotted out the jet. He's gonna be going back to the garage. He still has an AWP in his hand. And then already Joke's over. You're dead. यूटिलिटी यूज अल्टीमेट यूज किया गया है एंड यहाँ पर फिनिश करने की कोशिश की जरूर गई थी जरूर है तानिया मुझे लगता है कि उनके पोजीशन भी काफी क्लोज है यहाँ पे काफी अच्छा ट्रेन है उन्होंने कमाल मचा दिया है डिफेंडर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो जरूर हो रहा है और रन इट बैक यूज आई गॉट करेंगे एंड यहाँ पर अच्छा अल्टीमेट यूज किया गया और यहाँ पर वन पिक लेकर फॉल बैक लिया गया ऑन द स्मोक किया और एक पिक ले लेंगे एमएफ गॉड को टेक डाउन कर लिया गया है मतलब स्मोक की कमी साइड पे चलते होल्ड जरूर है हंटर फ्यूरी का यूजेज फ्लैश एक साथ एक बहुत ही डेडली एक पिक जरूर ले लेंगे एंड यहाँ पर ट्रेड होते हुए 3 वर्सेस 3 में कन्वर्ट एज डाला गया था I've dropped the spike. Yes, we are esports. Spectres definitely come handy. Closer to them. यहाँ पर एक स्मोक का यूज किया गया है पैरानोया का यूज किया गया है लेकिन प्लेयर्स मल्टीपल टाइम्स तो जिसके चलते एक मैन टू मैन एडवांटेज आ जाता है एंड फिर से एक बार यहाँ पर चल एंड अरेकॉन क्या करेंगे वो एक क्वेश्चन होगा एक पुश आ रहा था डेफिनेटली एफएसआई गॉट काफी अच्छी तरीके से 2 पिक निकाल चुके जिसके चलते मैन टू मैन एडवांटेज में आ चुके हैं कैक्टस का क्योटिक सिचुएशन 1 by 1 शैटर होते हुए एफएस Esports नजर आएंगे मैन टू मैन एडवांटेज बहुत ही शानदार अल्टीमेट यूज रन इट बैक का फ्रॉम सेसमी एंड यहाँ पर डिफ्यूज भी हो जाएगा पे 2 के रेशियो में एक्सेप्ट फॉर ऑलवेज हम साइफर को वॉन्डर करते देखते हैं साइड सी पर एंड स्टार का यूज किया गया एंड यहाँ पर कंकस कर दिया गया है बट स्टिल लेस इन नंबर फुल यूटिलिटीज होने वाली है कोहली यहाँ पर एक और पिक निकाल लेंगे एंड Now he has to go for a save. If he peeks through that window, that will be the biggest regret he ever made. Typhus trap and long जाना काफी बड़ी wrong decision होगा because Badler is sitting down with an AWP and it's a very important round for FS Esports. FS Kohli is going in for a flank. He will spot out. An attempt to backstab. क्या ये backstab attempt successful रहेगा? Spike मिल चुका है, diffuser आ चुका है, taking the first kill and diffuse. Weird Rio on the other hand takes I got down and I guess Weird Esports is going in for a match point right now. Cactus gets a kill. He's looking for more. He gives the cover to the planter. Advantage over towards Weird Esports and there is a very intense fight going. Towards the match point game for Weird Esports और ये round किसके फेवर में जाएगा? साइड बी पर एंड immediately deadly 10 को ले टेक डाउन कर देना चाहते थे टर्निंग इट 4 वीक या फिर एक डिफिकल्टी होने वाली है कैक्टस के पास एक अच्छी पोजीशन एंड मैच इवन पे 2 प्लेयर्स ऑलरेडी वेट कर रहे हैं Yes. Well, it's the overtime and we definitely expect 30 seconds. And I guess जो aggression यहाँ पे Weird Esports दिखा रही है, like जो Weird है थोड़ा मुश्किल होने वाला है. It's down to a 3v2 situation and I guess both of the players they are gonna play it out till their make it 1v2 and MF board will come in with the sniper close call battle is not going to be any interesting affair अब देखेंगे क्या होता है and situation right. 3 versus 2 might be seen over here and sniper के साथ bad love ready है first से अच्छा nebula का यूजेज भी spike कंप्लांट करने के लिए ए साइड पर रोटेशन ले लिया इसके पास काफी लो एचपी थी रहेगी ट्रिप बाय डिस्ट्रॉय हुआ है मतलब का री-ओवर है spike will not be planted for sure and यहाँ पर डिफेंडर्स जीत जाएंगे भी टाइम नहीं मिलेगा spike डिफ्यूज करने के लिए cactus with the green and the green
will not. The players are on the verge of rotation. पता चल चुका है कि players have committed to site है, लेकिन एक अच्छी position cactus की split और एक kill निकाल लेंगे. With that, FSC Esports have turned towards the lead and will cactus एक lead backstep करेंगे. B2 को ले लेंगे. Bad love. Sophia को ले लेंगे. Angle hold करके बैठे, लेकिन paranoia का एक अच्छा usage. Dash step के side में entry. Dash step के side में entry. एक pick लेंगे. Trade out होंगे. 3v3 में convert हो चुका है. And I ज़्यादा updraft every single time successfully is able to take 2 picks all together, taking 1 and on the verge of taking. वो क्या के crosshair में आ चुके हैं. He already knows where the last man is, and ultimately, and the clock is ticking, ladies and gentlemen. And the deciding Dasmi successfully like who shatters the dream. वो एक question होगा. एक अच्छा सा cage में trap next to impossible with only 1 man remaining into the sides of weird esports. यहाँ पर FSC वो dodge कर दी गई. Bad love की shot, वरना तो bad love doesn't allow F God. And Samsi guy started within just 30 seconds of time remaining. Fight of the equals and the dream of achieving the target. But then Hunter's Fury का एक early usage फिर से एक बार हमें देखने के लिए मिल रहा है. Might be taken down. Already losing the time. यहाँ पर एक अच्छा bad love का sniper shot की कोशिश, लेकिन एक पिक लिया एंड यहाँ पर डेडली को डाउन करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन वो कोशिश ज्यादा जो डार्क कवर था इसके लिए प्लेसमेंट किया गया है. कैक्टस आ चुके हैं विद जस्ट 10 सेकंड्स एंड इतना अच्छा अटेम्प्ट करने के बावजूद नाउ इट इज अ 5v2 अफेयर और हेवी भी आ चुका है. और एक पुश भी रियो एक अच्छा एंगल लेके बैठे हुए, जिसके चलते B2 को टेक डाउन कर लिया गया है. फॉलो बाय द अदर इक्वल ट्रेड्स जा रहे हैं. 3 MF गॉड यहाँ पर से आते हुए नजर आएंगे. कैक्टस ले लेंगे एंड आई थिंक we are coming to a closure, ladies and gentlemen. We are